Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ भाई काफी ट्रांसफर मैडनेस इज ऑन यार. इट्स सो मच भाई. इतना इट्स लॉस्ट टू टेक यार. इतना क्रेजी मैडनेस हो रहा है. मैं बेसिकली कुछ प्लान करता हूँ, ये बात करूंगा नेक्स्ट मिनट में एक और चीज आ जाए, तो मैं सोचा है भाई लाइव ही आते. We'll discuss with all of you, and of course I know a lot of breaking news is out in the last couple of hours, so all the more reason for us to be live. Lekin always bhai, thanks for everyone joining in. And I know अभी तक basically not over the line, लेकिन hopefully by the end of the stream और जब तक आप ये वीडियो देखें सब लोग भाई बाद में as well, hoping we are going to get over the edge. And of course मैं यहाँ represent कर रहा हूँ चेल्सी को in a way, but not just that. We all know it's interlinked. भाई प्रीमियर लीग की बात होती तो आर्सेनल है, of course लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी लिंक्ड है, मैं बताऊंगा क्यों. एंड of course टॉटनम हॉटस्पर भाई साहब एंड मैन सिटी, सब ब्रेकिंग न्यूज वहां पर कनेक्टिंग बायर्न म्यूनिख और थोड़ा सा बारसा भी. एब्सोल्युटली. तो भाई सब लोग अगेन hit that like button absolutely और सब्सक्राइब करिए because we are always a fan channel for all to see. और हाँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में किया है, ट्वीट किया है, तो if you can like and retweet that, absolutely brilliant. That'll be really helpful if you can do that. And भाई let's have all the people in because that's so much to be discussed, so much to be updated. भाई जो लोग भाई ऑफिस में थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, भाई जो लोग ने देखा नहीं, whatever it is, we'll be summarizing whatever we are able to in the next couple of hours. तो hopefully सब लोग आ जाए. पेप मास्टर क्लास और डिजास्टर क्लास, यस, इस पर बात करनी बिकॉज दैट इज द ब्रेकिंग न्यूज. एब्सोल्युटली ब्रेकिंग न्यूज यार. जब मैं सुना ये तो आई वाज टू मच. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, द फर्स्ट थिंग जो मैं दिखाने वाला हूँ, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू माय ओन क्लब एंड ऑफ कोर्स यू नो अ लॉट ऑफ अदर प्रीमियर लीग क्लब्स, भाई दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट मिस. कम ऑन, ये वाला मौका हो सकता है चेंज हो जाए, अभी तक हुआ नहीं है फाइनली, लेकिन हो सकता है चेंज हो जाए. एंड फॉर मी दिस वाज द मोमेंट ऑफ द डे. Obviously, Tottenham move for Pedro Porro is off after Sporting Lisbon changed the terms of the proposed deal, or did not like it rather. 23-year-old distraught as Sporting Club, the Portugal president, told right-wing back that following Saturday's League Cup final, he would be allowed to leave. So basically speaking, क्या है ना ये कि यहाँ पर फेब्रिशियो ने वापस से वीडियो किया और उन्हें बोला है दैट यस, टॉक्स आर अगेन अंडरगोइंग, कुछ ना कुछ हो रहा है एब्सोल्युटली. एंड ऑफ कोर्स हम एंजो फर्नांडिस, कैसेडो, कैंसेलो, उनके बारे में बात करेंगे, लॉट मोर लाइक आई सेड अदर क्लब्स. बट दिस हैज टू बी फॉर मी द मोमेंट जहां पर मैं यार एक बोलता है ना, फॉर अ फ्यू आवर्स ही सही, लेकिन एक खुशी हो गई भाई. टॉटनहम फैन सॉरी, बट यू ऑल नो भाई बैंटर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फुटबॉल, और ऐसा मौका हम तो नहीं छोड़ने वाले भाई. आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से भाई. ये तो इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. एंड मैं बोल रहा भाई जो कॉन्टे बोल रहे होंगे ना, कॉन्टे बोल रहे होंगे because he's in Spurs right now, this is what he would be saying. Expectation to suffer. Yeah, I have this sensation and yeah, but obviously हम लोग का सबका रिएक्शन कैसा है भाई? Anyone? Maybe that is the thing. लेकिन भाई अभी के लिए Spurs भाई, again Spurs fans, this is what I reacted, and I literally reacted this way. पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट किए. सॉरी गाइस, anyway I had to start that way. लेकिन हाँ एब्सोल्युटली भाई, जब हम बात कर रहे हैं चेल्सी की, ऑब्वियसली यहाँ पर यू नो रूई कोस्टा, अथर्वा बोल रहे हैं इज एन एब्सोल्यूट इडियट, ही शुड जस्ट एक्सेप्ट द मनी वी आर गिविंग. देयर इज नो वे एनी क्लब विल बी ऑफरिंग दिस मच इन द समर. यस एब्सोल्युटली. एंड शांतनु, हेलो, कैसे हो भाई? यश, फुटबॉल क्रीक्स अगेन, निश्चित भाई, बिग अप. एब्सोल्युटली, वाओ, दिस इज ऑफिशियल, थैंक फॉर दैट. एब्सोल्युटली. Spurs bottling is then DNA. बिल्कुल. Sajan in the house as well. भाई काफी लोग आ गए. Harjas as well, of course. Man City, yes, there is some breaking news. Absolutely, Harjas. हम बात करेंगे. Indian scouts are also in the house. Tiger Beast, always great to have you as well. उत्कर्ष, अगर मैंने कुछ नाम बोल गया भाई, Pudin as well. भाई apologies, लेकिन सब लोग like सब्सक्राइब कर दीजिए so that we have more people. But यहाँ पर we'll come to Pedro Porro, we'll come to Cancelo and all the news जो भी है ट्रांसफर मार्केट में, जो इतने सारे यू नो अपडेट्स हमें शेयर करने, वो तो है ही. खैर एब्सोल्युटली, वो तो मैं डिनाई नहीं कर सकता. लेकिन द ब्रेकिंग न्यूज जो मेन आया है इन द लास्ट 45 मिनट्स वापस से, एंड यस काफी चीजें चल रही थी भाई. मैंने कल सोचा कि शुड आई डू अ मिडनाइट स्ट्रीम लास्ट नाइट, देन मैं बोला नहीं, अभी तो शुरुआत है, बहुत चीज होनी है. फेब्रिशियो रोमानो ने कंफर्म किया है मीटिंग ऑनगोइंग बिटवीन चेल्सी एंड बेनफिका फॉर एंजो फर्नांडिस.
Talks are taking place right now as Chelsea will push until the end. Chelsea proposal 120 million euros in different installments. No issues on player side and player terms, and that is a very important part. तो इसलिए भाई मैं तो ये बोलने वाला था भाई अभी ऑलमोस्ट Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? क्या बोल रहे हो लाइकलीनेस इज ऑल इंक्रीज्ड और डू यू थिंक यार इट्स डेफिनेटली क्लिकबेट नहीं है ट्रस्ट मी एवरीवन लिटरली एवरीवन इन द मीडिया भाई उसके बारे में बात कर रहे हैं एब्सोल्युटली लेकिन उतना ही नहीं ऑब्वियसली एक और ब्रेकिंग न्यूज आया इन द लास्ट फ्यू मिनट्स फॉर दोज ऑफ यू जो मैंने हिंट किया है इन केस आप लोग ने नहीं देखा है इज एब्सोल्युटली भाई डेविड ऑनस्टिन ने आई थिंक ब्रेक किया था जहां तक मुझे मालूम है लेट मी जस्ट सी क्या ब्रेक किया था आई थिंक लेट मी जस्ट सी दिस वन आई थिंक एक सेकेंड हाँ Bayern Munich set to sign fullback Joao Cancelo on loan from Manchester City, likely to include buy option. 28-year-old Portugal international has been seen Man City minutes limited recently. Bayern long-term admirers. अब वो क्यों आया है? The reason being Fabrizio ने बोला है because Mazraoui is injured plus Cancelo खुद इतने खुश नहीं थे with recent less minutes plus the fact that you know Bayern Munich a long term admirer जैसे डेविड ऑस्टिन ने बोला है बट क्या लगता है what should be the fees of Cancelo if it is a loan to buy option do let me know in the chat everyone अगेन हम डिटेल में बात करेंगे इन ट्रांसफर्स की एंड ऑफ कोर्स काइसेडो का लेटेस्ट अपडेट भी डिस्कस करेंगे बट थोड़े थोड़े और मैं कमेंट्स लेने वाला हूं एंड आई विल कम बैक टू इट जाओ कैंसेलो तो लोन पे गया है ना अंकित भाई माजराओवी स्टिल देयर एंड पावार्ड शुड लीव बाय नाउ हाँ एग्जैक्टली तो बिकॉज एक और रीजन ये भी है कि पावार्ड का आई थिंक डील विल बी कंप्लीटिंग एंड दैट इज द रीजन व्हाई they need a cover लेकिन more importantly Mazraoui is injured तो maybe they need a starter right now considering Bayern का जो already start रहा है has not been good at all to the season यार of course after the World Cup शुरू होने वाला बाद में बोल रहा हूँ World Cup खत्म होने के बाद sorry how can you replace Porro with that Sadela Bellerin भाई Bayern sorry Barca fans भाई Bellerin yes Bellerin is literally waiting in the wings as meeting चल रहा है भाई in the next 24 hours हो सकता है Bellerin what he did in the last summer he might have to do again और हो सकता है he might end up with Sporting लेकिन अभी के लिए भाई all the non Spurs fans और generally जो जानते हैं जो Spurs करती है very good as in Spurs have been consistently at least you know winning a bottling trophy let's be very honest Spurs fans let me know what your thoughts are really would be pissed लेकिन the fact is इतना यार पूरा अपने विंटर उसमें बिता दिया यार पेड्रो पोरो पर पूरा विंटर एंड देन अभी लास्ट में वो भी ऑफ हो रहा है लग रहा है लेट्स सी इट माइट हैपन स्टिल हु नोस बट एनीवे why Liverpool don't target Kimmich he's the most complete midfielder in the world well he is I don't deny that लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि Kimmich will not be leaving Bayern Munich उनको तो भाई और भी midfielders चाहिए थे considering Gravenberch is एक target थे but now that Gravenberch might stay along so who knows that you know in the future you never know Goretzka maybe target कर सकते थे लेकिन Kimmich Goretzka type of players नहीं निकलेंगे मेरे ख्याल से तनिष्क बोल रहे हैं Bundesliga is the best league in the world only 5 points separate 1 and 6 Leipzig and Dortmund are 2 and 3 points from Bayern this time Bayern is not winning the league wow let's see interesting रहेगा maybe इसलिए Cancelo के लिए गए क्योंकि their fullback situation is definitely an issue Manish क्या हाल है भाई nice to see you as well and yes let's like the stream more likes equals more chances of Enzo coming in people come on guys let's like the stream absolutely and I know opposition fans नहीं चाहेंगे भाई आप लोग भी like कर दीजिए it's always good to see that Abhishek nice to see as well Bayern always wait for this kind of deal they did the same during Coutinho loan same for Cancelo okay लेकिन Bayern again they get people either on cheap या loan पे लाते भाई I remember Perisic had a pretty good time at Bayern Ivan Perisic I remember that great business by Bayern as Mazraoui is out until April and Pavard is bad they badly wanted an inverted right back 10 out of 10 business by Bayern yes lekin what about Manchester City Man City fans in the house anyone make some noise come on Man City fans in the house and yes I know I am coming to the big news उस पर हम डिटेल में बात करेंगे इसलिए वो थोड़ा सेक्शन में रखने वाला हूं इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स लेकिन भाई सब लोग सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए yes इसी पर मैं बोल रहा था इस पर आएंगे absolutely let's see best CDM after Casemiro in South America okay that's interesting yes 70 million होगा amount buy option okay चलो उसके उस पर भी डिस्कस करेंगे हरी बोल रहे हैं if they sell Pavard for 20 to 30 million and sign Cancelo for 70 million so they basically only spend 40 to 50 million provide great competition for Mazraoui well 20 to 30 million will Pavard be able to get so much that's my big question Hari I doubt it to be honest sad to see Cancelo leaving the Premier League I agree with this comment because for me Cancelo
yes, डिफेंसिवली थोड़ा सा इश्यूज होते हैं विद कैंसेलो, बट अटैकिंग वाइज और इन टर्म्स ऑफ बॉल प्ले पोजीशन जो मैन सिटी करती थी, आई थिंक ही वुड हैव बीन सूटेड एक्सीलेंटली. अगेन मैन सिटी यहाँ एक्सपेक्ट कर रही है कि या तो सर्जियो गोमेज विल स्टैंड अप एट लेफ्ट बैक, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट राइट बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट बैक, लेकिन Nathan Ake will be fit. Remember, Nathan Ake has had a terrific season, arguably the best defender in Man City along with John Stones this season. Mein. But Nathan Ake, in my opinion, is also a little bit injury prone. So, kahin na kahin, that Nathan Ake might be injured, and that is why I think Man City are taking a huge risk. Lekin we all know how Pep is. Pep is like, bhai, agar bande ko jana hai, तो जाने देते. That is how he is. He does not change there, and that's something that I respect him for actually. चलो भाई आ जाते हैं बिग न्यूज पर. आई नो बहुत लोग यूज कर रहे हैं उसका. डेरेन, बिग अप टू डेरेन. ऑब्वियसली अंकित बी लाइक रूई कोस्टा को गाली भी नहीं दे सकता, एक मिलान भी है. नहीं देखिए यार, रूई कोस्टा, ये बोलना चाहूंगा कि रूई कोस्टा वाज इन द हार्ट ऑफ मिलान. प्रॉपर हार्ट ऑफ मिलान है यार. मतलब फॉर अ गुड फ्यू ईयर जब रूई कोस्टा वाज देयर, राइट, मिलान वर इन दैट लास्ट जोन ऑफ देयर मतलब टॉप एरा. तो भाई रूई कोस्टा के टाइम आई रिमेंबर लाइक यस्टरडे ऑब्वियसली. लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेरेन दैट रूई कोस्टा इज द काइंड ऑफ पर्सन, और जस्ट नॉट जस्ट हिम, बेनफिका इज द काइंड ऑफ क्लब जो जिनको याद है उनको एक कर्स लगा था इन द यूरोपियन कॉम्पिटिशंस, नहीं. तो इस सीजन कंसिडरिंग कि यार नेपोली आर डूइंग सो वेल, जो आप देखे ही इस एरिया में इन द वीकेंड अगेन, और ऑफ कोर्स यू नो बेनफिका डूइंग रियली वेल. He's like maybe just we have a chance. और याद रखिए, we all forget, as soon as मतलब recent as last season Villarreal was there semi-final में. तो Benfica और Napoli kind of clubs will be very difficult to get a player off. तो I think he's not wrong. और yes, कहीं ना कहीं मुझे लगता है that if he's getting the total money, अगर समर तक भी मिलते पूरे पैसे यार, then he should take it. I agree there. लेकिन from his perspective, he's just thinking that okay, maybe the fact is we can go deep into the Champions League और भी better करे. थोड़ा लालची ज्यादा हो रहा है. I know that he probably wants maybe one sum में, या तो he wants basically कि summer तक you'll probably get the same amount is what he's guessing. और ज्यादा bids आएंगे तो ज्यादा bidding war होगा तो और पैसे आ सकते हैं. तो maybe लालची हो रहे. Again, I don't agree with him 100%. गाली तो नहीं दूंगा डेरेन, लेकिन I would definitely like to appreciate you for the support, constant one. And how and when did Spurs become bottle jobs in off-field stuff as well? Well and truly banter club. And this shit, honestly, yes. Shocking news, Cancelo out of the blue weakens City a bit. Yes, I agree with this comment by Ajinkya. City is in bad situation right now. By no left back cover, plus Walker is always injured. Yes, right back में भी याद रखिए. As much as John Stones वहाँ खेल सकते हैं, Akanji kind of can be a backup right back in the worst case scenarios. लेकिन आई थिंक आई अग्री, रिको लुइस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं इन माय ओपिनियन. यस, ही इज बीन टेरिफिक, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट लेफ्ट बैक राइट बैक में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 months फॉर से रिको लुइस एंड नेथन आकी टू बी डूइंग द जॉब्स. देखते हैं, होपफुली दे डू इट. बट अगेन भाई, सब लोग जो देख रहे हैं भाई, 100 लोग देख रहे हैं ना, कम से कम 100 लाइक्स तो कम कर दीजिए. पुदिन, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग अस दैट. एब्सोल्युटली, well that's interesting for sure. Cancelo and Pep have yeah, exactly, that's also there. Exactly, Abhishek जो मैंने बोला था शायद. Anyway, in 2019 City sell Pedro Porro to Sporting with 30% sell on clause and a buyback clause. Maybe they buy back Pedro Porro. Okay, this is a possibility. Why not? Pedro Pavard to Barcelona, here we go in the summer. Okay, but is he going to be a big deal? Nahi, I don't think so. He's absolutely great. He's decent but not absolutely great. Even for I know फ्रेंच टीम में हिम एंड कुंडे काइंड ऑफ प्ले तो एक अच्छा रहेगा, कवर फॉर ईच अदर, बट आई डोंट सी दैट एज अ ग्रेट फिट टू बी ऑनेस्ट. पावर टू बार्सिलोना अगेन, यूरोप में ही कैन स्टिल डू द जॉब, लेकिन वीक इन वीक आउट नहीं. आई थिंक चलो आ जाते भाई मेन न्यूज पर. जैसे डेरेन पूछ रहे थे, आई थिंक वी शुड गो फॉर बेलिंगहम प्लस राइस इन द समर. अंकित भाई, इफ वी डोंट गेट एंजो, Ziyech plus Sterling plus Koulibaly plus Aspi plus RLC and some players on loan. अच्छा, by the way, meanwhile I know literally हर एक मिनट अपडेट्स आ रहे हैं यार. कोई भी अपडेट मैं मिस करता हूं तो भाई don't forget to remind me on the chat, और मैं hopefully आएंगे. But come on, let's get to 100 likes right now. Everyone, there are 100 people watching. We can easily get to 100 likes right now. कितने likes हुए भाई? सबसे पहले ये बता दीजिए, सबसे पहले mod जो help me out there. But coming to the Enzo news, देखिए यहाँ पर I think मैंने एक ट्वीट किया था. What do you all think?
I know that Hakim Ziyech is something जो हम sell कर सकते हैं. Probably we are getting lot of offers for Hakim Ziyech. हाँ, in terms of money, we're not getting enough money. वो जरूर बोलूंगा. आई थिंक यहाँ पर रोमा ने कहीं ना कहीं 17-18 मिलियन का ऑफर दिया था वर्बली, नॉट ऑफिशियल ऑफर येट. देन वी हैड बेसिकली मिलान इन द पास्ट शोइंग इंटरेस्ट. मिलान को अगर जनियोले मिल जाते देन मे बी रोमा चल जाते हकीम जियश. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. लेकिन अगर कोई क्लब पे कर सकता है, इन माय ओपिनियन इज प्रॉब्ली अ प्रीमियर लीग क्लब हकीम जियश के लिए. चलो यहाँ पर बिकॉज गॉर्डन हैज गॉन फ्रॉम एवर्टन टू न्यूकासल, तो यूर से हाँ दांजुमा का वहां पर लग रहा था, लेकिन अभी वो भी नहीं हुआ. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट यू वुड बेसिकली एक्सपेक्ट एवर्टन टू बी पेइंग दैट मनी फॉर हकीम जियश. लेकिन मैं यहाँ पर बोलता हूँ यार, आपको हकीम जियश एज मच एज मैं चाहता हूँ कि वो रहे, anyway you will get rid of Hakim Ziyech, right? That's what it looks like, either now or in the summer. और आज के दिन में चेल्सी में अगर एक है, आई नो दैट यहाँ बेनफिका का अपडेट किया था कि भाई उनको चाहिए पूरे पैसे इधर इन वन गो, और बेसिकली दे नीड द रिलीज क्लॉज टू बी मेट, सिंपली पुट, और दे नीड अ वेरी गुड बिड, सिंपली पुट. तो तीन ऑप्शन है, बट उनको नहीं चाहिए इंस्टॉलमेंट में पैसे, या उनको नहीं चाहिए पैसे जहां पर दे गेट सम अमाउंट ऑफ मनी एंड अ प्लेयर और टू. लेकिन प्रीटी श्योर यहाँ हकीम जियश, कंसीडरिंग जो बेनफिका का स्क्वाड है एंड कंसीडरिंग बेनफिका जो चैंपियंस लीग में करते आ रही है, चैंपियंस लीग में हकीम जियश इवन हैज नॉट डन बैड फॉर चेल्सी, माइंड यू. ठीक है, ही वाज देयर इन द वेरी मच चैंपियंस लीग विनिंग स्क्वाड ऑफ चेल्सी, और उन्होंने इफेक्ट किया था कपल ऑफ मैचेस. आई स्टिल रिमेंबर एटलेटिको मैड्रिड गेम फॉर एग्जांपल, एंड इवन बिफोर आयाक्स के लिए. आई थिंक दैट शुड बी द प्लॉय चेल्सी का. भाई आप जाओ, आई नो एज थिंग्स स्टैंड मीटिंग चल रही है, अगर बाई चांस नहीं मानते पेमेंट टर्म्स में एज पर न्यूज, हम ऑफर कर रहे समवेयर क्लोज टू 80 मिलियन अपफ्रंट एंड देन रेस्ट किश्तों में. लेकिन व्हाई डोंट यू ऑफर हकीम जियश? व्हाई गिव हिम टू प्रीमियर लीग साइड, जो कल को हो सकता है लाइक न्यूकासल गेट अ न्यू ओनर एंड कम्पीट विद अस. तो डोंट गो फॉर अ प्रीमियर लीग साइड. हकीम जियश को ऐसे भी ही प्लेज वेरी मच यूरोपियन स्टाइल, वो बहुत अच्छे खेले थे वर्ल्ड कप में भी. गिव बेनफिका, ऑफर बेनफिका, भाई हम हकीम जियश को दे रहे, एज मच एज रूबन लॉफ्टस-चीक भी दे दो अगर नहीं मान रहे तो. लेकिन रूबन लॉफ्टस-चीक एनीवे ज्यादा पैसे लाएंगे नहीं आज के दिन में, बिकॉज इंजर्ड रहते हैं. तो रूबन लॉफ्टस-चीक को यू यूज हिम फॉर अ प्रीमियर लीग साइड. That is what I would want to do. Or Enzo Fernandez deal can be sweetened with Hakim Ziyech, in my opinion. Ruben Loftus-Cheek to a Premier League side. Why? Because he's English, so it helps the English quota. Or remember, he has trained literally in Cobham all the time. तो मुझे लगता है that might be the thing. तो आप एवर्टन या किसी और क्लब को दो भाई, रूबन लॉफ्टस-चीक, न्यूकासल में भी, बट गिव हकीम जियश टू बेनफिका, एंड दैट होपफुली इज जो डील स्वीटन करने के लिए यूज कर रहे हैं भाई टॉड बर्ली इकबाली. बाय द वे, एज पर रिपोर्ट्स, यस मीटिंग तो चली रही है, बट इफ नीड बी इवन मोर जो बंदे हैं फ्रॉम द चेल्सी कंटिंजेंट विल बी ट्रैवलिंग टू बेनफिका इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, वो होने वाला है. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, अमन बोल रहे हैं लूजिंग कैंसेलो एंड जिनचेंको, टू ग्रेट फुल बैक्स माइट वीकन सिटी. ओके, is anyone safe from Burley next? He might target us. Well, honestly speaking, Moises Caicedo is safe. Moises Caicedo is safe. I believe so. And we'll come to that absolutely. Or yes, Porro can play right back there. He can play. It's just that I think I prefer him playing a right wing back than a right back, जितना मैंने देखा है. Again, not an exactly great right back, लेकिन definitely a very good right wing back. Absolutely brilliant right wing back. जो हम देखे चैंपियंस लीग में भी. लेकिन हाँ, एल क्लासिको सेमीफाइनल कोपा डेल रे भाई, एक ही सीजन में 4-5 एल क्लासिकोस हो रहे हैं. क्या हो रहा है? मतलब is it fixed? Let me know. But yeah, I heard that as well. Porro is a right back. He's more like attacking right back, Abhishek. I think that's what probably you're trying to say is that well. But the fact is, I see him fitting in the Premiership in a right wing back position. Premiership के लिए right back में, I think he still needs a defensive improvement in my opinion, honestly speaking. But कितने लोग हैं जो defensively इतने sound है यार? Come on, everyone cannot be a Reece James. So he's not bad at all. Riven, a lot of things are going on, bro. Anyway. बिल्कुल यार, एब्सोल्युटली, होपफुली आ जाए. व्हाई आर यू नॉट शेविंग? भाई ये है, बलिदान करूंगा एंजो फर्नांडिस के. एंजो फर्नांडिस का जब आएगा ना, जब डील होगा भाई, ये बलिदान करूंगा बस. चलो, बोल दिया मैंने अमन, चलो. सुन लिया आपने. चेल्सी ऑफर्ड 1 large payment and 5 other payments, and they believe they can eventually convince Costa to sell with Bedard, Iqbali and Paul Winstanley ready to clinch a deal. Well, again, बहुत सारे वर्जन्स आ रहे हैं यहाँ पर अमनदीप. क्या सच्चाई है हमें होपफुली पता लग जाएगा, ना होपफुली डज दैट. बट यस, एब्सोल्युटली भाई, मैं अगेन यहाँ पर देख रहा हूँ भाई, लाइक्स, कम ऑन, लेट्स गेट टू 150 लाइक्स लाइक राइट अवे. मेरा एक टारगेट रहता है, बहुत ही छोटा सा टारगेट है भाई, लेट्स गेट
possible because that certainly helps. नहीं, Abhishek, he plays in a back four, I agree. But the way Sporting play is different than the way, say, for example, Spurs play. मेरे ख्याल से the way Premier League में है, and again playing in Champions League, playing in, say, the Portuguese Liga, with all, due respect, I think वहाँ पर the way I see that बहुत बार he gets caught at right back, but attackingly he's superb. Definitely, I think he can do better. That's why I'm saying that he's more of a right wing back. Champions League games में लेकिन Abhishek, correct me if I'm wrong, लेकिन against the games जो हुए थे Spurs के साथ, they went back five. They kind of mashed Spurs वहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है. And that is also one more reason मैंने जो बोला है. But anyway, why Premier League clubs are not going for Unai was tremendous in World Cup. Abhishek, for any player to move, right, you have to perform with the highest topmost level for a consistent time. Again आप बोलोगे then why Enzo Fernandez? Enzo Fernandez ने किया है. Enzo Fernandez in Argentina was one of the most sought after midfielders, young midfielders. Enzo Fernandez in basically Benfica is one of them. जो भी फुटबॉल जाती है सब चीज उनके थ्रू होता है. And Benfica in Portuguese, which is what one of the top 6 leagues, definitely is there or thereabouts literally every game play में. ठीक है. फिर उन्होंने किया अर्जेंटीना who has won the World Cup, प्लस चैंपियंस लीग में भी किया है. तो आई थिंक एंजो फर्नांडिस का आई कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पर आ जाते हैं काइसेडो पर थोड़ा सा. पर काइसेडो का अपडेट आप लोग ने पता ही होगा क्या है. बेसिकली काइसेडो का आई थिंक 70 मिलियन दिया था आर्सेनल ने. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, और बाई चांस जस्ट टू वॉच, राइट, तो मे बी आपने मिस कर दिया होगा, पता नहीं. लेट्स सी. एंड एक सेकंड भाई, गूंज रहा तब से. एनीवे, तो लेट मी एक्चुअली पुट दिस ट्वीट. और अगेन भाई लाइक कर दीजिए एब्सोल्युटली. अच्छा, Arsenal submitted second offer last night for Brighton and Hove Albion midfielder Moises Caicedo. Latest proposal for Ecuador international £65 million plus 5 million add-ons rejected. Despite Brighton reiterating stance, 21-year-old going nowhere. Arsenal are still keen, by the way. तो हो सकता है that they might go. But there is a school of thought. Arsenal fans बोलेंगे भाई this is crazy. I know Thomas Partey थोड़े injured है, I believe so. I don't know how long he's out for. लेकिन anyway they needed a बैकअप के लिए और मे बी रोटेशनल स्टार्टर के लिए आप 70 मिलियन इटसेल्फ बहुत दे रहे हो, जो बेसिकली दे वर रेडी टू गिव फॉर मोड्रिक, रिमेंबर, एट लेफ्ट विंग एज वेल, क्योंकि मार्टिनेली वहां स्टार्ट करते हैं. लेकिन मोड्रिक ऑब्वियसली केम टू चेल्सी एंड देन यू हैड यहां पर देम गेटिंग रिजेक्टेड. तो लॉट ऑफ आर्सेनल फैंस आर भाई बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं. वो लोग बोले कम ऑन, इफ वी वांट टू विन द लीग, अगर मौका है कभी विन करने का लीग ईपीएल को, दिस इज द टाइम. सो वी हैव टू गो ऑल इन फॉर एंजो फॉर मोइसेस कैसेडो. तो क्या लगता है आप लोग को, शुड आर्सेनल ब्रेक द बैंक ऑन कैसेडो? नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम यू माइट से, जो मैंने बोला द लॉजिक अबाउट से टॉप लेवल, कैसेडो ने किया है प्रीमियर लीग में, लेकिन ही हैज स्टूड आउट इन द लास्ट 5 months ओनली. ठीक है. Apart from that, I don't remember at any world stage he has done at that level. Also, he does not have any मतलब Champions League experience. जहाँ तक मुझे मालूम है, he does not have or does not stand out. तो is it worth spending that much money on a Caicedo जो arguably will not start every game जब Thomas Partey is fit? ठीक है. तो वो भी एक और चीज है. तो on the other hand, यहाँ पर I know Enzo Fernandez और Chelsea के बारे में बातें चल रहे, but if in case Enzo Fernandez का मना हो जाता है, and I know Matheus Nunes is a backup option as things stand, वो भी है, हो सकता है not for now but for the summer, जैसे लिवरपूल ट्राई कर रही थी, तो हो सकता है we try and hijack Matheus Nunes, जो लिवरपूल वेट कर रही है. But will you go, if you are a Chelsea fan और Premier League fans, आप लोग बोलिए, should Chelsea, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आर्सेनल का 65 plus 5 million था, should Chelsea come back in Caicedo or should we say 75 million pound ले लो और कैसेडो दे दो हमें? आई थिंक 75 मिलियन पाउंड आउटराइट, यस, ब्राइटन ने मना किया है दैट ही इज नॉट फॉर सेल, आउटराइट मना किया है. ब्राइटन डिड द सेम थिंग फॉर कुकुरेया, रिमेंबर, एग्जैक्टली सेम चीज किया था. तो क्या लगता है भाई, शुड वी ब्रेक द बैंक फॉर कैसेडो 75 मिलियन अगर ये मीटिंग अनसक्सेसफुल रहती है विद रूई कोस्टा अगेन, जहां पर हम assuming that we are going north of 80 million pounds, or should we even pay 80 million pounds for Caicedo and get him? Let me know. देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं. इन द समर मिडफील्डर मार्क सप्लाई द मार्केट विल चेंज एंड बेनिफिका वोंट गेट द सेम प्राइस. टाइगर बीस्ट, एक्चुअली I hear you, but at the same time I kind of disagree. The reason being that summer में there will be more takers for Enzo, so there will be a bidding war. तो जो tax होता है जो which will be cut because of now till the summer because of amortization, वो आपका जो cost है वो you will get back in the competition, जो tax होगा for the bid war.
bid war. There's a transfer bid war coming in the summer for Enzo Fernandez. Remember, Real Madrid भी जा सकती है फिर. Real Madrid is huge. You all know that when it comes to transfers. Yes, ये भी यार breaking news है absolutely. Bryan Hill, he is supposedly going to Sevilla. अगेन वो स्पेन में खेले थे लास्ट सीजन, मे बी दैट इज वाई वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि उनको शुरुआत नहीं करने को मिल रहा है. एंड प्लस याद रखिए डेरेन, एज मच एज हम स्पर्स पर हंस रहे हैं, एट द सेम टाइम डांजुमा को उन्होंने हाईजैक किया था. तो डांजुमा काइंड ऑफ प्लेज ऑन द लेफ्टिस्ट साइड, इज मोर लाइक अ लेफ्ट फॉरवर्ड. ब्रायन हिल आल्सो प्रेफर्स दैट वे. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट कॉन्टे इज लाइक नहीं, वी हैव पेरिसिच, वी हैव सेसिन्योन, वी हैव डांजुमा. I think तीनों ही players have who can play on the left wing absolutely. So I think with Son of course, तो 4 players are more than enough. I think that's the reason he's going. He's a good player, but यहाँ पर जहाँ तक मुझे मालूम है, it's definitely on loan, right? Let me just check it up. Bryan Hill का I think loan है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ. एक second, I think it is Bryan Hill is already in Spain to undergo medicals and sign a contract as new Sevilla player. Verbal agreement reached yesterday with Tottenham on loan deal with no buy option clause included. Okay, fair enough. अच्छा, meanwhile क्या updates है भाई, क्या updates है और देख लेते हैं. भाई साहब और न्यूज आ रहे हैं एंजो फर्नांडिस पे. भाई when Matt Law comes into party ना, trust me, as much as Matt Law I know recently इतना अच्छा नहीं किया है in terms of hit ratio, लेकिन when Matt Law comes after those mistakes जो हुए थे समर में, pretty sure यहाँ पर he will be sure. ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहे. Chelsea make British record bid for Fernandes and are optimistic a deal can be struck as talks continue. Oh भाई, don't give me hope, don't give me hope bro, don't give me hope. भाई meanwhile बाकी fans are like इतने सारे record deal वाला पैसे कहाँ से है, and Chelsea is like, I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, We don't care. sorry bro, but that's the truth. That's the truth really. Anyway, let's see if Benfica go deep in UCL, Enzo का price can go up. In fact, ज्यादा chances है Enzo का price to not go up, लेकिन at least stay till there. Reason मैंने बोला वही है. Plus आपने जो बोला अभिनव absolutely about them to do well in the UCL as well. Should Enzo do a Caicedo and make a request to Benfica and will? Yeah, this one is a very important question from Tiger Beast. क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोल रहे हो? मेरे ख्याल से यू नो व्हाट, एंजो फर्नांडेज, द फैक्ट इज यार वो वर्ल्ड कप जीत कर आया, ये याद रखिए. एवरीवन वी फॉरगेट. यस आई नो, और प्लस बहुत ही यंग है अभी. तो फॉर नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई काइसेडो हैज डन दैट, बिकॉज़ काइसेडो के लिए उसने खुद ने समझाया, यू नो ही वाज ट्राइंग टू प्ले द विक्टिम कार्ड व्हेन ही हिट द व्हेन ही पोस्टेड वो लेटर जो पोस्ट किया था काइसेडो. लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं वो सच्चाई भी थी ना उसमें, दैट द फैक्ट इज ही ऑलवेज प्लेड फॉर नॉट सो बिग क्लब्स एंड ही वांट्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. एंजो फर्नांडिस ऑन द अदर हैंड इज प्लेइंग फॉर बेनफिका. हम बेनफिका को कुछ मानते नहीं. फॉर पीपल हु मोस्ट ऑफ अस हु काइंड ऑफ फॉलो द प्रीमियर लीग, ला लीगा एटसेट्रा, हम इतना नहीं मानते. बट बेनफिका यार, इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल दे आर वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड क्लब्स एज वेल. बेनफिका में जो फुटबॉल देखने को मिलती है इज ग्रेट इवन फॉर द लास्ट 18 months. So I think कहीं ना कहीं that is also there, plus UCL में है. So I don't think there's a need, considering वो अभी वर्ल्ड कप जीत कर आया है, for him to ask for a deal. हाँ, ये जरूर बोलूंगा, as much as I love Chelsea and you all know how much I do, ठीक है, अगर एंजो फर्नांडिस के लिए अगर रियल मैड्रिड आता इन दिस जनवरी में, समर में तो शायद आएगा ही अगर हम नहीं जाते हैं, ठीक है, अगर रियल मैड्रिड आता अभी, आई फील दैट वो डालता, ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालता. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चेल्सी एंड रियल मैड्रिड. आई नो चेल्सी फैंस यू माइट नॉट लाइक इट, बट दैट्स अ फैक्ट. रूई कोस्टा, हाँ, अब देखो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं दैट द ओनर, द डायरेक्टर, द स्पोर्टिंग डायरेक्टर, जो कोच, मतलब आप ब्राइटन का ले लो ना एग्जांपल, टाइगर बीस्ट. यहाँ पर कल के इंटरव्यू में क्लियरली दिख रहा था एक चीज, दैट मोइसेस कैसेडो, ब्राइटन मैनेजर डिजर्वी बोले थे भाई हम तैयार है अभी. वो ठहरता है तो अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि वो ठहरता है समर तक. लेकिन अगर इफ ही इज नॉट देयर, इफ कैसेडो इज नॉट देयर इन द समर और इवन नाउ, we are ready. That is a very important point that उसने बोला है. तो आर बेनफिका रेडी? बेनफिका के स्क्वाड पर डिपेंड करता है. ब्राइटन कैन टेक अ चांस, क्योंकि ब्राइटन का मेन है प्रीमियर लीग. ऑन द अदर हैंड आई नो एफए कप भी आप बोलोगे आफ्टर यस्टरडेज विन, बट यू नो चैंपियंस लीग इज अलग लेवल. तो आर बेनफिका एबल टू डू दैट एज वेल? अच्छा, मीनवाइल आर्सेनल का रिजेक्ट हुआ है भाई. सब लोग बताइए आर्सेनल विच मिडफील्डर शुड दे गो फॉर? एक जन तो डेफिनेटली जाएंगे. I think Arsenal will still make a bid. They might come back or make that Caicedo bid for 75 million. हो सकता है, despite Brighton saying is not for sale.
और एक और ऑप्शन है भाई, आप लोग बोले कौन सा बेस्ट है। द लेटेस्ट न्यूज मैं शेयर करने वाला हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अगेन भाई सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए, let's hit all the like button. I know if you might not be in India as well, that's absolutely fine. We are always a fan channel for all to see. और ये वाला भाई is the latest news मैंने जो देखा है अभी, and you guys tell me whether that is a like for like or not. मेरे ख्याल से answer is no, but he can definitely do a job and a half for the 4.5 months जो बाकी है आर्सेनल के सीजन में. But is he a long term replacement or backup for Granit Xhaka? I don't think so. I don't think so. I think बहुत डिफरेंट है. आर्सेनल कंसीडर लेट ऑफ ऑफ यूरी टेलेमेंस. भाई क्या बोल रही है, इसका क्या बोल रहे हैं आप लोग, देखते हैं. मीनवाइल मैं वापस से कमेंट्स में आने वाला हूं. अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट दैट लाइक बटन. गौरव इन द हाउस, नाइस टू सी. गुड, एंजो विल बी अ ग्रेट साइनिंग, ही विल, बट वही है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इफ और व्हेन. दोनों क्वेश्चन अभी भी है. चेल्सी आर ऑफरिंग द 120 million to be paid for 2 to 3 years. Benfica say they want it right now. It's complicated, but Chelsea are pushing. Yes, जैसे मैंने अभी दिखाया, मैटलॉ ने बोला है that we are ready to do a record deal. अब देखते हैं. Definitely धक धक तो definitely हो रहा है, मेरा भी हो रहा है. And yes, Abhishek says that we don't care. Meanwhile, we are struggling to sign Skriniar and an attacker. Other hand, Bayern are just signed Cancelo. I'm crying. अच्छा, रिफात is a PSG fan. I think Skriniar हो गया यार. I know personal terms agreed है, क्लब्स अभी बातें कर रहे हैं, but I think the fact is Fabrizio Romano if says no, here we go, होने वाला है. Rifat, so don't worry about that. वो, and by the way, talking about PSG, I know थोड़ा off topic है quickly. Rifat, भाई कल रात को Verratti, was it a red card? Anyone? Again, मैं I don't know, maybe I'm old school, मुझे लगता है थोड़ा soft था यार वो ये red card. कहीं ना कहीं I think it mattered in the end. जो last में I think रेम ने किया एक equalizer in the last minute, that was crazy bro. But anyway, coming back to this, Ankit bhai, if we somehow manage to get Enzo, then our midfield is set for at least 7 to 8 years. We are looking scary for next season. Okay, Ankush. Disclaimer bro, let's not go there. Remember, हाँ हमने crazy amount of signings किए. मैंने actually साइन शेयर किया था कल परसों के ट्वीट में, शेयर किया था, एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में. बहुत सारे साइनिंग हमने किए. I agree, but I still don't agree that our midfield is done for 7 to 8 years. हमें we are still work in progress. We are still 10th in the table. Yes, we are champions of the world, but Chelsea are far behind as current scenario is standing, behind Arsenal, Man City, Manchester United. Definitely इन तीनों क्लब से तो definitely मैं बोलूंगा. बाकी jury is out, maybe Newcastle as well. Yes, that's the reality of things. Again, just to summarize, this has been Chelsea's transfer window till now. Malo Gusto coming in the summer, brilliant for the next year. माडुए के बहुत अच्छा हो सकता है नेक्स्ट सीजन तक के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ जियेश को अभी भी ट्राई करिए, रखिए. अगर इफ यू डोंट गेट एंजो, देन यू हैव ऑफ कोर्स मोड्रिक, दी स्टार इन माय ओपिनियन जो होगा. बार्डिशले एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रहा है अभी तक, होपफुली कंटिन्यूज. एंड्रे सैंटोस, आज चुकमेका का इंटरव्यू है ऑन चेल्सी एफसी. क्या बोलते हो आप लोग? बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है देयर इज अ चांस दैट एंड्रे सैंटोस को वी माइट सेंड ऑन लोन. आई जस्ट हैव अ गट फीलिंग. जाओ फिलिक्स, अगेन ब्रेकिंग न्यूज यहाँ एक और है. यस, ब्रेकिंग न्यूज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये है आपके क्लिकबेट वाला न्यूज, ठीक है, जो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन वो हंसी आ रही थी मेरे को देखकर. भाई ये मैं दिखाई देता हूँ आप लोग को, मैं दिखा देता हूँ भाई, इतनी हंसी आती है ना कभी मैं दिखा दो. एक ये पैरोडी अकाउंट है कि क्या, बता दो यार. मतलब एक समय में आप बोलते हो कि आपके पास पैसे नहीं है, मतलब आई नो ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छा कर रहे हो ला लीगा में, नो टू वेज अबाउट इट, बट डोंट यू थिंक इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग जो ये न्यूज आया. मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ. हाँ, तो यहाँ पे न्यूज है, पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हैं, बारसा फैंस इन द हाउस, क्योंकि यहाँ पर मैं आई वाज शोइंग जाओ फिलिक्स. मीनवाइल बाकी भी दिखा रहा था. वी हैड दाविद आतुर फोफाना, हु इन माय ओपिनियन स्टिल माइट गो ऑन लोन. स्लोनिना एज पर रिपोर्ट्स वो रहेंगे, और इंकुकू नेक्स्ट सीजन आ रहे, राइट, वो भी अभी तक होपफुली ऑफिशियल हो जाए. बट यहाँ पर मैं यहाँ एक शेयर करने वाला हूँ क्विकली, and this is managing Barca. I don't know क्या अकाउंट है भाई. Atletico Madrid are interested in signing Ferran Torres and FC Barcelona want Joao Felix. Does a player swap can be considered? What do you all think about this one? मतलब are you going to believe this one? मतलब Joao Felix और Ferran Torres, are you putting in the same bracket? Come on, नहीं यार, मुझे नहीं लगता. Let me know आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में. Again, I know Carrasco एक ऑप्शन था बार्सिलोना के लिए, but this is going to be interesting. अगर हो तो समर की बात हो रही है, नॉट राइट नाउ ऑब्वियसली, राइट, बट फॉर मी आई डोंट बिलीव इन दिस न्यूज. आई रियली डोंट. मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स अ मैटर ऑफ क्लिक बेट, और ज्यादा न्यूज नहीं आती तो भाई डाल देते जबरदस्ती का. जुबी मेंडी अगेन प्लेयर लिंक टू बार्सिलोना, उनका एक रिलीज क्लॉज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60 मिलियन है, मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो विनय बोल रहे हैं कैसेडो और जुबी मेंडी. ओके, फेयर इनफ.
And yes, everyone, let's hit that like button. Absolutely helps. And by the way, if you are new to the channel, consider subscribing, bros and sisters, bro, everyone, and everyone. Do check it out, bhai, because we are very close to 7K. Hopefully, we get to 7K tonight. With all your help, we can get there. And remember to check all the content on both the channels. Tielemans wants to go to Arsenal. It's his dream club. Yeah, but fitment के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? I still have my doubts. Gallagher to Everton. अरे भाई साहब, yes, this was something that मैं expect कर रहा था कि in the last minutes. I hope not कि देखते क्या होता है if it's for real or not. Pandit in Todd Burley, American who doesn't know how shit about football, bros, a millionaire for a reason. Fans are acting like 75% of this current Chelsea squad isn't leaving next summer. अरे भाई Darren, first of all, thanks for the super chat, but language, bro, much love to you. देखिए, honestly speaking, carefree, bro, carefree, Chelsea carefree. भाई वापस से for people who missed it out. Again, this goes out to all those pundits who are saying that, bro. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you. We don't care. Right? और एक और कर देते हैं भाई, एक और कर देते हैं, टेंशन नहीं लेने का. Nice. बस सिंपल बात है यार, आता नहीं आता फिर भी. The thing is, at least we care. At least we care. Yes, we don't care free. We are carefree. We don't care about others, but we care about us. Todd Burley and Iqbali, as much as भाई वो tried and tested नहीं है, but trial and error कर रहे, fair enough. But at least they're trying, bro. They're trying. That's what I would say. I'm happy as a Chelsea fan. अगर unsuccessful भी होते तो at least they are trying to get our club back to the level where we belong. Yes, people say we buy, big deal. Yes, we buy. लेकिन आप लोग अगर बोलते हो आपने मतलब with all due respect नहीं buy किया है. I have my history, bro. Trust me, I have my history. Definitely, a lot of clubs have bought a lot of players over the years. वही है, आप अगर एक विंडो में बाई करते हो, नेक्स्ट फ्यू विंडोज में नहीं करते हो, तो आप भूल जाते हो वो चीज को. बस वही होता है, बस कोई नहीं. इफ वी बाय एंजो दिस विंडो, स्टिल वी नीड अ हार्डकोर डीएम. यस, एग्जैक्टली. इस पॉइंट में मैं अग्री करता हूँ. आई अग्री विद दिस. वी स्टिल नीड दैट हार्डकोर डीएम. इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंजो अभी राइस समर में समथिंग व्हिच इज स्टिल आई वुड से ऑन, कंसिडरिंग वी आर एबल टू ऑफलोड अ फ्यू प्लेयर्स. वो डेफिनेटली चाहिए. ऑफलोडिंग इज रिक्वायर्ड. समर में जॉर्जिनियो, पॉसिबली कांटे. अगर we get someone like Declan Rice, then definitely I can't see Kante staying. That is the only reason. Then you have obviously Ruben Loftus-Cheek, Zakaria को शायद हम बाई नहीं करें अगर आ जाते हैं राइस. Those things might happen. Again, not all, but couple of them definitely होगा. कल लास्ट डेडलाइन डे है ना? हाँ बिल्कुल, कल भाई लास्ट डेडलाइन है. कल भी हम लाइव होंगे absolutely like always. Ziyech चेल्सी में अच्छा खेल रहा है भाई, बहुत अच्छा खेल रहा है, बट वही है कहीं ना कहीं वो खुद भी खेलना ज्यादा चाहता है. हो सकता है दैट 4-2-3-1 में पॉटर बोले नहीं यार तू मेरे फर्स्ट टीम में तू कैसे जा सकता है, वो कन्विंस कर ले. वो हो सकता है कंसिडरिंग कि यार ही वाजंट प्लेड अप अंटिल द वर्ल्ड कप फॉर द लास्ट 12 मंथ्स इतना. बट नाउ थिंग्स माइट चेंज. बट नाउ माडुएकी हैज कम. एंजो के लिए वी नीड टू फ्री अप कैश बिकॉज ऑफ एफएफपी. तो बैलेंस करने के लिए हमें शायद सेल करना पड़े. बिग अप टू लूमैन, हाउ आर यू? वेल, we always ruin football, bro. We always ruin football. That is what Chelsea का synonym है यार. Chelsea का नाम वो है. And we don't care, bro. We don't care. The thing is, अगर हम लोग करते हैं something which is in within the rules, people say we are bending the rules. भाई आपने अच्छे से बनाया नहीं रूल. ठीक है, अगर लंबे कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं तो बोलो यार पहले. First tell us that's not allowed. It was allowed and that is why हमने किया है. Secondly, if we are spending lot of money, fair enough, but we are spending on long transfers and we are spending on people who are our future, not current. तो current team में actually I would still like to defend that saying that नहीं, we have spent half of what you really think we have spent. क्योंकि current team में जो first 11 नहीं बोलूंगा, first 13-14 players होते हैं ना जो टीम के हमेशा, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है. एंड दैट इज वेयर Mudryk obviously is a difference maker hopefully, and Joao Felix unknown certainly is. Enzo can be. वहां मैं डेफिनेटली कमेंट करूंगा, बट डिपेंड ऑन द सेल एज वेल, ब्रो. एब्सोल्युटली. बट अगेन थैंक्स फॉर कमिंग ऑन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. या 100% जकारिया को तो करना चाहिए. एक सेकेंड भाई, इंटरेस्टेड मैं भी हूँ यार. एक सेकेंड पुदिन, इंटरेस्टेड मैं भी हूँ. आई एम इंटरेस्टेड टू गेट लियोनेल मेसी. आई एम इंटरेस्टेड टू गेट एवरीवन, ब्रो. जस्ट एन एग्जांपल दिया. इंटरेस्टेड हो सकते हैं भाई. चिलवेल कहां से जाएगा यार, कहां से जाएगा? हमारे फुल बैक्स की कमी है, नहीं जाएगा यार. टेंशन मत लो, टेंशन मत लेना. एब्सोल्युटली यस, वो लेजी जर्नलिज्म होगा इन माय ओपिनियन, बिकॉज द फैक्ट इज कैंसेलो इज गोइंग टू बायर्न, राइट? सो मे बी यू आर थिंकिंग दैट ओके चिलवेल माइट बी सेकंड चॉइस है चेल्सी. नहीं यार, फर्स्ट चॉइस है चेल्सी में. Cucurella is hardly starting matches in the last few weeks. Remember, Chilwell is the first choice as things stand.
जुबी मेंडी, ओके, बर्ली जैसा ओनर भगवान सबको दे दे। एंजो नहीं आया तो यूसीएल भी गया। सजन, यूसीएल का चांसेस आप रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन आई डोंट थिंक एंजो को लाना इज मियर रीजन कि यार हम यूसीएल के लिए जा रहे हैं, वो रीजन नहीं है। हमने बिल्ड करना है फॉर द प्रोजेक्ट जो बर्ली वांट्स टू सी अंडर पॉटर, व्हिच हैज नॉट बीन बिल्ड बिकॉज समर विंडो, हाँ हमने क्रेजी अमाउंट स्पेंड किया था, 300 मिलियन समर में भी किया था, लेकिन वो 300 मिलियन में से आधे तो भाई वर पॉटर साइनिंग्स और फ्यूचर साइनिंग्स, सो दैट डजंट रियली काउंट रियली इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट फ्रॉम पॉटर्स पर्सपेक्टिव। सच में बोलो तो टूकल डेफिनेटली वाज द रीजन दैट उस समय हमने साइन किया था, अभी टूकल नहीं, दैट्स हाउ इट इज। मनीष बोल रहे हैं गो गो गनर्स, ओके। Oh, that's interesting. That's an interesting one, definitely. Yes, Sean Dyche भी हो गए यार, ये भी दिखा देते हैं for people who might have missed it. And yes, भाई, again, I request everyone to hit that like button. There'll be a lot of random news, random conversations इस वाले stream में, and of course tomorrow भी, because it is transfer madness. इस बीमारी को बोलते हैं transfer madness, जो हो गया है। ओ भाई साहब, ये सच्चाई है यार, आपकी कमेंट ऐसी नहीं आई थी, ये सच्चाई है। Oh my God, goodness. I hope this doesn't happen, yaar. It will not be good. 40 million is an excellent offer. 40 million is an excellent offer, bro. Oh my God, Gallagher is going. भाई मैं यहाँ एवर्टन का शॉन डाइश का दिखा रहा था, और ये हो क्या गया यार, शॉन डाइश वाला दिखा रहा था कि एवर्टन का कंफर्म्ड है। ओ माय भाई, ओनाना को ले आओ यार इस साइड। ओनाना इज डेफिनेटली अ गैलेगर काइंड ऑफ अ प्लेयर ऑफ बेटर क्वालिटी और बेटर सीलिंग, मैं तो बोलता हूँ भाई। चेल्सी, अगर चेल्सी आर इवन इंटरेस्टेड टू डिस्कस, फर्स्टली आई डोंट थिंक यू शुड गो, कंसिडरिंग कि यार ही इज वन ऑफ द फिट मिडफील्डर्स अनलाइक अदर्स, तो वो रहने चाहिए। यस, नॉट एज अ स्टार्टर बट एज अ स्क्वाड प्लेयर, एज अ स्क्वाबम बॉय, आई डोंट वांट हिम टू गो। अंडर लैम्पार्ड होता तो फिर भी आई वुड हैव कंसीडर्ड, बट नॉट नाउ, राइट नाउ, कम ऑन। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दिस, अगर होता है, क्या लगता है भाई, शुड चेल्सी गो फॉर दिस, और शुड चेल्सी से नहीं यार हम देंगे लेकिन ओनाना को इस साइड दो। आई नो एवर्टन मानेंगे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अमादो ओनाना is probably better player than Gallagher at this point in time, if I'm being really honest. As much as Gallagher Englishman है, and of course registration के साथ भी help करते हैं वो, लेकिन oh my God, this is not great news to be honest. तो हो सकता है we might have to take it because of FFP. I don't know. Let's see क्या बोलते हो. And yes, Mikhail is actually true. If I'm being really honest, जैसे मैं बोला, 45 million pound is not a bad deal at all. But Mikhail, our midfield is already light, bro. Our midfield is already light. I know Kante is coming back. Again, assuming we get Enzo, then probably we'll say yes to this. Yes, I understand. But should we not try and tempt Everton for some player return? Yeah, boliye, please. Absolutely. Chelsea should not buy Felix. Mudryk should be our first left wing midfielder. नहीं, Felix तो mostly second striker प्रेफर करते हैं यार. He plays like a cam in Chelsea because 4-2-3-1 खेलेंगे तो दोनों खेलेंगे यार, टेंशन नहीं है उसका. हावर्ड्स का सोचने की बात होगी, बट कोई नहीं. नाउ वी आर आल्सो बीइंग रूई कोस्टा. गैलेगर को नहीं बेचना तो कितने को रखेगा चेल्सी? भाई सजन, दैट इज द पॉइंट. देखिए, हमारे पास प्लेयर्स बहुत है, प्रॉब्लम है कि फिट प्लेयर्स कितने हैं. ये द बिग क्वेश्चन. एंड व्हेन आई से फिट, जो फिट होंगे इवन बाय मिड मार्च, मैच फिट तो बहुत कम है ना अभी, तो दैट्स व्हाट. लेकिन हाँ, दिस मैं तो बोलूंगा भाई, आप 40 मिलियन से कम कर दो, चाहे 30 मिलियन दे दो, लेकिन ओनाना साथ में दो. आई नो ओनाना देंगे तो वो इनफैक्ट पैसा मांगेंगे on the other hand, but it's what it is. Again, maybe I'm just being possessive here, but the fact is it's really it'll be sad if Conor Gallagher goes here. Arey bhai, thanks yaar, absolutely bhai. Thanks a lot Adi bro. I just love it bro. Simply put, Gallagher for 45 million less, nahi yaar, it should be I know he's a very good potential signing for any club at this point, especially Premier League में. He's English, plus वो बहुत ही अच्छा work rate रखते हैं. He has a shot on him, but at the same time he is very raw as well. मैं अभी बोलता हूँ as a starter. तो कहीं ना कहीं मुझे मुश्किल लग रहा है that we'll say no to this Tiger Beast. I cannot see going more than 45 million. But yes, of course, भाई like कर दीजिए और hopefully we are close to 7K. And if not, we have crossed 7K. I don't know. भाई कितने subscribers हुए भाई और कितने likes हो गए? Let me know in the chat. But bhai, I can see 150 likes there, so let's actually target 200 likes.
Certainly we can get to 200 likes in the stream. We are covering literally entire football based transfers यार. We'll come there absolutely. तो 200 likes कर देते हैं and 7k हो जाए यार. Come on. I can see भाई we are 50 subscribers away from 7k. Let's cross that tonight. Let's do that. Yeah, Darren, not rejected. I thought कि यार the fact कि चेल्सी में इतने सारे players है ना, तो इसलिए उनाना को लगा होगा कि I won't start. Whereas Everton में he is the key element in midfield. अब now that Gallagher will go there, उसको लगे सेम चीज एवर्टन में, तो हो सकता है he might say that okay I might be open to move now. Just saying. तो हमें tempt करना चाहिए what I'm saying. But coming back to Mikhail's comment, I don't disagree with this at all. Okay, Pickford and Gallagher. Okay, that's not a bad deal either. That's not a bad deal. I know Kepa is doing well, but we all know when it comes to basically strength, crosses, etc. भाई वहां पर Kepa is not your ideal keeper in the long run. तो वहां पर also Pickford is an Englishman. भाई English team के basically one of the senior members है. तो I think Pickford and 40 million actually is not a bad option. लेकिन अगर Pickford आते तो 40 million नहीं देने वाले एवर्टन यार. Come on, तब आधा कर देंगे उसका is what I would say. But yes, भैया, we should sell. Can't hold on players now. Have to set off the big signings too. Or on the other hand, I would say Gallagher नहीं भाई, आप रूबन लॉफ्टस-चीक को ले लो. रूबन लॉफ्टस-चीक he's a Sean Dyche kind of a player. बोल दो और सेल कर दो भाई. मैं तो बोलता हूँ रूबन लॉफ्टस-चीक को सेल कर दो. गैलेगर के लिए क्यों आ रहा भाई बिड? वेल डेरेन बोल रहे हैं गैलेगर को और भी ज्यादा आना चाहिए. वेल मे बी अगेन एक प्लेयर आना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ साथ में. तो अराउंड 30 million प्लस एक प्लेयर इज व्हाट आई वुड से इज अ बेटर डील इन माय ओपिनियन. बट एनीवे, एंजो पे मुझे डाउट हो रहा है होगा भी या नहीं. रूई कोस्टा खड़ूस है. बिल्कुल. Chelsea's next game, I think we have 2 London derbies. That is basically next weekend होने वाला, इस weekend in fact. So this is going to be what? Chelsea, Fulham, and then Chelsea, West Ham. Chelsea, Fulham के लिए Joao Felix नहीं है. Remember, and we'll be talking on that couple of days में. अर्पिता हाँ कैसे हो? डेफिनेटली भाई 7 के हमें क्रॉस करना है. टारगेट यही था भाई, आज हमें 7 के क्रॉस करना है. तो लेट्स गो देयर एब्सोल्युटली. देखते हो. और मैं लेने वाला हूँ. नहीं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी 2 स्ट्रीम्स में, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन एनी टाइम सून फॉर श्योर. एनीवे, लेट्स सी. यहाँ पे चेल्सी ये तो ले लिया था मैंने. देखते हैं और कुछ कमेंट ले रहा हूं मैं. एक सेकंड क्विकली. वेल सजन बोल रहे हैं कि फाइनली बोली पर खुश हो जाएंगे इफ एंजो कम्स टू चेल्सी. वेल आई थिंक देयर इज समथिंग टू इट. द फैक्ट इज शॉन डाइच अनाउंस होते ही गैलेगर के लिए एक ऑफर आया है. राइट नाउ गैलेगर के लिए ऑफर है. साथ में चेल्सी की बोर्ड आर डिस्कसिंग विद बेनफिका की बोर्ड. सो आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन देयर. देयर इज सम कनेक्शन फॉर श्योर. एब्सोल्युटली. लेट्स सी और क्या बोल रहे हैं भाई. यूनाइटेड भैया नहीं अंकित भैया, बोली का कोई भाई है क्या, उसको बोलिए यूनाइटेड खरीद ले. नहीं, बोली अकेला नहीं यार, बोली का नाम आ रहा है. रिमेंबर इकबाली और क्लियर कैपिटल बहुत लोग हैं जो काइंड ऑफ हैव पुट इन मनी राइट. तनिष बोल रहे Chelsea purchased a 60 million bench warmer in form of Kukurea. Tanish, it is someone जो let's put it this way, मतलब हम लोग सब, तनिष I love you bro, लेकिन हम लोग सब प्रशंसा करते हैं for City for being able to dominate English football इतने सालों तक for the last 4-5 years. Why are we saying that at Chelsea when City can when that person who was jailed उसके लिए City can spend so much? Why can't we spend on Kukurea, bro? Kukurea, yes, बहुत घटिया खेला in the last few weeks, but he was excellent for Brighton and he's a future in my opinion. But remember, we are a squad and we are still champions of the world. मैं बोलना चाहूंगा again and again. We can go to the next level and that is where we need to build a squad जो होती थी हमेशा Chelsea. We used to have Wayne Bridge in his prime and Ashley Cole in his prime in Chelsea at the same time. That is Chelsea Football Club. Yes, आधे से बुरे लगे in the last 20 years, but that's required, bro. We need to get back to that level. I like Todd Boehly doesn't care so much and goes for it. Definitely हमने overpay किया है in case of Kukurea and Mudryk. I will not deny. लेकिन भाई both are for the future. In fact, Mudryk तो अभी के लिए. But anyway, much love to you, Tanish. Iqbali and Boehly are in Portugal for the deal along with Mendes. If Rui Costa still denies the move, then Boehly should bid for Benfica and fire Costa. Man, Anshul, भाई big up भाई. अंशुल का ये वाला कमेंट ब्रो, आई लव्ड इट. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. अंशुल भाई you are like you deserve this भाई. That should be the case, man. That should be the case, man. Absolutely. भाई करना चाहिए. Yes, absolutely. This is a time जहां पर हमें पता है there is a war going on. मैं ट्रांसफर वॉर ऐसे नहीं लिखा हूं.
देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन. यस, मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ. प्रॉपर यहाँ बैंटरिंग क्यों चल रही थी बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम में अगेंस्ट स्पर्स? यहाँ पर आर्सेनल के लिए क्यों क्रॉस मार्क किया मैंने? विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू आर्सेनल, भाई द फैक्ट इज it is entering that stage प्रीमियर लीग में जहां पर मेरे ख्याल से द नेक्स्ट बिग फोर विल कम आउट ऑफ इट इवेंचुअली. और अभी अगर वी विल नॉट हिट दैट रॉड व्हेन इट्स हॉट, we might miss out on Enzo in the summer, just like we missed out on Erling Haaland. You can say that Erling Haaland, remember हम 100 मिलियन तैयार थे, लेकिन हम तैयार नहीं थे to give to his agent at that point. तो टोटल पैकेज जो था 130 मिलियन, हम वो तैयार नहीं थे. We went for Lukaku. यहाँ पर समर में अगर हम वेट करें, वी माइट थिंक इन समर में हमें मिलने वाले हैं कैसेडो और राइस में भी, बट अगेन बिडिंग वॉर होगी यार, कोई गारंटी नहीं है. और समर में वी माइट बी इन 7th पोजीशन, 8th पोजीशन, 9th पोजीशन टेबल, अभी तो 10th है, तो यू नेवर नो. तो आई अग्री विद दैट कमेंट एब्सोल्युटली. इनफैक्ट अंशुल, थैंक्स अ लॉट फॉर द सुपर चैट एज वेल भाई. डेफिनेटली देयर आर रिपोर्ट्स सेइंग दैट दे आर इंटरेस्टेड इन पोर्चुगीज क्लब, लेकिन बेंफिका ज्यादा हो गया. दैट्स आल्सो अ फैक्ट. Wow, that's interesting. La Masia rejects are mostly flops and Castilla rejects are mostly stars at other clubs. Arpita, आप शायद बार्सा फैन भी हो. Why do you say that? Honestly speaking, ऐसे नहीं बोल सकते. Generally speaking, because बहुत सारे लोग हैं where you see that a lot of players flopping, not doing well as well. By the way, having said that, Jude Soonsup-Bell, I believe Spurs are taking from Chelsea. Man City were interested as well, talking about academy, player Cobham, striker hai, who can play winger as well, by the way. Okay, Rice, 18 months left on contract, most likely no intention to sign a new deal, offer same sort of money that Arsenal are offering for Caicedo. Would West Ham be tempted to cash in Zubimendi in summer? Well, देखिए राइस का बिकॉज रेलिगेशन डॉग फाइट में आई डोंट सी राइस कमिंग, वो ऑनेस्ट ओपिनियन है एटलीस्ट अभी के लिए. और समर की दूर की बात है, वी कैन नॉट प्लान फॉर द समर राइट नाउ बिकॉज वी डोंट नो हम किस पोजीशन में होंगे टू अट्रैक्ट प्लेयर्स. वी डोंट नो वेदर वील बी इन एफएफपी बैन एज वेल. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. भाई चेल्सी है, रिमेंबर थिंग्स कैन गो अगेंस्ट अस, यू नेवर नो. एज मच एज यस डेरेन ने जो किया था दैट एट द एंड ऑफ द डे इज अ मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स, उनको पता है क्या कर रहे हैं. दे विल हैव अ टीम बिहाइंड देम, वो लोग कर रहे हैं अपने कैलकुलेशंस. बट डिस्पाइट ऑल दैट, you never know. That is what UEFA does to us a lot of times. भाई 2009 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, भाई मैं दूर भी नहीं जाऊंगा यार, ओपनली कर रहे था भाई. That happens bro, let's be very honest. I know काफी लिवरपूल फैंस देख रहे होंगे, काफी बार्सा फैंस देख रहे होंगे, काफी स्पर्स फैंस देख रहे होंगे, काफी आर्सेनल फैंस देख रहे होंगे. Let's be really honest. When it comes to Chelsea, yes, कभी ना कभी लक होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हार्ड डिसीजंस होते हैं दैट गोज अगेंस्ट अस मोस्ट ऑफन एंड नॉट ऑन एंड ऑफ द फील्ड. लेट्स बी रियली ऑनेस्ट अबाउट इट. 2009 सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग, क्या मैं कुछ बोलूं डिटेल में? गूगल कर लो फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. 2005 सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग, गूगल कर लो, प्लीज गूगल करिए, एब्सोल्युटली गूगल करिए दैट वन. देन व्हाट हैपेंड यस्टरडे? फेबिन्यो, भाई फेबिन्यो को क्या मिला? Did anyone see the tackle? Fabinho ने जो मारा था, did anyone see the tackle against Brighton? हारे एक तो भाई ऐसा टैकल, भाई वुल्व्स के साथ हमारे पास कैमरा एंगल नहीं था, तो वो होता है कभी चेल्सी के साथ. Lukaku, as much as I hate him, what happened last year League Cup final? भाई let me not open my mouth, we all know that. So go for it. No, carefree वाला मोड ले लो next 24 hours के लिए, go for it no matter what Chelsea, I would say. Anyway, Donald Trump, that's a good one, Pudin. Do you think Chelsea can finish in the top 4? I really have my doubts, Siddharth. I wish I could say yes, but जो डिफेंस न्यूकासल रख रही है, रिमेंबर आपके फॉरवर्ड स्ट्राइकर्स, यस विंस यू चैंपियनशिप, यू कैन से दैट, बट फॉर मी जो अक्यूमुलेट करते हैं पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे, दोज आर योर डिफेंडर्स. एंड डिफेंस ऑफ न्यूकासल इज फैंटास्टिक. डिफेंस ऑफ चेल्सी हम रीबिल्ड किए हैं. कुकुरिया आपने सुना है, we have signed a bench warmer at 60 million. ठीक है, this guy is not doing well. He needs to definitely do better. Badiashile अच्छा किए 2 appearance में, he needs to continue. Thiago Silva, can he play week in week out जब चैंपियंस लीग शुरू हो जाएगा? Big question mark. Will Wesley Fofana be back to his best after injury? Big question mark. Will Reece James be back to his best after injury? बहुत सारे question marks है. Chilwell तो अभी भी we are saying ifs and buts, और DM तो है ही नहीं भाई.
जॉर्जिनियो, अच्छा यहाँ पर मैं दिखाने वाला था, मैं भूल गया भाई. अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट दैट लाइक बटन. यस, मैं सिलेक्टेड कमेंट्स ले रहा हूँ. बिग अप टू ऑल द मेंबर्स एंड मॉड्स बट ऑल द सब्सक्राइबर्स एज वेल, एब्सोल्युटली. लेकिन भाई मैं कुछ कुछ स्टार कर रहा हूँ. आई कम बैक टू फ्यू कमेंट्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द एपिसोड, एब्सोल्युटली. तो भाई बने रहना लास्ट तक. वी आर कवरिंग नॉट जस्ट चेल्सी, वी आर कवरिंग आर्सेनल, बार्सिलोना, Manchester United, Liverpool to some extent, and Man City as well as Spurs. Todd Bowley in the transfer window. गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता है मॉन्स्टर. निश्चित ब्रो. एनीवे लेट्स सी दिस वन. ओके, ये वाला मैं दिखाने वाला हूँ कुछ आप लोग को. तो दिस इज भाई बिग अप टू एक्सपेक्टेड चेल्सी. मैं यहाँ पर कुछ डेटा शेयर करने वाला हूँ आपके वजह से. व्हाई इज एंजो फर्नांडिस रेटेड एज मच? व्हाई इज ही रेटेड एज मच? आप देखिए, ये दिस इज बेसिकली compared to midfielders in the top 5 leagues. Okay, so that is basically on 29 January लिया गया है from FB Ref और expected Chelsea को shout out है. एक्चुअली ट्विटर से मैंने पिक किया, झूठ नहीं बोलूंगा. ठीक है, तो this is what it is. आप देखिए यार, shots, key passes, shot creating actions, goal creating actions, expected non-penalty goal contributions, non-penalty goal contributions. Just look at this: passing volume, progressive passes, through passes, passes into the box, switches, everything closer to 90 or above that. Brilliant. Even dribbling भाई for a CDM 76.6. लेकिन in terms of defensive awareness, और यहाँ पर comments आ रहे थे that we still need a proper DM जो प्रीमियर लीग में defensive midfielder बन सके next to him. That is something जो जकारिया कर सकता है till the summer, I believe so. अगर कांटे फिट नहीं रहते तो तो वो चाहिए हमें. लेकिन that is where he can still improve. जरूर से बोलूंगा, लेकिन उनका स्ट्रेंथ क्या है? बॉल प्रोग्रेशन मशीन है लिटरली, एंड दैट इज व्हाट वी नीड. हम लोग का प्रोग्रेशन, यस, कैरी फॉर कोवाचिच, आई बिलीव ही इज वन ऑफ द मोस्ट अनरेटेड प्लेयर्स, लेकिन वो फॉर्म में नहीं है, फिटनेस भी नहीं है, इंजरी, ही हैज टू हैव सर्जरी मेरे ख्याल से समर में. टॉप लेवल फाइनल बॉल रहती है एंजो फर्नांडिस की. ग्रेट पासिंग रेंज, कॉन्फिडेंट शूटर, गुड टैकलिंग प्रोवेस, इक्वली कंफर्टेबल एज अ 6 और एन 8. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. बट reactive defender, not proactive. इसलिए मैं बोल रहा हूँ we need someone of that level who can basically do very well when it comes to defending in terms of strength और pace होता है. वहां पर he can still improve. He's not bad but he can still improve, absolutely. But यहाँ पर मैं compare करना चाहूंगा quickly. यहाँ पर मैं किससे compare कर रहा हूँ? with a current DM who can pass the ball as well. वो कौन है भाई? सब लोग को पता है कौन है, किसकी बारे में बात कर रहा हूँ? Pretty sure you know it, right? किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? सब लोग कम ऑन. मैं कंपेयर करना चाहूंगा यहाँ पे विद अ जॉर्जिनियो. ठीक है, तो जॉर्जिनियो का आप देख ले, ये स्टैट्स है जॉर्जिनियो के. इफ यू रियली कंपेयर देयर इज नो कंपैरिजन. ठीक है, बहुत ही कम है यार. जहां पर आपके प्रोग्रेशन में चाहिए ज्यादा, वहां पर बहुत ही कम है. तो इसलिए मैं बहुत बार बोला भी हूं, आई डोंट नो इफ यू गाइस अग्री, जो मैंने प्रीवियस स्ट्रीम्स की है, बेस्ट 11 फॉर चेल्सी अगर एंजो फर्नांडिस कम्स और डज नॉट कम एटसेट्रा, तब मैंने बोला है दैट इफ एंजो कम्स ही माइट एक्चुअली रिप्लेस कोवाचिच, द प्रोग्रेसिवनेस. और जॉर्जिनियो के लिए वी नीड अ प्रॉपर डिफेंसिव कवर व्हिच कैन बी जकारिया फॉर द टाइमिंग, एंड दैट इज व्हाट वुड बी अ बेटर डुओ अभी के लिए. आप लोग बोलिए व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट इट. बट अगेन लेट मी कम टू द कमेंट्स. सो मीनवाइल मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ क्या हुआ है भाई. कुछ ना कुछ न्यूज आई है कि लेट मी नो इन द चैट एज वेल. ओके, यहाँ पर वुल्व्स ने साइन किया जाओ गोमेज ऑन परमानेंट डील फ्रॉम फ्लेमिंगो. दैट्स इंटरेस्टिंग. एंड ब्राइटन साइन अ टैलेंटेड मिडफील्डर फ्रॉम एआई के. भाई साहब ये कौन है? इसका देखना पड़ेगा भाई. ब्राइटन का एक साइनिंग की है. सो इज इट कनेक्टेड टू काइसेडो बाय एनी चांस? सब लोग बोलिए in case you know it. Let me also check it out. Jorginho ball winning is not as good as Enzo and man marking too. Instead of selling to Everton, Chelsea could try and offer Gallagher plus cash for Caicedo. Better deal for both Chelsea and Brighton. हाँ, Gunners forever. That's a brilliant comment. But just लेट हो गया आपका कमेंट, क्योंकि फेब्रिशो ने पहले ये बता दिया है कि यासिन अयारी आ रहे. भाई यासिन अयारी का प्रोफाइल देखते हैं, क्या है इनका प्रोफाइल. आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम कि मैं जानता हूं उसको, लाइक आई नो एवरीवन इन द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर देखते हैं भाई. लेट मी जस्ट चेक इट आउट. यासिन अयारी का क्या प्रोफाइल है, अगर आप लोगों को पता है तो ऐड करिएगा. बट दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. दिस माइट जस्ट चेंज द डील फॉर आर्सेनल, नॉट जस्ट फॉर चेल्सी. एब्सोल्युटली हो सकता है. यस, यासिन अयारी इज अ सेंट्रल मिडफील्डर पीपल. भाई वो है, बट बहुत ही यंग है, 19 ईयर ओल्ड है. तो आई डोंट थिंक इज अ स्टार्टर.
He's one for the future. That's the difference. But let's see. अभी टाइम है यार इंद्रजीत, अभी टाइम है, देखते हैं. We'll be definitely talking on that. It feels like Chelsea are not going to walk away from the Enzo Fernandez deal without giving it everything now. That usually means these days walking away with the player. हो. डीन जोन्स ने बोला है जॉर्जिनो को डीएम बुलाना बंद कर दो एकदम. अजिंक्य, व्हेन आई से डीएम, हमारे जो डीएम है ही नहीं कोई लिटरली, तो ही इज आवर ओनली डीएम इन द स्क्वाड ऑनेस्टली अलोंग विद जकारिया. और कोई है ही नहीं यार अजिंक्य, दैट इज द होल पॉइंट. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इटली में ही प्लेज एज अ डीएम ब्रो, ही डेफिनेटली डज. हाँ रजिस्ट्रार बोल सकते हो, बट ही प्लेज लाइक अ डीएम एज वेल, क्योंकि देयर आर टू पीपल कवरिंग, नॉट जस्ट एक पर्सन कवरिंग नेक्स्ट टू हिम. हाँ मैंने वहीं देखा यार, मैंने वहीं पर देखा एब्सोल्युटली. मैं आपको दिखा सकता था लेकिन मैंने वहीं पर देखा. बेसिकली इज अ सेंट्रल मिडफील्डर, 19 ईयर ओल्ड. कांटे, नो आई विल नॉट कॉल हिम अ डीएम, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पर जो एक प्रॉपर डिस्ट्रॉयर चाहिए, जो एक पर्सन हु कैन एक्चुअली बी पर्सन जो can put in a tackle, those kind of things कर सकता on the pitch. Kante kind of is in that bracket, but I would not call him a hardcore DM. He's more like a destroyer who's ball carrier as well, which we forget. Not a great passer, लेकिन definitely बाकी सब चीज में tick marks for me absolutely. He's more like a number 6/8, जो in a way Enzo Fernandez can become once he kind of builds up a little bit more, but definitely worth it in my opinion. भाई क्या हाल है भाई दक्ष, क्या हाल है भाई. ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर दक्ष अबाउट, मैंने अभी भी दिखाया अबाउट ब्राइटन. तो लुक्स लाइक क्या काइसेडो, आई नो मैंने आपके ट्वीट देखे. दक्ष बिलीव्स दैट काइसेडो के लिए 70 मिलियन से ज्यादा जाना इज लाइक क्रेजी. इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ इट. बट दक्ष, दैट्स द थिंग, अगर आपको करना है कुछ प्रीमियर लीग में, प्रॉब्ली दिस इज द सीजन ब्रो. You have a very good chance of winning. Yes, अगर नहीं भी आता तो बोलता हूँ you have a great chance. But पार्टे कितने देर के लिए बाहर है, do let me know bro. बिल्कुल no problem. भाई everyone, yes, let's hit that like button. Of course, subscribe करिएगा. I think अंकित भाई समर में राइस पक्का आएगा. कॉबम कनेक्शन भी है थोड़ा. पुदिन, a lot depends on Mason Mount and Ben Chilwell. Remember, Ben Chilwell और Mason Mount उसके अच्छे दोस्त है. A lot depends on them. इसलिए बोल रहा हूँ ना. देखते हैं anyway. Chelsea should sign most players in January, and they have done this because you don't have surety of Champions League, and big players will think about it. Bilkul, as much as we can still attract players, the reality is that Chelsea, let's be real, literally real. Definitely, I would like to say we are the biggest club in England, but we are not. Manchester United have that pull आज के दिन में भी, but we don't have that pull compared to a Manchester United, compared to a Real Madrid, compared to a Barcelona. We don't. That's a reality. We cannot deny that. तो हमें लेना पड़ेगा अभी, एंड लेट्स ऑप्ट फॉर गोइंग एटलीस्ट टू यूरोपा, इफ नॉट द चैंपियंस लीग. देखते लेट्स से. एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप, मुड्रिक नीड्स समवन हु पास्ड ऑन बॉल एंड ही कैन मेक रन्स थ्रू डिफेंस एंड चांसेस. ओके, दैट्स गुड वन. ठीक है, पता नहीं, नॉट श्योर. एनीवे, ओके, नो प्रॉब्लम गनर्स फॉरएवर, नो प्रॉब्लम ऑन दैट. ये तो ले लिया था मैंने. भाई मिटोमा अगेन, ब्राइटन, भाई ब्राइटन आर बिल्डिंग सम मैडनेस यार, मतलब क्रेजी अमाउंट ऑफ मैडनेस चल रही है ब्राइटन में. होपफुली मिटोमा फॉर ब्राइटन सेक विल फेच अनदर 100 मिलियन. आई एम टेलिंग यू भाई, मिटोमा will break the transfer record. I'm telling you, next summer, wait and watch. Mitoma will break it, simple as that. वो क्या हुआ भाई, मैं आपके ट्वीट तो देख ही रहा था. ओके, मेरे ख्याल से ट्विटर जनरली हैंग हो गया होगा, मतलब सो मच हैपनिंग ऑन ट्विटर ना. बट कोई नहीं. एनीवे, मैं देख रहा हूँ वापस से भाई. फेब्रिशो, डेविड ऑनस्टीन, मैट लॉ, भाई कुछ आया है क्या? कुछ आया तो बोल दीजिए भाई सब लोग. एवरीवन, नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. अगेन शाउट आउट टू ए फॉर आर्सेनल भी यहाँ पर. ओके, कैंसेलो, हियर वी गो, हो गया पीपल. कंग्रेचुलेशन टू बायर्न फैंस. भाई मुदित कहां पर हो? मुदित, उत्कर्ष कहां पर हो? Congratulations, man. This is a big deal for Bayern Munich. This has happened. Breaking news. Bayern have completed the agreement to sign Joao Cancelo. Here we go. Deal set to be completed on loan plus 70 million euros buy option clause. बहुत ज़्यादा है. 70 million. Remember, they paid a big deal even for another defender in the summer. We all know Matheus de Ligt. We all wanted Matheus de Ligt also Premier League में, लेकिन he went to Bayern Munich, and this one
70 million euros. Bhai, Cancelo, he's had some crazy deals, bro, in his career already. Cancelo told Pep Guardiola that he wanted to leave. Medical test later tonight. Boarding completed. Oh my God. This is absolute breaking news. By City fans, what is your plan B now? Are you okay for Cancelo to go and not have an extra fullback जो दोनों साइड खेल सकता है भाई? मतलब for me this is a potential Champions League starter we are talking about. Potential का है ही यार, absolutely है. हाँ, he's your raw definitely Daksh, लेकिन the way Brighton go about the business, I won't be surprised अगर 6 महीनों में people are going for him as well, knowing about his scouting. But yeah, maybe it's not a replacement right now. You're right. Pedro Porro for City, Spurs in the mud. Yeah, looks like it. That if वो सच में हो जाए ना, that will be crazy, bro. That will be crazy, man. Spurs is totally in the mud. Not that, मतलब मैं again बहुत surprised हूँ कि Spurs even needed that guy. To be honest, Spurs were good anyway. I know they don't have great fullbacks, लेकिन for me वो priority नहीं होनी चाहिए थी उनकी. Anyway, उतना पैसों के लिए नहीं. But anyway, I am happy that whenever it happens. But yeah, absolutely, bhai. Again, I request everyone to hit that like button and do share the stream hopefully. लेकिन what do you think about this? ये बायर्न वाले PSG को हराने के लिए कुछ भी कर देंगे. Honestly, it's not just PSG. Shlok, Bayern have not started well after World Cup. काफी खतरनाक डिफेंस लगा है उनका badly, I'm saying, right? अजिंक्य बोले कितना गधा प्लेयर है कैंसेलो, यूसीएल जीत सकता है था एट सिटी दिस सीजन, हाउएवर ही वीकेंड द फैब्रिक एट सिटी. ग्रेट न्यूज. कहीं ना कहीं अजिंक्य, आई थिंक लुइस जो है यंगस्टर एट सिटी और नेथनाकी, देयर प्रोमिनेंस वे फोर्स किया है कैंसेलो को, क्योंकि नेथनाकी इज नॉट टेकिंग अ स्टेप बैक, ब्रो. अगेन, जो लोग बिलीव नहीं करते जाके चेक करिए मेरे समर ट्रांसफर विंडो स्ट्रीम में, व्हेन नेथनाकी हैड ऑलमोस्ट कम टू चेल्सी, बहुत क्लोज हो रहा था उस समय, मैंने इन माइनॉरिटी में रहकर मैं बोल रहा था भाई नेथनाकी टू चेल्सी बैक, डेफिनेटली यस. पीपल डिसएग्रीड, but for me he was on. He has been doing the job at left back as well, we forget that, and a very good job at that. ठीक है, Nathanaki is defensively, and I know Daksh है chat में A for Arsenal भाई, as much as Zinchenko is awesome for Arsenal, I think Nathanaki as a package, I personally would say is a better fit for the Premier League. इन टर्म्स ऑफ जो सिटी को चाहिए था, एक स्टीलीनेस जो वो दिख नहीं रहा था बिकॉज ऑफ इंजरीज एज मच, और ऑन एंड ऑफ हो रहे थे पिच में. लेकिन द फैक्ट डिफेंसिवली इज बेटर. ही इज समवन हु हैज प्लेड इवन एट लेफ्ट मिडफील्ड एज वेल एज डिफेंसिव मिडफील्ड. आई नो बहुत साल हो गए, प्लस डीएम और सॉरी सेंटर बैक भी खेलते हैं. तो फॉर मी center back is the main position, who can play full back as well as other positions. He is better than say a Blind or Zinchenko, if you really ask me about it. He's a combination जो steeliness भी लाते हैं, and now he's fit enough. But right side, I hear you, because Kyle Walker stays injured a lot of times आजकल. तो हो सकता है that somewhere down the line that they might go for Pedro Porro जैसे दक्ष बोल रहा था. I'm not sure. Let's see what happens. लेकिन yes, Gallagher to Everton भाई, 45 million. What do you think about the fee? मतलब for Gallagher, he's very young अभी भी. Maybe if we ask a player in return like a Pickford, मैं नहीं mind करूँगा because he's an Englishman. But Gallagher only sell, I don't think so. I would. मतलब honestly, Ruben Loftus-Cheek लो यार, Everton please. This Cancelo move opens up playing time for Lewis and Gomez, as well as ship out a disgruntled player, plus send a message to the likes of Grealish and Foden. कि BS will not be tolerated. नहीं, निश्चित, I hear you absolutely. लेकिन Pep, यार ये एक चीज बोलना पड़ेगा Pep के बारे में. He is really respective of someone who doesn't want to be here. Simple as that. Or talk about Arteta in the past year. Come on. Talk about Sergio Aguero. He let him go as well. Do you think this is City being ruthless or another high-profile player falling out with Pep? I think it's about actually neither. यार सच में बोलो तो neither. It's just the fact that yes, हो सकता है there might have been issues with Pep again. That might be a possibility because Pep definitely has built an ego over the years. No two ways about it. और deny नहीं करने वाला. But Daksh, don't you think that it's a clear case of him being played out of the team by a Lewis and a Nathan Ake? मतलब do you not think that yes, Lewis is someone जो आप नहीं rely करोगे week in week out अभी, but if you're seeing that kind of trajectory Lewis के career में, probably this has to be the time for Cancelo to move on, because remember अभी भी 28-year-old है, अभी भी is in his prime, so he can be in a Champions League side starting. वहाँ पर if City are not able to assure him, I think it's best for him to move, honestly speaking. और Bayern, as much as Mazraoui might be back, Mazraoui बहुत अच्छा है, Cancelo और Mazraoui के बीच में pretty sure यहाँ पर Cancelo will take the preference, especially
loan with a buy option of 70 million euros हो तो, in my opinion. Again, let me know in the chat. बिल्कुल बिल्कुल भाई मुदित आ गए जैसे ही बोला Bayern Munich fan in the house. भाई congratulations man, Cancelo is a really good deal in my opinion. Absolutely steal in my opinion. It's a really good deal, so trust me in that. Yeah, Jan window का ही है. Good evening to Nathan. Nathan bro, how are you? By the way, yes Nathan, Manchester United seems like you have done. Pretty sure यहाँ पर आप expect कर रहे थे Maguire और Lindelof might go, but as per the report, they are not going anywhere. So what do you think about that, being a Manchester United fan? And do you think that जो Elanga के पास I think somewhere close to 10 offers आए हैं and still Manchester United have not let him go? Is it unfair on the kid? Do let me know on that, Nathan. Gallagher to Everton makes me sad, as you know. I like him, Ankit. बिल्कुल नहीं, Nathan. I am in that boat as well. People are very short-lived. भाई गैलेगर जब आया था चेल्सी वापस से, ही वाज अ न्यू साइनिंग फॉर अस. यस, ही डिडंट डू एज ग्रेट एज व्हाट हम एक्सपेक्ट किए थे, बट इन बोथ द गेम्स अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस कोइंसिडेंटली ही डिड वेल. ठीक है, तो एंड वर्ल्ड कप में ही वाज पिक्ड फॉर व्हाटएवर रीजन, बट यू हैव टू रेट दैट गाय. ही इज अ यंगस्टर, पीपल फॉरगेट इट. वर्क हॉर्स है, इन्फेक्शियस एनर्जी है. एवर्टन को वो चाहिए अभी. Remember, Anthony Gordon was that for Everton, that infectious energy. That is what Gallagher will bring. Yes, different players, central midfielder hai. Anthony Gordon was a wide midfielder, but whatever it is, Gallagher fits in beautifully for Sean Dyche. Having said that, Nathan, you tell me, bro, 45 million, is it enough? Considering जो आज के rates होते हैं, Gallagher is an England international. Do let me know about that. Well, mid-table team starter, Prabhat, but Chelsea squad player also. That's what मैं थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा उसको, but I hear you. Chelsea have plans to use Andre Santos, okay? इसलिए शायद हो सकता है. Yes, work permit का issues चल रहे हैं. That is the thing, Tiger Beast. If Chelsea don't end up with, this guy, what will happen? Work permit नहीं है. मतलब think about it. With Kante coming back from a long-term injury, थोड़ा सा difficult हो सकता है. Ruben Loftus-Cheek might be that guy, लेकिन come on, Zakaria both injury prone भी है. नहीं पुलिसिक कहीं नहीं जा रहा अजिंक्य, इस विंडो में कहीं नहीं जा रहा. द रीजन बीइंग पुलिसिक इज करंटली इंजर्ड. आई थिंक वो वापस आ रहे हैं बाय 1 month फ्रॉम नाउ. आई डोंट थिंक एनीवेयर क्लोज है, तो आई डोंट थिंक व्हेन यू आर इंजर्ड यू कैन डू अ मेडिकल, और एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग कन्विंसिंग नहीं है एज वेल. All the 11 players of the 17 teams in Bundesliga play their best to fit into the first 11 or the bench of Bayern. See, that is the thing about Bayern Munich, यार. मतलब they, whatever it is, they attract players, यार. क्या बोल सकते हैं? नहीं, he can, Arpita. Don't get me wrong. Attacking wise, he is very good though. The way Bayern play, मुझे लगता है that he can be really good asset. Mazraoui भी, to be honest, he also can get, यार. but लेकिन for me, Cancelo एक प्लान भी लाते हैं. He is an inverted fullback. वो एक प्लान भी लाते हैं for me, definitely. He can play on the left hand side भी. Mudryk and Enzo would be favorite. Okay. Chelsea are optimistic that the size of the bid, together with Fernandez's desire to move to Stamford Bridge, will eventually convince Benfica president Rui Costa to sell. Bhai sab log, fingers crossed, toes crossed, everyone. Yeah, Mazraoui can also play left back. That's also a win-win, absolutely. Fair enough. Alphonso Davies definitely has not come back the way that you anticipated. I hear you. लेकिन हाँ, sad for the Bundesliga. I would say that. यार सब साइनिंग कर रहे हैं. Barca is here struggling to register their own La Masia kiddo. Pain of a Barca fan. We can't just catch a break. By Jim Krishna, you are on top of the La Liga, यार. You are yet to play a knockout game against Manchester United. I know. ट्रांसफर्स जो होते हैं, यू गेट अ डिफरेंट किक, वो होता है. बट रिमेंबर, आपने बहुत ट्रांसफर्स किए हैं. यू हैव बीटन चेल्सी ऑन अ कपल ऑफ ट्रांसफर्स समर में. जस्ट सेइंग. तो फॉर मी बारसा, यस, आपको चाहिए एक राइट बैक, आपको चाहिए एक सेंट्रल मिडफील्डर. कोई भी बोल सकता है कितने लोग हैं जो सेंट्रल मिडफील्डर साइन किए इस समर, इस विंटर में, कितने लोग हैं. और बाय द वे मैं देख रहा हूं भाई, लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं. एवरीवन, लेट्स हिट दैट लाइक बटन. सिंपल टारगेट हमने रखा था, लेट्स गेट टू 200 लाइक्स. बहुत ही सिंपल टारगेट है. हम लोग लिटरली हर एक चीज ला रहे हैं, नॉट जस्ट आज. हम लोग कम ऑन, पीपल माइट मिसअंडरस्टैंड, बट दिस आई रियली मीन इट. Everyone watching Almighty Blues FC and Almighty Sports Plus knows that, and I'm saying a very big deal. We are not opportunistic. Okay, we are not opportunistic. हम लोग लाते हैं. Your
with all due respect to everyone, here is a true fan who has followed 50 transfer windows, is coming to you live, covering every transfer story possible. And I mean every. Okay? Every transfer story possible. I literally come daily. Of course, you all are my friends. You're part of the Almighty fam. Definitely. But we are not here for the clicks of Messi and Ronaldo. With all due respect to the GOATs, and they are the GOATs. Okay? We don't do that. हम लोग नहीं आते खाली जब एंजो फर्नांडिस का चल रहा है. हम लोग आते हैं जब हर चीज चल रहा था फॉर द लास्ट 29 days. चलो भाई सब लोग hit that like button. Let's have more people. And you all know my face does not sell, but my content sells, bro. Let me be very honest and frank with you. मैं यहाँ पर दूसरों पर डिपेंड नहीं करता. If I want, I can easily go and call a big shot, एक और पैनल ला दो big time, और मुझे पता है लोग आएंगे देखने के लिए. I know that very well. I don't believe in that because I believe in myself. I believe in you people. This is an almighty fam, my almighty fam, and I'm proud of you guys. You guys are my fellow panelists, and I love you for that. Absolutely love you for that. I know there are some haters who might have gone right now, and I don't want such people. I want the people who are here for absolute content and not just for clickbaits. इसीलिए सब लोग hit that like button definitely, and I would wish that everyone definitely has subscribed as well. Taron in the house, what's up, bro? Taron, much love to you. Big up, bro. And for people who don't know Taron, bro, check out Taron, CSC Taron on Twitter, bro, as in some great content there. But Taron has been with the channel right from month one. In fact, my first live stream, Taron was the one who pushed me for a live stream. So big up to Taron. Would you rather have Caicedo or Fernandez? Also, do you think 105 million is too steep? Taron, no two ways about it, is too steep. By the way, Taron, if you're free, do message me, bro. Definitely, you're welcome all the time. You know that it's your channel as well, bro. But, dekho, for Caicedo, I think anything steep of 75 million is a bit too much, because is he a player who's going to be basically playing in a Champions League semi-final in the future? Starter. I don't see that. He comes in the league of a Bissouma for me, which is very good, but not that elite level. Enzo Fernandez, in my opinion, is elite level. I really believe that. Aaron, we have spoken a lot Champions League football ke baare mein, and you know that Benfica, everything flows through Enzo. Argentina, the moment he came in, everything, he changed the game, right? For me, he's that guy, but he is not the end story. End story hoga ki dusra midfielder kaun aayega summer mein. That will make up our midfield totally. Right now, we are not ready. But the fact is, Jorginho is here to stay, Kante is here to stay at least until summer, if not more. And Zakaria is here to stay at least until summer. So for that, I'm okay to go for Enzo. 105 million, 100%, 100%, very steep. He is almost like a Mudryk kind of scenario, where you know that this guy is already a star or would be star, and you know that it's worth an investment. Something that we lack. As much as I'm a Kovacic fan, you are, Taron, very much so. Trust me, he's not been at his terrific best in the last couple of months, and it shows. His injury, his fatigue is showing to some extent, and just that, we need something new in the midfield to kind of have some more progression. And it showed a lot of stats. I feel, yes, we might not break the bank 105 million in one shot, but as per reports, if we are going that way, why not? Bring it on. Absolutely bring it on. But at the same time, the fact is, Conor Gallagher going away. I'm not very happy with that, if I'm being truly honest. Okay, let's see. By the way, Schalke is bottom of Bundesliga, bad times. Yeah. Thanks, bro. Thanks a lot for saying that. Bilkul, yeah. Thanks a lot. Again, see, there are some things that I say on the face. I know काफी लोगों को बुरा भी लगता है, और जो लोग हैं, कुछ लोग हैं भाई, with all due respect, I love few channels and I recommend them. जो बाकी channels नहीं करते मेरे लिए यार, let's be very honest about it. यहाँ पर I'm not going to play any games. Do check out my channels tab, और यहाँ पर मैं खुलेआम बोलता हूँ, definitely I love them, and the people I love them, I recommend them. But at the same time, if they don't, it's up to them. मैं कहीं किसी को force नहीं कर सकता. ये भी बोल सकता हूँ that I call a lot of people, if they don't come on, हो सकता है वो busy है. Obviously, जब कोई बोलता है that they are kind of busy for me but not busy for others, it shows me. And people who drop off a lot of times, because they go by face value. I believe in content. And that's why I believe in. I know people are dropping in the last 10 minutes. People are dropping. I can see that. मुझे दिख रहा है. But यहाँ पर people are very judgmental in a few minutes. So ऐसे लोग do not make an almighty fam. I want almighty fam who believe in the content, who don't believe in clickbaits, and who believe in, true passion of the game. ठीक है, who don't believe in basically, आपके भेड़ चाल में follow नहीं करते. That's what I want really. Anyway, who do you okay, Pioli would get sacked. हाँ, यहाँ पर हम already बात कर रहे हैं, that are you seeing, and everyone in the chat, do let me know. थोड़ा सा off topic है,
बट डू लेट मी नो, जो डेरेन का क्वेश्चन है, जो एसी मिलान कर रही है बहुत टेरिबल कर रही है लास्ट 2 मंथ्स में, मे बी जस्ट मे बी आई एम सेइंग दैट यू विल सी एंटोनियो कॉन्टे पॉसिबली, द फैक्ट इज अगर उनको नहीं मिलता पेड्रो पोरो टू लीव स्पर्स एंड गो टू एसी मिलान, discuss. Do let me know about that in the summer. Joao Cancelo's relationship with Pep Guardiola definitely worsened, with star fullback seen as disruptive in the squad. Yes, absolutely. Yeah, but again, Foden, I still believe is a Pep man. Well, Pep has really depended on him. Cancelo का देखिए, for me इट वॉज लिटिल बिट टेलिंग ऑल्सो दक्ष, क्योंकि यार वर्ल्ड कप में भी कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि यार आई नो यहाँ पर कैंसेलो का इतना अच्छा नहीं था डियोगो डालो जितना फॉर्म एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट द फैक्ट इज ही डिड नॉट स्टार्ट सम गेम्स वहां पर, मे बी he has an attitude issue, Cancelo, I'm just saying, maybe. Anyway, Nathan saying I think Maguire should go and Lindelof stays. I think Elanga should go to Dortmund. He was forced into a starting 11 when we needed him, wasn't allowed to mature into the role. 100% agreed. Ankit, if we are selling Gallagher, then we have to have to include buyback clause in his deal, though I'd want him to be sold. Okay, buyback is a given here, 100%. Oh my god. But anyway, positive. See, if Gallagher goes and Enzo does not come in, Abhishek, that will be crazily bad, bro. या एब्सोल्युटली अग्रीड विद टैरन देयर. देखिए, जो टैरन बोल रहे हैं यहाँ पर अगर हमें मिल जाता है देन आई एम फॉर इट, ठीक है. बट जैसे यहाँ पर आई थिंक अंशुल ने बोला है, वी नीड अ बायबैक क्लॉज इंसर्टेड फॉर श्योर 100%. ओह माय गॉड, आई होप इट हैपेंस मैन. पीपल अगेन अगेन. भाई मेरा तो पहला तो ये, लेकिन ये था भाई आफ्टर सीइंग दिस. When will Felix come back? Excited to see him. He will come back after the next game. Next game में he is not available, but after the next game is coming back. क्या जमाना आ गया, 120 मिलियन देकर भी प्लेयर नहीं मिल रहे. अब लोग कहेंगे मार्केट हमने इन्फ्लेट की. भाई हम तो खुद ही नहीं देना चाहते फुल पेमेंट. देखते यार भाई, केयर फ्री, वी ऑल नो दैट, केयर फ्री. भाई कोई नहीं वैशाख, कोई नहीं. आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट अगेन. अभी भी आई नो दुनिया तो बदलेगी नहीं. मेरे एक बोलने से क्या होता है यार, दुनिया तो भेड़ चाल में बिलीव करती है यार. अगेन यहाँ पर पीपल, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूंगा. अगेन मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, आई नो बहुत ही अच्छी ट्रांसफर स्ट्रीम चल रही है. मैं यहाँ पर देख रहा था भाई कल, भाई लिटरली मैं बात कर रहा था यहाँ पर थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली हैपनिंग इन ट्रांसफर, थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, इन द प्रीमियर लीग. इवन अ लिटिल बिट हमने कवर किया था अबाउट से आईएसएल एक्सेट्रा, दोस थिंग्स वी वर डिस्कसिंग. बहुत ही करंट एकदम लेटेस्ट बात करते हैं विद फुल पैशन. यहाँ पर एक स्ट्रीम आता है भाई, समवन सेइंग दैट भाई रोनाल्डो माइट कम टू यूरोप. अब बस सब लोग भाग जाते हैं वहां पर. तो दैट इज समथिंग एज अ फुटबॉल बेस ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड ब्रो व्हाट इज क्लिकबेट एंड व्हाट इज नॉट. हमने समझना है, ठीक है. आप जस्ट बिकॉज यू आर अ बिग चैनल ऑफ अ मिलियन सब्सक्राइबर्स डजंट मीन दैट आप अगर कुछ भी बोलोगे वो सच हो जाएगा. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट. इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन, स्पेशली इन द ट्रांसफर मार्केट. हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. वी कैन नॉट जस्ट बिलीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बट हम भी ट्राई करते हैं. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं पूरा ही सच लाता हूँ. ओनली भाई जो बोला है सच बोला है, वो सच के सिवाय कुछ नहीं बोला, वो चीज नहीं है. बट द फैक्ट इज वी ट्राई एंड कीप इट एज ट्रू एज पॉसिबल. यू ऑल नो दैट. एनीवे, बिल्कुल यार डेरेन, वी नो दैट एब्सोल्युटली. कॉन्टे रेस मिलान नॉट नाउ बट समर इज व्हाट आई एम सेइंग. कॉन्टे आउट, गौरव बोल रहे हैं. Absolutely. Let's get to 200 likes. By 200 likes, we are there. Come on. An almighty fam can definitely help me there. Can Milan play back three if Conte comes? Do you see Poch at Milan? Well, Pochettino, मैं देखता हूँ back to Spurs, and I can see Conte going to Milan. Yes, back three, why not? In fact, Darren, मैं बोलता हूँ, the fact is जो shit defending करी ना AC Milan अभी, they need to go to a back three. वो हो गया जो लैम्पार्ड के समय में था ना, towards the end. That is the scenario that Milan का चल रहा है. They need a Tuchel kind of a manager. Tuchel नहीं जाने वाला, but Conte is the closest. इसलिए मैं बोल रहा हूँ Conte to Milan. Tomori in a back three is much better. Anyway, जैसे मैं AC Milan का बात करना लग जाता हूँ भाई, people start dropping. भाई एक तो भाई सुना कर यार, people who are left behind. देखिए यार, फुटबॉल इज नॉट जस्ट अबाउट मेसी रोनाल्डो. दे आर गोट्स एंड दे विल रिमेन गोट्स. फुटबॉल इज नॉट जस्ट अबाउट द टॉप 5 क्लब्स इन यूरोप. देयर इज मोर टू फुटबॉल. AC Milan की बात कर रहा हूँ, who is basically one of the top which is one of the most topmost clubs in the history of football period.
तो भाई इतने लोग ड्रॉप मत करा करिए, इसलिए लोग पूछते मुझे आप एसी मिलान के फैन होकर भाई इतना कंटेंट क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करता हूँ भाई, बिकॉज पीपल डोंट बैक मी इनफ एनीवे, डजंट मीन एनीथिंग, जस्ट सेइंग व्हाट आई फेल्ट. अरे जिम कृष्णा, नो यार, एब्सोल्युटली मच लव टू यू ब्रो. आकाश बिग अप, कैसे हो? Gallagher is saying not for Everton. I don't want to join there. I want to play for Big Six team. Let's see. That's actually not too bad news. Again, remember Taron Pudin? We had Chaloba, another player that I want to be in Chelsea as a squad player, like a Gallagher, not as a starter. दोनों ने रिजेक्ट किया. See, such players don't come every day. They want to do. Remember, Gallagher had an offer even from Crystal Palace, somewhere जहां पर उसने बहुत अच्छा किया है. But he turned down in the summer. Chaloba, Inter Milan, that was turned down. He had options, but no, it was end of the day. Let's see how it goes. Zuma 2.0 vibes if Gallagher goes. Bhai, I would say Gallagher is even more because he's a Common boy proper. Yeah, I know Zuma बहुत young आए थे. When Felix posted for Chelsea that I'll be back soon, one of Atletico Madrid fans said, "Don't forget you're coming back to Madrid in summer." And a close friend of Felix replied to a stating, "Keep dreaming." अरे भाई, कोई नहीं. हाँ, ये वाला प्रभात, David Raya, डेफिनेटली हम लिंक हुए थे. डेफिनेटली देयर आर टॉक्स अबाउट पिकफोर्ड एज वेल प्रभात, लेकिन अगेन ये समर में होगा. आई डोंट सी इट हैपनिंग राइट नाउ. आई थिंक द फैक्ट इज मेंडी इज स्टिल गोइंग टू स्टे फॉर द टाइमिंग एंड आई डोंट थिंक इज गोइंग नोवेयर. अभी देखते हैं. इफ मेंडी डज नॉट अग्री टू अ न्यू डील ऑन लेस से नॉट एज मच एज वो चाह रहा है उतना नहीं ऑफर करेंगे. इफ इज ओके विद दैट देन मे बी ही विल जस्ट स्टे. हो सकता है हिम एंड केपा विल जस्ट कीप फाइटिंग फॉर नंबर 1. I don't mind that, to be honest. लेकिन सच में ये है कि we will eventually go in the summer, I feel. और वो हो सकता है that it might be Pickford in the summer. अभी के लिए I don't think Everton are letting Pickford go anywhere because of being in a relegation dogfight. He is a senior player, just like Declan Rice West Ham में है. Vlahovic to Bayern is a Champions League winner. भाई क्या हो आया है क्या कुछ? Don't tell me. या are you proposing this? देखते हैं कुछ आया कि नहीं. भाई फेब्रिशियो बहुत शाने है, रीट्वीट करते जा रहे हैं. एंजो वाला मीटिंग ऑनगोइंग बिटवीन चेल्सी एंड बेंफिका फॉर एंजो फर्नांडिस. चलो कोई नहीं, इट इज. बट अजिंक्य डॉन कार्लो वहां से हिल नहीं रहे, टस से मस्त नहीं हो रहे यार. दैट्स द थिंग. एनीवे, ओके, नॉट श्योर इफ आई एम गेटिंग दैट. जीके भाई आपके कमेंट्स बहुत समझ में नहीं आते कुछ यार. मच लव टू यू. बट डेविड ऑस्टिन हैज पोस्टेड समथिंग और व्हाट? चलो देखते हैं क्या किया है डेविड ऑस्टिन. इफ ही हैज पोस्टेड समथिंग फ्रेश, भाई हर एक 5 मिनट में मैं आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट हैज हैपेंड. यस, ही हैज पोस्टेड टाइगर बीज. बिग अप टू यू भाई साहब. एवरीवन इन द हाउस, अगेन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. उससे ज्यादा लोग होंगे. और हाँ, मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी लाइक कर दीजिए एब्सोल्युटली, हो सके तो. This is not ending, bro. Are we going to stream the entire night? Chelsea have submitted offer worth 120 million for Enzo Fernandez. CFC insisting on getting deal done. No outcome, but 22-year-old Argentina international top midfield target. All window talks never stopped. Focus is now to avoid summer fight. Interesting. और Joao Cancelo has already landed in Munich to undergo the medical. वो तो हमें पता ही था. This is breaking news as well. Absolutely. Do you think Pioli is treated unfair by not giving him players after winning Scudetto after 8 years? भाई अनफेयर बोल सकते हैं, लेकिन व्हाट कैन अ माल्डीनी डू? पैसे नहीं है यार. डेरेन, रिमेंबर वहां भी स्टेडियम वर्क्स इन द वर्क्स, तो आप नहीं बोल सकते हो इट्स इजी यार. बहुत ही डिफिकल्ट है यार ये सिचुएशन. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ओनर्स. अब न्यू ओनर्स ऑलरेडी है इन प्लेस. इट्स जस्ट दैट इफ दे हैड अग्रीड टू गेट देम एंड नॉट रिलीज मनी, आप कुछ नहीं बोल सकते हो. हाँ, मे बी ये जरूर बोलूंगा, चार्ल्स डी केटलर हो गए, देयर आर सर्टेन प्लेयर्स, ब्राहिम डियाज हो गए, आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर, especially after the World Cup. They have not stood up. I think Giroud is a lone man standing, और Giroud कितना तो लीडरशिप ला सकता है यार. at the end of the day he's not that kind of a player either. तो कहीं ना कहीं I think they're missing. But more importantly, defense में Calabria coming back I thought will be a blessing in disguise, but it has become worse. Serginho Dest जैसा कर रहा है भाई Calabria, और यहाँ पर Tomori तो भाई he's not doing well. I don't know whatever reason. Kolo Muani is the person for Chelsea. नहीं यार, Zaha, Kolo Muani are good, but we don't need such kind of players, यार गौरव. अभी the fact is these are wideish forwards. Wideish forwards, we have invested in youth who are brilliant. Mudryk, we have already invested. Madueke, we have already invested. अब लाएंगे तो बैकअप लाएंगे ना. Madueke is not a starter आज के लिए में, लेकिन फ्यूचर स्टार्टर होंगे यार डेफिनेटली. He is having that ability if he stays fit, that is. तो फ्यूचर की बात है. अभी तो मिडफील्ड में यार गौरव.
अरे यार कीपर के लिए लेट्स गो फॉर मार्टिनेज, ही इज वन हु कमांड्स द बॉक्स एंड प्लेज ऑन द एज एंड इज नॉट अफ्रेड गेटिंग हट. हाँ, प्लेज ऑन द एज, दैट्स इंपॉर्टेंट. ऑल्सो अंशुल, जस्ट सेइंग, एंजो फर्नांडिस अगर हो जाता है, आई नो अभी फैक्ट इज अगर गैलेगर मना किए है देन एंजो फर्नांडिस वापस से थोड़ा मुश्किल लग रहा है इन माय ओपिनियन. इट इज इंटरलिंक्ड. तो अगर एंजो फर्नांडिस, लेकिन ऑन द गुड हैंड अगर हो जाता है अर्जेंटाइन कनेक्शन मे बी, लेकिन मार्टिनेज के साथ हम लिंक नहीं. अंशुल क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. समवन सेड समथिंग अबाउट डेविड राया. हाँ यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जा रही है, आई नो दैट डेथन, बट कोई नहीं, देखते हैं हु गोस फॉर हिम. हाउ चेल्सी विल इंक्रीज हिज गोल पर मैच रेशियो? वेल, गोल पर मैच रेशियो होगा बाय मोर क्रिएशन एंड मोर फिनिशिंग एबिलिटी. फिनिशिंग एबिलिटी ऑलरेडी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है विद जाओ फिलिक्स इन द अटैकिंग थर्ड. आपके क्रिएशन आप इंक्रीज करना चाह रहे हो विद एंजो फर्नांडिस कमिंग इन, जो मैं दिखा चुका होगा ऑलरेडी स्टैट्स. आई ऑलरेडी शोड यू ऑल, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ने देखा होगा. आप तो चेक ही कर सकते हो भाई, एंजो फर्नांडिस के स्टैट्स इज नेक्स्ट लेवल. नेम अ बेटर फुल बैक डुओ, अल्फोंसो डेविस एंड जाओ कैंसेलो. किमिक पूछ रहे भाई, जोशुआ किमिक आप खुद मेरे ख्याल से वर अ वेरी गुड फुल बैक इटसेल्फ, लेकिन कोई नहीं, मिडफील्डर तो और भी बेटर हो भाई. आई वुड लाइक टू से, आई नो अल्फोंसो डेविस इज नेक्स्ट लेवल, लेकिन डिफेंसिवली आई थिंक एज अ पेयर आई वुड स्टिल व्हेन फिट आई वुड प्रिफर, मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, थोड़ा सा बायस आप बोलोगे, जो भी आप बोल सकते हो, बट आई वुड प्रेफर अ बेन चिलवेल एंड रीस जेम्स, जो चैंपियंस लीग 2021 फाइनल में आपने देखा था. दे वर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन थे भाई. व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय बोथ ऑफ देम. दैट इज समथिंग ग्रेट, दैट इज आइडियल फुल बैक जो करना चाहिए इन माय ओपिनियन. बट अल्फोंसो डेविस डेफिनेटली देयर. जाओ कैंसेलो आई स्टिल से लाइक एन एस्पिलिक्वेटा, जो बैक इन 2015 ही वाज अ बेटर लेफ्ट बैक देन द राइट बैक. जाओ कैंसेलो इज इन दैट फेज अभी, तो दैट वो इंटरेस्टिंग रहेगा, बट वो खेलेंगे राइट बैक, वी ऑल नो दैट, वेर इज नॉट बैड इधर. अंकित भाई टू टॉड बोली जल्दी कर, पनवेल जाना है, कल शायद हो जाए एंजो डील. भाई लगता है आज मिडनाइट के बाद में कुछ ना कुछ होने वाला है. बिल्कुल यार, मैं कल रात को भी पूरा जगा हुआ था. पीपल नो भाई, बार बार स्टोरीज डाल रहा था, व्हाट नॉट, दैट इज हाउ इट गोज. कोलो इज अ सेंट्रल स्ट्राइकर, ही वाज वेरी गुड अगेंस्ट बायर्न, मेड उपमेकानो लुक टाइनी. हाँ, he can play central definitely, लेकिन प्रीमियर लीग लेवल के लिए जोशुआ किमिक, आई फील दैट राइट नाउ, बाय द वे वाइड आल्सो इज वेरी गुड. He can be a second striker slash wide, something like Nkunku. I think he can be that. हम anyway Nkunku के साथ जा रहे हैं समर में, right? Do you think Chelsea should have gone for 100 million for Frankie de Jong, at least tried? हाँ, लेकिन बारसा क्लियर कर दी थी ना आफ्टर लास्ट समर की यार, खुद फ्रेंकी बोल दिए थे. अब व्हेन द प्लेयर हिमसेल्फ सेज नो, देखो एंजो का डिफरेंस डेरेन ये है that Enzo has agreed to personal terms. He was okay to come on. ठीक है, Caicedo was open to come on to Arsenal, to Chelsea respectively यहाँ पर. लेकिन Frankie de Jong had never done that. Frankie de Jong verbally बोले थे, reports बोले थे at best, लेकिन he wanted to stay in Barca, and that's the difference. At the end of the day, it's a player which calls, right? Arey, Man City global citizens in the house. Is anyone here still backing or hoping or believing the City will catch Arsenal and win Premier League? Because I do. Maybe that's emotional side talking, but yes, we can, but it will be hella tough. By Manchester City global citizens, I also believe that यार. Although मैं बोला था Arsenal has the edge over City compared to the other way around, जो मैं पहले बोल रहा था before the Manchester United versus Arsenal वाला game, but right now I would say that क्योंकि अभी भी 2 games बाकी है City और Arsenal के बीच में in the Premier League, considering they've beaten them in the FA Cup, there is a high chance that Man City can still compete. लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो होना पड़ेगा मैन सिटी के लिए, वो डिफिकल्ट है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ हाई चांस अभी भी. मैं तो बोलता हूँ अगेन, आई वोंट माइंड ईदर वे, सच में बोलूँ तो. रीस जेम्स एग्जैक्टली, मैंने जैसे बोला, मैन सिटी अलाउड कैंसेलो टू लीव आफ्टर बिकमिंग डिसरप्टिव टू द स्क्वाड. यस, हमने वो भी शेयर कर लिया है. थैंक्स फॉर शेयरिंग भाई. भाई सारने क्या हाल है भाई, नाइस टू सी यू अगेन. जो भी लोग आ रहे हैं, हिट दैट लाइक बटन. आई विश वी कैन डबल दिस नंबर वॉचिंग. वो कैसे हो सकता है? आप लोग सब लोग लाइक सबसे पहले तो 200 से ऊपर कर लो, सब्सक्राइबर्स 7000 से ऊपर कर लो. कम ऑन, वी कैन गेट देयर. लेट्स हैव all the people watching subscribe to the channel. It doesn't take a buck, like मैं always बोलता हूँ. And Almighty Sports Plus पे भी, जहाँ पर हमने restart कर लिया है a lot of content, so hopefully people do that. People, we are just about 40 odd subscribers from 7000. Let's cross that tonight with all your help. If you can share that, brilliant. मैंने tweet किया है as well as community post में डाला है, hit that like button वहाँ भी. Is not Chelsea needing a proper CDM with Enzo? Better fullback, James, Chilly full fit. Yes, Sagnik, I have covered a lot of times already. We need a DM in the summer. In case we don't sign a Zakaria full time, in case Kante नहीं ठहरते हैं,
We need a proper destroyer who's a more of a defensive midfielder, which Kante is not really. सच में बोलो तो Quaresma, come on अजिंक्य, come on भाई सस्पेंडेड थे भाई, क्या बोल रहे हो? ऐसे भी चेल्सी नहीं खेल रही यार 8 दिनों से, तो क्या बोल रहे हो? बट कोई नहीं, मच लव टू यू ब्रो. Actually, सुबह ही सोया था. That's true actually, Darren. Even if Enzo comes right now, Gusto has left again on loan. Yes, after this much improvement in squad for the second half season, if Reece gets injured, then we are screwed again with respect to right back. हाँ, I see that. प्रभात, लेकिन एक इमरजेंसी में बोल सकता हूँ. If, say, example, Reece James is injured, I know Chalobah has played right back in a couple of games. इतना अच्छा नहीं किया है. Aspilicueta, he's lost his legs. We all know that. But Ruben Loftus-Cheek can play right wing back, so we might go 3 at the back in certain games, especially Champions League में खुदा ना खास्ता अगर Reece James बाहर होते, तो just saying that might be an option. Not an ideal option, but it is an option. I'm just saying. तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही options नहीं है, but I hear you. एक high class option नहीं है जो हमें चाहिए. मालो गुस्तो अगेन हम ट्राई किए थे यार, मालो गुस्तो अभी आ जाए. अभी आते भी तो मेरे ख्याल से वो इज नॉट अ स्टार्टर, अभी भी थोड़े से रॉ है. इज वेरी गुड इन सर्टेन थिंग्स, प्रॉब्ली बेटर एट थिंग्स देन मोस्ट ऑफ आवर फुल बैक्स जनरली. लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा दैट इट इज बेस्ट फॉर हिम टू बी देयर फॉर 5 months एंड कम ऑन व्हेन ही इज एब्सोल्युटली रेडी. अब वो मेंटली ही नोज दैट इज कमिंग टू चेल्सी, so he's playing for that. So I think it'll be even better now. I feel that. Anyway, these last के 4-5 महीने मुश्किल होंगे, वो मैं अग्री करता हूँ. बट 4-5 महीने में कम ऑन, इतना बैड लक भी खराब नहीं हो सकता कि रीस जेम्स उसमें से भी ये 2 महीने मिसिंग हो यार. कम ऑन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. If Man City wins the league, we'll win Champions League. Put in Porto. That's Chelsea saying. Huh? देखते. दक्ष, very nice comment यार. Very nice comment by दक्ष यहाँ पर. देखिए, and yes, Daksh, I hear you, because remember, हम इतना बात कर रहे हैं about Rico Lewis, about Nathan Ake being the full backs, but they have gone 3 at the back with playing an extra midfielder. Remember, Calvin Phillips वहां पर fit हो गए वापस से, और considering they might get one more midfielder, might be the thing. अभी के लिए तो नहीं, but they have gone 3 at the back in games इस बार ज्यादा compared to last season. So there is something there, but again, I would still stick to that. It's more about Cancelo not getting game time than anything else. Enough game time as a starter. और आज के दिन में Cancelo is a starter in Bayern Munich, if you ask me. We win this league this season. What are the odds? Come on, Darren. Come on. Chelsea, no way. Come on. Zakaria, नहीं यार. Don't do a Tuchel, Darren. Come on, Tuchel. I love him, bro. But ये वाला तो joke wasn't up to the mark, in my opinion. But कोई नहीं, भाई. Come on. Let's get the likes up, absolutely. And yes, भाई. Let's get to 250 likes, everyone. As Sagnik यहाँ पे बोल रहे हैं, certainly helps. Again, I've been discussing a lot of things in the last hour and 30 minutes. Hopefully और भी updates आते रहे as we go, and we might continue to stream up until close to 2 hours. जो another close to 20 minutes होंगे हम live. और मैं यहाँ पे वापस से रिफ्रेश कर रहा हूँ बटन. बाय द वे, मीनवाइल बाकी न्यूज देखते हैं कुछ आया है कि नहीं आया. जाओ कैंसेलो तो हमने कर लिया है. ब्रायन हिल हो गया है सेविया ऑलमोस्ट. दोनों लोन हैं बाय द वे, विद ऑप्शन टू बाय, आई बिलीव. जाओ कैंसेलो का बेसिकली बाय ऑप्शन क्लॉज है 70 million euros का, if people missed it. And yes, Wolves have signed Joao Gomez on a permanent deal from Flamengo. Brighton have got a young midfielder, 19-year-old ही है, coming from Sweden, but you never know, it might be one for the future. Gallagher के लिए ऑफर किया गया 40 million pound plus 5 million add-ons by Everton, and that might tempt Chelsea considering अगर होता है Enzo. But Gallagher, meanwhile, as per reports, is not wanting to go, which is not too bad in my opinion. Sean Dyche, Everton manager, meanwhile, was announced, and that was done, which you already know about. Enzo Fernandez wala abhi bhi baatein chal rahe hain. And Chelsea youngster Charlie Webster has extended his contract for 1 more year, and that has also happened while these deals are happening. That's very interesting. But Bayer Leverkusen are pushing for Felipe from Atletico Madrid. Wow. Now Atletico Madrid try कर रही है जो सयोंचू होने वाला था समर में, अभी आ जाए फ्रॉम लेस्टर सिटी. बहुत डोमिनो इफेक्ट हो रहा है. लेकिन केलोर नवास अभी तक इज स्टिल इन पीएसजी. देयर इज नो ग्रीन लाइट फ्रॉम पीएसजी. पता नहीं कितने गोलकीपर्स का खेलेंगे भाई पीएसजी. नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी तक हरा झंडी नहीं मिला है उनको. वेरी सरप्राइजिंग दैट टू मी. बट टॉक अबाउट चेल्सी क्विकली भाई. डज एनीवन रिमेंबर दिस लेजेंड?
Not a legend. Joke ही कर रहा हूँ भाई. Does anyone remember this guy? PSV Eindhoven are in advanced talks. He's a Dutch left back. We all know he has played for multiple clubs, including Chelsea, Crystal Palace. If I'm not wrong, भाई कहाँ Sunderland भी खेले थे. Patrick Van Aanholt. And he's now in Galatasaray. People know. भाई ये this might also happen. That's interesting. बहुत सारे stories हमने cover किए already, and we are going to discuss a few more. Kimmich became too slow for a right back over time. Now Bayern has 5 right backs: Cancelo, Mazraoui. देखो, Stanisic, Pavard, Sarr are there, but come on, they are not really starters anyway, right? So fair enough. कॉर्नर को लीव नहीं करना चाहिए सागनिक, इन माय ओपिनियन. समहाउ बात करिए यार, बातों से ना बहुत चीज होता है. उनको बात करना चाहिए. व्हाट दे यूज्ड टू डू इन द प्रीवियस टाइम्स, एंड बेसिकली नेगोशिएट करते थे. मरीना, दे यूज्ड टू नेगोशिएट. व्हाट शुड हैपन सागनिक? चेल्सी को जाना चाहिए एवर्टन बोर्ड के पास और एक कॉल करो, वीडियो कॉल करो, जो भी करो, आई डोंट केयर. बात करना चाहिए भाई. रूबन लॉफ्टस-चीक was basically what Conor Gallagher is. He might do what the job you're expecting from Conor Gallagher. Different players altogether. लेकिन अगर आपको चाहिए ओनाना का रिप्लेसमेंट इन द स्टार्टिंग 11 एज अ बैकअप, आई थिंक रूबन लॉफ्टस-चीक उसका बेटर है. ऐसा सेल करना चाहिए. I'm just saying to Everton, he's back from injury, he's an England international, go for Ruben Loftus-Cheek is what Chelsea should do in my opinion. Hopefully उतना पे नहीं करे, but ले is what I'm saying. As much as I like Ruben Loftus-Cheek, but come on, we all know the truth. I've joined now. Is Enzo to Chelsea happening? Gadget, bhai, nice to see you as always. Like button दबा देना. Hopefully हम 250 likes के आसपास आ गए हैं. नहीं, let's get there. लेकिन Enzo to Chelsea, the latest being जो फेब्रिशो ने रीट्वीट किया है बहुत ही नॉटीली वापस से, कि मेजर कुछ हुआ नहीं है, बट मीटिंग चल रही है. तो मीटिंग चल रही है, उसके बाद में पता लगेगा. तो क्या होता है ना, प्रैक्टिकली समझाता हूँ. जब मीटिंग होती है ना, उसके बाद में बेसिकली टिकट्स बुक होते हैं, बीट फॉर मेडिकल, बीट फॉर ये वो, एंड दोज बेसिकली फेब्रिशो की टीम हेल्प करती है. दे हैव लिंक्स देयर, एंड दैट इज वेयर ही गेट्स द न्यूज. मे बी इवन डेविड ऑनस्टीन, आई एम गेसिंग. तो वहां पर डेफिनेटली देयर इज अ कनेक्शन दैट ही गेट्स वाई अ लॉट ऑफ मैसेजिंग कम्युनिकेशन. वो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा. अभी के लिए दिस इज व्हाट इट इज. आई डोंट थिंक डिफरेंट प्रपोजल दिया है. आई डोंट नो क्यों बेनफिका चाहती नहीं है एक प्लेयर इन रिटर्न. आई थिंक दे कैन गेट रूबन लॉफ्टस-चीक और इवन हकीम जियेश इन रिटर्न, माय ओपिनियन. लेट मी नो हाउ इज दैट. लेकिन वो लोग मान नहीं रहे, लुक्स लाइक इट. लेकिन होपफुली जो लेटेस्ट है कि हम क्लोजर टू 100 मिलियन देने को तैयार है, देन दे हैव टू अग्री. लेट्स सी. हाँ भाई, मैंने बहुत कमेंट मिस कर दिया. आप हमेशा सुपर चैट कर सकते हो भाई. Kevalia, much love to you, bro. Much love to you, and much love to everyone watching, bro. Please tell me one channel which takes literally every comment possible with so much information giving on a daily basis. I would love to know that, yaar. I would love to know that. But much love to you, everyone. मैं try करता हूँ. I take as many comments as humanly possible for me while talking sense, while bringing news which I am able to bring to you, and discussing my view and taking your view. मैं हमेशा try करता हूँ. बट आप हमेशा सुपर चैट कर सकते हो. यू कैन बिकम अ मेंबर. आई डू प्रायोरिटाइज ऑन सुपर चैट्स एंड मेंबर्स बिकॉज इट डिजर्व इट एज मच एज यू गाइज आल्सो डिजर्व. लेट्स बी ऑनेस्ट. लेकिन वहां पर थोड़ा सा वी हैव टू गिव प्रेफरेंस, राइट. वो हो जाता है थोड़ा सा. और लेकिन कोई नहीं. इवन कमेंट्स आई टेक व्हिच आर रिलेटेड. People say Mount should be sold, which is absolutely wrong. Agreed with this, Prabhat. Same people are chanting Mount is greater than Foden when he was on form. 100%. He is just having a bad time, which everybody has. I believe he will be back. Wow. Interesting that. हाँ, आपकी स्टार्टिंग लाइनअप क्या हो जाएगी? चलो स्टार्टिंग लाइनअप थोड़ा सा ट्राई करते हैं. हमने शायद शेयर किया था मल्टीपल लाइनअप्स. हमने किया था. हाँ, ये दिखा देता भाई. ये नेक्स्ट सीजन के लिए, नॉट सुकेतु इस सीजन के लिए नहीं, नेक्स्ट सीजन के लिए है ये. इस सीजन में ऐसे भी कपल ऑफ पीपल जो आप देखोगे स्क्रीन में वो रेडी नहीं है अभी. ठीक है. तो ये हमने स्टार्टिंग लाइनअप किया था. अगेन आप देख सकते हो इसमें एंजो फर्नांडेज नहीं है, लेकिन इसमें एंकुंकू है नेक्स्ट समर में. तो आप बोल सकते हो मे बी नेक्स्ट समर में इफ वी आर एबल टू गेट से प्री कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और जनवरी में आ जाए एंजो फर्नांडेज. एंजो फर्नांडेज आई थिंक वॉक्स इन फॉर कोवाचिच. समर में एक और हम लाएंगे डीएम, तो दैट पर्सन कम्स इन फॉर कांटे. तो दैट विल बी अ स्टार्टिंग लाइनअप. हैवर्ट्स मे बी रिप्लेस्ड विद फिलिक्स अगर हम उसको साइन करते फुल टाइम में. वो नेक्स्ट समर का 11 है ये. मे बी रीस जेम्स better than Gusto, you can argue, when fit. Absolutely. तो ये आप बोल सकते हो. I think City should go and break the bank for Theo Hernandez. Wow. I hope not, यार.
By the way, Theo Hernandez is not a bad one. Cavalier, बहुत अच्छा comment है ये. For me, it's not a bad one at all. The reason being that yes, AC Milan would not like to lose Theo Hernandez, Rafael Leao. इतना dependent है अभी भी. Theo Hernandez, आप बोलते हो Cancelo is an inverted fullback. Theo Hernandez अपना आधे से ज्यादा समय midfield में बिताते हैं. And I'm saying central midfield area, not even wing. Theo Hernandez cuts in all the time. He is a Zinchenko of the next order. Next order, because Zinchenko and more है. It will be a great signing for City अगर कर सकते तो. लेकिन again, जो City के लिए सूट भी करेगा. Absolutely great comment. लेकिन I hope ये नहीं हो for AC Milan sake and for the Premier League sake. The chance of Chelsea winning Premier League equals Pedri's goal celebration. Oh, okay. हाँ, शॉन डाइश के लिए अच्छा है यार. शॉन डाइश needs fighters. Conor Gallagher 100% is a fighter. 100% is a fighter. No two ways about it. हाँ, quality में not as much. He's not ready to start games week in week out for a top club अभी. लेकिन he can be a great impact of the bench or impact player on the pitch. तो he is a great player. लेकिन वो खुद जाना नहीं चाहते. I hope that he sticks to that. I will not be okay, Gaurav, if we don't get basically say someone back from Everton in the category of an Onana, Amadou Onana or a Pickford. Different players, yes, but I would want that. On the other hand, मैं चाहूंगा कि यार better होगा even that if we sell Ruben Loftus-Cheek to Everton somehow. Yep, बिल्कुल. In fact, अभी Ian Maatsen यार, people are calling the next one Anholt. Hopefully he does better. Ian Maatsen is also Dutch left back. Remember, वो अभी है on loan. ना? Connor doesn't want to leave. Yes, I hope he sticks to that. Let's see. Things might change in the next 24 hours. What will your target dream signing in summer be if Enzo comes by tomorrow? Osimhen, Rice, Jude. हाँ, तो basically, I think we might considering David Atro Fofana भी आए है just और अभी शायद लोन पे जाए. I don't know. It depends. But I think David Atro Fofana might stick around क्योंकि Broja will not be a fit until the start of the season. लेकिन जैसे मैंने बोला, I want a Rice / Caicedo next to Enzo Fernandez. वो चाहिए मुझे समर में. Then we need two midfielders basically speaking, including Enzo. We probably, I think अभी के लिए we are good in other positions. खाली मैं बोलूँगा that striker अगर ब्रोया नहीं आते हैं say by the end of next year as well, then it's a problem. By the end of this year, sorry. That is next year beginning तक आएंगे तब maybe we might sign someone. Aubameyang might be sold in my opinion. Again, Osimhen etc. नहीं. The reason being क्योंकि मैंने दिखाया ना, I don't see Nkunku playing on the wing. I really don't. I see him playing as a striker or second striker. So I think it's fair enough. It is Sporting who's doing this thing. We already have stuck a deal for Porro, but they are basically playing with us, so that is not our fault. बिल्कुल यार. Swap, I think you're a Spurs fan. Again, remember, I am a Chelsea fan. Yes, it's a fan channel for all to see. I will always welcome you all. मैं हमेशा comment लेता हूँ. I will respect your opinion. But भाई थोड़ा banter तो बनता ही है. मौका बनता है यार. Come on, let's be honest about it. ये क्या हो गया यार? We are forgetting नहीं यार, Callum नहीं आने वाले वापस. He is doing really badly. Bayer Leverkusen, bro, he's not there. He's not there in the scheme of things, in my opinion. As much as I would love to see him back to his best, but नहीं लग रहा मुझे. देखते हैं. Okay. Chelsea have been doing some crazy transfers the past 3 to 4 years, from signing Kai, Silva, Timo, Ben, etc. Now this, you have to agree they are modern day king of transfers. Well, Vaishak, thanks यार. We are at least कोई लोग हमें credit दे रहे to call us king of transfers यार. Not just basically champions of the world, which people have forgotten so soon. But yes, we probably deserve not to be remembered that क्योंकि हम जो कर रहे Premier League में for the last few seasons. But in Europe, we have always been very good. Even last season, people forget the Real Madrid match. We played one of the best matches in recent history of Chelsea. Recent history of Chelsea में best matches started at the Santiago Bernabeu. अगर Alonso का नहीं होता, नहीं किया जाता disallow, तो who knows what the future would have been. But I hear you in terms of transfers. Madness तो कर रहे हैं. Whether they have worked or not, question mark है. Well, Gaurav, next season है. Next season के बाद में देखेंगे. अभी के लिए ला दो यार, because we cannot attract players in the summer as much as अभी. Reece James market value क्या है? कुछ levers. Reece James is not for sale. Reece James is पक्का blue. अभी के लिए. Period. Doesn't matter. But much love to you, Rudra, for coming on. Kepa, Reece, Fofana, Badiashile, Chile, Kovacic, Enzo, Mudrik, Felix,
एनकुंकू, हैवर्ट्स. चलो आप देखते हो हैवर्ट्स और फिलिक्स सेम टीम में, दैट्स इंटरेस्टिंग. हाँ बिल्कुल यार, let's surprise us with more likes and subscriptions. Absolutely. Again I repeat, we are I think about 40 away from 7,000 subscribers. Come on भाई, हो जाए भाई. Everyone who's not subscribed to the channel, is just the press of a button. All you need to do is just subscribe absolutely for free. Yes, there are membership perks, do check them out absolutely. भाई lot of emojis, पता नहीं आप लोगों ने चेक किया है कि नहीं. यहाँ पर मैं सब डाल रहा हूँ for the timing, but I know World Cup डाला वाला भी डालना था, but this is what you can get. Plus there is a prediction league contest going on. Yes, there's a members group chat as well. हम members stream भी करते हैं, और I give preference to members and mods. You all know that very well. Anyway, Bayern defense was a PSG Davis. Okay. That's an interesting one यार. बहुत इंटरेस्टिंग डिफेंस है. क्यों मैं इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ? बिकॉज आपके पास पेस बहुत है. ओनली चीज मुझे दिख रहा है, that will De Ligt be singled out defensively in that formation. Let's see. But again, great on paper. नहीं अजिंक्य, तो ऑन पेपर आप देख रहे हो सिंगल स्ट्राइकर. अगेन मैं वापस से दिखा सकता हूँ जो मैंने दिखाया था. एक सेकंड दीजिए मुझे. अगेन लाइक बटन दबा देना यार सब लोग, सब्सक्राइब भी कर दीजिए. हैवर्ट्स को इसलिए रखा हूं ना अजिंक्य, तो हैवर्ट्स और एनकुंकू विल काइंड ऑफ इंटरचेंज पोजीशंस. आई नो बोथ आर नीदर अ प्रॉपर स्ट्राइकर, बट दैट्स समथिंग दैट मुझे देखता है. नहीं तो एनकुंकू माइट प्ले वाइड अगर वी आर ओके टू कीप ऑबामियांग, व्हिच एट दिस पॉइंट टाइम लगता नहीं है. ओके, सिटी के लिए कंसर्न मत करो यार. सिटी विल बी गुड यार. पेप knows how to bring out things anyway. I know Cancelo will be a big loss, but wow. Leeds and Leicester have done some business यार last 48 hours में. I am telling you, Leeds Leicester will be safe. Mark my words. Darren, thanks for sharing that. वाओ. भाई लेकिन कितना है आपको क्या लगता है कितना वैल्यू होना चाहिए कैंसेलो के लिए? व्हाट शुड बी कैंसेलो's मार्केट वैल्यू? 70 मिलियन बाय ऑप्शन है. इज इट टू मच फॉर अ 28 year old? डू लेट मी नो इन द चैट. विचा कोरट्स के लिए भाई अभी के लिए नापोली आर डूइंग मैडनेस. ही माइट स्टे देयर एटलीस्ट अंटिल द एंड ऑफ द सीजन फॉर श्योर, इफ नॉट मोर. पेप द रियल, या इयन मैटसन इज गुड, बट अगेन फिजिकली आई थिंक ही नीड्स टू बिल्ड सागनिक थोड़ा सा. We are one injury away to sign Mbappe. Oh, we are one Sane injury away. Okay, got it. Saeed, much love to you, bro. But अगर आप बोल रहे हो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड जो बेसिकली खाली 6 लीग्स जीते हैं इन द प्रीमियर लीग, and basically some of the best players and the best managers of the world have been here for the last 25 years, फिर भी बोलते we don't have some history. हमने जीता था 97 में, हमने जीता था एक ट्रॉफी 98 में, हमने जीता था एक ट्रॉफी 99 में, हमने जीता था एक ट्रॉफी 2000 में, फिर 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब? पागल हो गया अंकित. अगेन साइड मच लव टू एवरीवन. अगेन मैं बोल रहा हूँ जो पुल और जो हिस्ट्री रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिक और मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी है, वी विल नॉट क्लेम टू हैव इट. बट चेल्सी इन माय ओपिनियन इन द लास्ट 25 years along with AC Milan जो है one of my clubs as well, are among the top 7-8 clubs in the world. We cannot deny that. 7-8 clubs in the world, come on, pretty sure we agree. वहां पर कोई डिनाई नहीं कर सकता. डेफिनेटली टॉप 8 क्लब्स इन द वर्ल्ड 100% आती है. 2 बार चैंपियंस लीग भी जीता है यार, अब तो वो भी नहीं बोल सकते. तो आई डोंट थिंक वी कैन से दैट, बट आई हियर यू, आई रिस्पेक्ट यू, डोंट वरी. Enzo and some Benfica board members, और इतने सारे सालों का नाम लिया ना मैं, those are all the years where Chelsea have won trophies. Meanwhile, again, I know Arsenal fans are there in the chat. I know Spurs subscribers are there मेरे चैनल में. Hopefully वो लोग देखे भी, but it's a fact. It's a fact. कितने ट्रॉफीज जीते हैं भाई? आई नो लास्ट 25 years doesn't make an entire history of the club, लेकिन जब आप प्लेयर्स को साइन कर रहे हो who are themselves not even 25 years of age, वो लोग तो लास्ट 25 years मैटर करेगा ना उनको. देखिए, anyway, I'm just saying. Enzo and some Benfica board members are applying pressure to Rui Costa. Okay, I hope that's true यार. Ben Jacobs इतना जरूर बोलूंगा, आजकल थोड़ा सा मसाला ऐड हो रहा है. Ben Jacobs, बिग अप टू हिम एब्सोल्युटली. थोड़ा सा मसाला ऐड हो रहा है. तो मैं आई विल टेक दैट विद पिंच ऑफ सॉल्ट गौरव, सच में बोलूं तो. बट दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग स्टफ. यहाँ पर देखते हैं. अगेन you all know that this is basically Gerard Romero. Again, take it with a pinch of salt, but you cannot ignore it absolutely.
Nishchit, thanks for saying that. We have made huge progress, लेकिन progress is not the end story. क्या बोला था जॉ फ्लिक्स ने क्या बोला? It is what ends matters, right? That is what matters at the end of the day. Meeting ongoing in the club offices right now involving Laporta. मैंने ले लिया था comment already. Pavard's management has already started working on a move to Barcelona in the summer. Zahavi is working the operation as intermediary. Pavard wants to sign for Barca. People, bhai, Barca fans, boliye. What do you think about that deal now? Definitely an upgrade on Bellerin. No two ways about it. Lekin, is it a big deal? Nahin. I don't think so. I know पैसे नहीं है, but कहीं ना कहीं it's a it's a given. वो होने वाला है. भाई, Arsenal fans, क्या हाल है भाई? बिप्रा, much love to you, bro. Again, banter चल रहा है भाई बहुत इस स्ट्रीम में, लेकिन साथ साथ में बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी चल रहा है. But भाई बिप्रा, let me know. What do you think about Caicedo का 70 मिलियन के ऑफर के ऊपर करना चाहिए कि नहीं आर्सेनल को? डू लेट मी नो अबाउट दैट. रीस जेम्स चाहिए क्या? Do you see Reece James getting a bid from City for Cancelo replacement, a bid for 100 million? No, I don't see it. Therein. Come on, we are already short of right backs, bro. No way. गुस्तो आ रहे समर में यार. Again, guarantee नहीं है कि he'll take like fish to water. तो Reece James will be there for at least the next couple of years. I can put it on a stamp paper and sign it right now. Take from me. What about Lukaku? Lukaku, as per the news, there might be a possibility lazy journalism हो सकती है कि Conte, being a Lukaku fan, might go for him in the summer. But it also depends on Richarlison if it really turns out to be a big flop, जो अभी तक लग रहे हैं Spurs में. Second, Newcastle might be interested as a plan B क्योंकि वहां पर they have lost Wood as a tall striker. So that might be a plan B, not a plan B. लेकिन again, मुझे लगता नहीं either will go, if I'm being really honest. Inter Milan, yes, अभी के लिए मना कर रहे हैं. They don't have the cash, etc. But I still feel we'll take a L, we'll take a loss, and we'll basically, get rid of Lukaku to Inter Milan क्योंकि he loves Inter Milan. Inter Milan, he might be okay as a substitute, and they might invest on someone else. हो सकता है. डरना क्या यार? Chelsea is a top 7-8 clubs in the world. Why not, it's okay. This is hilarious. Joao Man City exit comes following a training ground bust up with Pep. He reacted angrily after he learned that he would not be in the 11 against Arsenal and threatened to leave. Okay. पता नहीं यार, थोड़ा मसाला एडिंग भी हो सकता है उसमें, but anyway, कुछ तो सच्चाई है. Some seasoned striker will come in summer who has Premier League goals under his belt. What name comes to your mind, Salah? नहीं, मुझे आ रहा है टोनी. Tony actually might be one of the options क्योंकि तब तक जो allegations on Tony which might have cooled down a little bit, तो Tony मुझे आ रहा है मन में. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक ऑफ से प्राइम स्ट्राइकर्स भी बोलूंगा मैं. आई नो इट्स नॉट आइडियल, इंजरी प्रोन रहे रिसेंट सीजन्स में. सब लोग को याद है, हम लोग के पास जब टैमी एब्राहम थे, we used to tell, at least I used to discuss with a lot of panel members and subscribers, that a Dominic Calvert-Lewin at that point was better than Tammy Abraham. I will not be surprised, and listen, mark my words. Summer में Dominic Calvert-Lewin, if he does enough towards the end of the window, अभी to the end of the season, maybe he becomes available. I'm not saying वो ideal striker है, लेकिन Premier League proven बोल रहे हैं ना टाइगर बीस्ट, तो मैं सोच रहा हूँ Premier League proven who might be available. Harry Kane तो नहीं आने वाले, let's be real, ठीक है. Harry Kane probably will stick around there or go to Manchester United, Bayern Munich or something like that, I feel. If not Spurs, जो लग रहा है for whatever reason he might stay. So that might be the thing. लेकिन और कौन है? Premiership strikers शायद कम ही यार, और बाहर से we are hesitant because of recent history. End of this season, again मैं बोल रहा हूँ top 8 club in the world in the last 25 years, top 8 in the Premiership. इतना जरूर बोलूंगा प्रभात, लेकिन मेरा prediction अभी भी है top 6th में रहेगा Chelsea. Let's see, hopefully we do that. Okay, ये तो ले लिया था मैंने. डेविड ऑस्टिन बोला 120 मिलियन कर दिया है ऑफर. रूई कोस्टा अगेन येट टू अग्री दिस रूई कोस्टा ईयर. लेकिन डेविड ऑस्टिन ने बोला है, लेकिन इज इट 120 फ्लैट? दैट इज द बिग क्वेश्चन. That is the biggest question, right? Is it 120 flat? I think it was either 80 plus 20 plus 20, or it was basically player plus cash, or it was a different deal, but not 120 flat. Worth 120 million. There's a difference, Putin, but koi nahi. The only last big signing remaining for Chelsea is Messi. 50 million, 70 million is decent. Okay, value depreciates. I mean, so 70 is too much. Conor Gallagher is not interested in move to Everton. That's good to hear. Chelsea signing players after players and Man United. That
actually has a chance in FA Cup and Carabao Cup isn't getting signings. Shahrukh, why? That is the point. Manchester United are doing well in the competition because they already have a first 11. उनको फर्स्ट 11 चेंज करने की जरूरत नहीं है. मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए स्क्वाड प्लेयर्स, और इट्स नॉट इजी टू गेट स्क्वाड प्लेयर्स इन जनवरी, क्योंकि जनवरी में लोग क्यों मूव होते हैं? लोग मूव होते हैं जनरली इफ दे नॉट गेटिंग इनफ प्लेइंग टाइम इन द करंट क्लब. दैट इज व्हाट हैपेंस, एंड दैट इज व्हाई थोड़ा सा हेजिटेंसी है with certain players like an Onana coming to Chelsea, for example, also. You know, more hesitation was there because he didn't think that he would have started Chelsea as much as he would have started Everton. Considering जैसे एवर्टन खेलती है और चेल्सी खेलती है, as much as it is, you know, a good player we are talking about. Same चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है, but they cannot get players who would elevate. भाई आज के दिन में एरिक्सन, कैसेमिरो is working beautifully. ब्रूनो फर्नांडेज लुकिंग इज एब्सोल्यूट बेस्ट, मैं तो बोलता हूँ. एंटनी as much as आप क्रिटिसाइज करो, I think he is doing a certain job in some games. उनके पास बैकअप, they are not selling him. That's Elanga. Why? Because he is the backup for you. Then you have Sancho who's yet to come back. He'll be like a new signing. You already have Anthony Martial. आपने लिया है Wout Weghorst को. So I think there is not a single position. Yeah, defenders, you want to get rid of Maguire, लेकिन आपको अच्छे बिड नहीं आएंगे Maguire के लिए भी. That's a fact. That's the reason आप नहीं जा सकते हो न्यू प्लेयर्स के लिए. You have a big squad to manage as well, ना एरिक टेन हाग. But कोई नहीं, thanks for coming along always. मैं तो बोलता हूँ 100 मिलियन का कैंसेलो चिपका दो, बायर्न को साले पॉकेट से पैसा ही नहीं निकालते हैं. निश्चित, आई एग्री. भाई बायर्न फैंस, आप लोग हमेशा सस्ते में निपट जाते हो. बायर्न म्यूनिक मैन, आई नो कमिंग फ्रॉम बार्सा फैन, एक्सपेक्टेड था निश्चित, लेकिन बायर्न म्यूनिक 70 मिलियन यूरोस ब्रो, इस बार तो जरूर देंगे. लुक्स लाइक Newcastle are cooking something. They can get some big signings summer. They have the money and they will go all out. Again, like a Manchester United, I don't think they need much. Anthony Gordon has come. Isaac is a fairly new signing. Wood का replacement चाहिए as a backup. दे समर और इसमें ऑलरेडी कर लिया यार उन्होंने. मे बी एक और मिडफील्डर लाए, क्योंकि ब्रूनो को मार्च में बहुत डिपेंडेंसी. आई अग्री देयर. वहां पर जोलिंटन, he is a different, he is like Ida Gudjonson जो था ना चेल्सी में. he changes position altogether और अच्छा खेल रहे वो, you know, almost मैं उनसे कंपेयर कर सकता हूँ. डिफेंस तो पूछो ही मत यार, टाइगर ब्रिज बहुत अच्छी डिफेंस है, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन टू डू दैट. हाँ, लेकिन चैंपियंस लीग में अगर चल जाते देन आई कैन सी दैट एब्सोल्युटली. हिस्ट्री कांट बी चेंज बट विनिंग नाउ विल बी हिस्ट्री इन फ्यूचर. Interesting. Bribe Rui Costa and let Enzo leave. Oh man, interesting भाई. Love you too bro. No problem. Oh, interested, लेकिन नहीं जाने वाले यार. Come on, नहीं जाने वाले. Come on. City will not disintegrate. Come on. Pep Guardiola is still there. I would have still seen अगर Pep Guardiola छोड़ते, City are still there. हम भूल जाते. ट्रांसफर विंडो के मोह माया में ना हम सब भूल जाते. बट अगेन भाई, हम लोग 2 घंटे से बोल रहे हैं. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमने शेयर किया है. होपफुली 250 लाइक्स कर दीजिए आप लोग, सब लोग. कम ऑन, 250 बहुत कम मांग रहा हूँ. और एवरीवन वाचिंग हियर, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू आर नॉट बाय चांस सब्सक्राइब टू द चैनल. ज्यादा लाइक्स होंगे, इट विल रीच मोर पीपल. एंड यस, इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. यस, इट्स अ चेल्सी फैन टॉकिंग, मिलान फैन टॉकिंग, बट from a point of view of other clubs as well. I try and cover all the clubs possible. तो भाई सब लोग कर दीजिए. We are just 35 subscribers away from 7,000 subscribers as well. Just so you know, right? When will the FA Cup next round draw? Want to see Man United next opponent? Okay, I'll start and keep Abhinav. I don't think I followed that news. I might have missed it, but I'll come back to it definitely. Pavard backup for Kunde बोल रहे. Kunde लेकिन खुश होंगे long term right back होने में as a starter. Let me know on that, क्योंकि इंटरेस्टिंग है. आई ऑलवेज थॉट इट्स गोइंग टू बी कुंडे, क्रिस्टियनसन और अराहो, तीनों रोटेट करेंगे. एरिक गार्सिया विल प्रॉब्ली मूव ऑन. ये मेरा ओपिनियन था. आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई फेल्ट दैट कुंडे एज अ सेंटर बैक, यू नो, इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. फुल बैक बहुत अच्छे है, लेकिन आई थिंक इज बेटर सेंटर बैक. बारसा जैसे खेलती है, यस ही प्लेज वेल विद द बॉल, मे बी इट हेल्प्स बीइंग अ राइट बैक, बट इन द बिग गेम्स आई वुड लाइक टू सी अगेन, इफ आई एम अ बारसा फैन, maybe a better right back जो डिफेंसिवली बेटर हो. अराहो राइट बैक भी खेल सकता है, आप बोल सकते हो. देन आई हियर यू, लेकिन सर्जी रोबर्टो एज अ बैकअप राइट बैक, आई डोंट थिंक सो. दे नीड अ न्यू राइट बैक अपार्ट फ्रॉम पवार्ड एज वेल, मेरे ख्याल से. बट एनीवे, आई माइट बी रॉन्ग. Look at Cancelo for Portugal, has the technical tools but not the mental, and when going gets tough, you naturally return to more fundamental ways, just like City has this season with Aki. Yeah, अबे मैंने शेयर किया था about Portugal. There was a reason why Fernando Santos did not play him, not just Diogo Dalot's form. You can hear that.
लिवरपूल बट इज वेरी गुड यार, स्टिल ये भी बोलूंगा बहुत अच्छा प्लेयर है, कम ऑन। लिवरपूल इज रियली वॉकिंग अलोन दिस सीजन। ओह मैन, प्रॉपर दे रहे हो भाई, बारसा फैन गिविंग टू लिवरपूल एंड बाय ना, निश्चित। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, लिवरपूल पीपल, लिवरपूल फैंस हैप्पी, हैप्पी दैट आप साइनिंग नहीं कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि नहीं इट्स एनीवे वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे चेल्सी है, एनीवे दिस सीजन इज अ राइट ऑफ, आप क्या ही तो कर सकते हो, ट्राई एंड गेट टू यूरोप एंड देन बिल्ड ऑन दैट, ट्राई एंड गेट confidence back, try and get the injuries back. But I'm very surprised that Liverpool are not breaking the bank. I know enough नहीं है बैंक में पैसे, लेकिन दे आर नॉट ट्राइंग द लेवल बेस्ट एक और मिडफील्डर लाने के लिए। इट्स अ क्लियर थिंग कि फेबिनो कल भी सेंड ऑफ होना चाहिए था। यहाँ पर हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, लेकिन वी ऑल नो फेबिनो शुड हैव सेंट ऑफ यस्टरडे, अगेन ही वुड हैव मिस्ड गेम्स। लिवरपूल को मिडफील्डर चाहिए यार, आई थिंक दे मिस्ड अ ट्रिक कहीं ना कहीं। आई डोंट माइंड एज एन ऑपोजिशन फैन। हाँ, नहीं जाएगा वो। गौरव एट अ 3 द बैक सिस्टम आई कैन सी दिस हैपनिंग, लेकिन आई स्टिल प्रेफर 4 द बैक, क्योंकि उसमें यू कैन गेट मोर आउट ऑफ द विंगर्स लाइक अ जियेश अगर वो ठहरते, लाइक अ मुड्रिक फॉर श्योर। Okay, so in some FA Cup match maybe. Does the City implosion mean that Arsenal definitely win the league? आदित्य, कोई implosion नहीं हो रही यार, कोई implosion नहीं हो रही। I know एक दो जन लड़ाई झगड़ा किए हैं as per the reports, but again reports ही है, we go by the reports, I know that. लेकिन Pep has rebuilt the team. Pep, that's why he's in the elite category. Pep has rebuilt the team. For me, Rico Lewis is very young. Nathan Ake has been injury prone in the past, but for next 4.5 months, they can do the job, in my opinion. Stones arguably has been the best defender in the entire league when fit. हाँ, इंजरीज है वॉकर को, बट इवन ही इज कमिंग बैक, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इम्प्लोजन नहीं है। हम ये भी बोल रहे हैं मिडफील्ड में दे गेटिंग कैल्विन फिलिप्स बैक इन द स्क्वाड फिट। एंड यस, सब लोग लाइक कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मोर इंपॉर्टेंटली, लुकाकू इज प्रीमियर लीग प्रूवन। भाई सालों पहले था यार, अभी तो रिसेंटली नहीं है यार, कम ऑन। I just want to ask, why does every player want to play for either Real Madrid or Barca? Why again? One, because they have a higher chance of winning trophies. La Liga में firstly, as much as Bayern में भी उतना ही चांस है, इनफैक्ट ज्यादा है Bayern में तो। Bayern, Real Madrid, Barcelona, for some years it was Juventus. A lot of players were attracted because one, trophies. Second, I cannot deny, Real Madrid and Barca, especially for South American players, is like basically आपका मक्का है यार, आप मक्का जा रहे हो, you know what I mean? So it's like basically आपका basically तीर्थ स्थान है, simply put. So you are like going there. It's a dream club. आप as a childhood, football fan, you want to even go to the stadium and watch a match, leave apart playing, and that is the culture. ठीक है, एक स्पेनिश पोर्चुगीज कल्चर है वहां पर मैड्रिड और बारसा में, that helps. जो previously इंटर मिलान में था, remember Inter Milan when they had the money, they used to have that as well, even AC Milan generally, right? So that is there. Plus, remember the salaries are pretty high, if not the transfer fees in recent times. Salaries are pretty high in Barca and Madrid. फिर obviously when you are playing for the biggest clubs in the world, आपके national team में it's easier to be picked. A lot of reasons यार, there are a lot of reasons up there, but the reality is आप simply put ऐसे ही बोलोगे ना, they are Madrid, Barca, Juventus, maybe AC Milan, Inter Milan, Bayern Munich for sure, Manchester United for sure. These are some clubs that आप देखते हो, in the history of football being there. I would also like to add Liverpool and Chelsea to that. ठीक है, तो ये 7-8 clubs, sorry if I missed out on clubs, but basically 7-8 clubs, you want them, and among them the elite is what you're talking over, say the last 50-60 years की history बोल रहा हूँ मैं. But Bayern defense is best defense. Well, Bayern defense is the best defense attackingly, if you know, I hope you understand, right? So attacking wise, they are the best defense, and they have the best attacking fullbacks in the world. Okay, but to say that Bayern defense is the best defense, I don't agree. Okay, first of all, they have a couple of injury-prone players in recent times, and Alphonso Davies or आपके Hernandez. To some extent, they have got injured, so they have to prove themselves again for a consistent set of time. If fit, definitely, I agree. But that is there. थोड़ा सा caveat है. Cancelo, as much as he's a great defender, he's a better person going forward. Inverted fullback वाला role better करता है, even as a left back more than right back मैं तो बोलता हूँ. तो I would not say it's ideal, लेकिन it's definitely a much bigger upgrade than what they already had in Mazraoui, who is also very good. So overall is a squad of defense
I think they have a brilliant defensive squad. But in terms of back four, if you ask me really, uh, best defense in the league जो मुझे लगा है in all leagues put together, मतलब you will be surprised, लेकिन actually सबसे sound जो लगी है ना, मुझे लगी है न्यूकासल की डिफेंस एकदम सॉलिड यार. सॉलिड डिफेंस जो चेल्सी ने किया था 2004-5 में ना, ऑलमोस्ट इतना अच्छा लगा मुझे न्यूकासल का डिफेंस. दे आर रियली डूइंग वेरी वेल. तो यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट वेयर इज ड्यू. आई नो न्यूकासल, आई एम सेइंग ओवर ऑल दिस क्लब जो मैंने बोला, but you have to count the the form somewhere. Badichile or Kolibali any day right now. Yeah, 100% agreed this. Rank this teams ये बहुत बार किया है मैंने रुद्र. Achievements अगेन थोड़ा बायस भी रखूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा रिसेंसी बायस हो सकता है, थोड़ा सा पर्सनल बायस हो सकता है. बट इफ आई एम रियली पुटिंग ऑनेस्ट न्यूट्रल हैट, in terms of achievements, I would definitely like to say, like, overall, again, मैं आपको historian नहीं हूँ, तो people quoting me, correct me if I'm wrong, perfectly fine, but it's just my feel. एक होता है the way they play, the way they run the club, एक होता है how the pull has been, how their performances has been, everything put together, और एक personal touch भी दे रहा हूँ थोड़ा सा, which I always prefer doing in my channel. So I feel जो order आपने डाला है ना, I will not disagree with that order actually. Yes, I will not disagree with that order itself. Honestly speaking, yeah. Maybe मैं डालूं बायर्न को just ahead of बार्सिलोना, maybe बायर्न को डालूं just ahead of बार्सिलोना. एसी मिलान यूनाइटेड रहती आगे, लेकिन maybe because recent 15 सालों में इतना नहीं किया है, recent 10 सालों में especially एसी मिलान यूनाइटेड, maybe that is why. नहीं तो मैड्रिड, बायर्न, बार्सा definitely right up there. The offer has one large sum and 5 smaller payments. Chelsea are desperate to get it done. ये तब से आ रहा है यार. बिल्कुल बिल्कुल. Hopefully नहीं यार, come on. नहीं मेसी तो नहीं आने वाला. But anyway, Enzo comes to Chelsea, they will and should end in top 4. Really, Sandeep? भाई 11 points away है top 4 से Sandeep. I don't think it's really on. I don't know. I might be wrong. But anyway, भाई again मैं 2.25 घंटे से I am live from 2 hours 15 minutes, I believe so, right? By everyone, I hope you have subscribed to the channel. Everyone watching, it'll really mean a lot. We cover a lot of content across clubs. Yes, I'm a Chelsea fan in AC Milan, but having watched football for over 20 years, hopefully aap log, and I mean week in week out wala football proper. I hope you guys back me, and a lot of content you can find even on other channel, that is Almighty Sports Plus. But I'm just refreshing. वापस से कुछ आया है क्या update? I don't see any major updates yet, unless मैं कुछ miss कर रहा हूँ. Let me just quickly scroll. मैं quick scroll करने वाला हूँ. Meanwhile, सब लोग like button दबा दीजिए. I'm taking coming to comments as well. Let's see. दक्ष आपका फोटो देख रहा हूँ भाई. Nice one. Anyway. भाई कोई ट्विटर इज गोइंग मैड ब्रो. हाँ चलो, अभी तक कुछ आया नहीं अपडेट. आई एम जस्ट सीइंग इफ एनी फर्दर अपडेट्स हैव कम. बट हाँ, कॉनर गैलेगर का एज पर द रिपोर्ट ही इज नॉट वेरी कीन ऑन गोइंग. अब देखते हैं. आई थिंक चेल्सी शायद 10th हो जाएगी अगर वी गेट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम रूई कोस्टा. आई फील दैट चेल्सी माइट टॉक टू कॉनर गैलेगर और वी माइट ऑफर समवन एल्स टू एवर्टन. वो हो रहा है मुझे लग रहा है. Okay, bhai sahab. Okay, so this is breaking news, people. I have some breaking news by sab log. This is breaking news, and I believe on this account absolutely. By Enzo Fernandez did not train with Benfica today in order to pressure the Portuguese club into accepting Chelsea's 120 million offer. Duncan Castles. I actually trust Duncan Castles and absolute Chelsea. I hope कि Enzo actually talks to them. It will certainly help. मैं बोलता हूँ certainly help करेगा. लेकिन बेनफिका की स्क्वाड क्या meanwhile यार, देखते हैं बेनफिका की स्क्वाड क्या है. I don't remember. काफी दिन हो गए. चैंपियंस लीग हम आने वाले next week anyway for coverage, which we always cover by the way, as well as Europa League. check कर सकते हो for people who are new to the channel. But बेनफिका की स्क्वाड check कर लेते हैं यार quickly. भाई anyone who's watching the Portuguese league week in week out can help out certainly in the comment section. लेकिन मैं यहाँ पर बेनफिका के स्क्वाड दिखाऊंगा. आप लोग बोलिएगा भाई, कैन बेनफिका अफोर्ड टू सेल बेंजो इन अ सीजन जहां पर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इन द लीग एज वेल एज द चैंपियंस लीग. हु आर देयर ऑप्शंस? डू लेट मी नो ऑन दैट. ऑब्वियसली द फैक्ट इज Guedes has gone back. I know that. You can say that he has gone back, so that certainly helps. But
different players altogether. Many बोल रहा हूँ same है. Joao Mario है, but again he plays little bit ahead. I don't think he's a DM. Again, वो लोग खेलते हैं in a double pivot at times in a middle three. That is what they do. But for me, are there enough midfielders there? Again, for people who know David Neres, he was basically linked to a couple of clubs. मेरे ख्याल से Arsenal से link हुए थे. Before Marquinhos was brought by Arsenal. By the way, Marquinhos might head out on loan. I think if I'm not wrong, Norwich City from Arsenal. I don't know what Arsenal fans feel about that. लेकिन David Neres is winger है. So again, do let me know if people who remember, और मैं भी वापस से और R&D करेंगे इसमें साथ साथ में. लेकिन do let me know भाई, what are the chances? रूब इंडियाज कितना अच्छा था, क्या हुआ उसको? यार थोड़े इंजरीज हुए साजन बीच में, और कुछ नहीं होता है. नहीं यार सजन, कम ऑन, नहीं. मैन सिटी फैंस ऑन सोशल वर पुटिंग लिंक टू बैन चेल्सी फॉर साइनिंग एंजो बिकॉज एक सेकंड भाई. मैन सिटी फैंस, मच लव टू यू ब्रो, बट कम ऑन, हम लोग बैन हुए थे, यू गाइज अवॉइडेड योर बैन, रिमेंबर. तो मैन सिटी फैंस भाई, मेरा तो आफ्टर, इफ दिस इज ट्रू गौरव, बाय द वे, बिग अप टू मैन सिटी फैंस, बट माय रिएक्शन रियली मैन, ओ भाई वो रिएक्शन था डेफिनेटली. मैं जब मैं देखा पेड्रो पोरो भाई, मैं जब भी बैंटर करता हूँ ना, आई डोंट नो व्हाई यार, एज फुटबॉल फैंस ना, वी शुड बी मैच्योर इनफ टू टेक बैंटर एंड गिव बैंटर. देयर इज अ थिन लाइन. मैं गाली गलौज कुछ नहीं कर रहा, मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ फॉर पीपल हु वॉच मी. तो जो लोग भी ड्रॉप करते हैं ना, सुना थोड़ा बैंटर होता है, थोड़ा सा सीख जाओ यार. फुटबॉल में बैंटर इज पार्ट ऑफ फुटबॉल. आई नो आपको देखना नहीं है, वो अलग चीज है, यू मे नॉट सपोर्ट इट, यू डेफिनेटली जवाब दीजिए यार उसका विदाउट क्रॉसिंग द लाइन. No problem in that. Anyway, much love to everyone watching. Liverpool owners are probably thinking of selling the club next summer. They are probably not interested anymore in spending. Dipanjan, लेकिन वही ना, आप careful spending कर सकते हैं. Definitely, you don't want to go any, आप कहीं भी काम करते हो, कोई भी चीज ओन करते हो, even in any kind of personal things that you are in, you don't want to end things on a bad note. You don't want to do that, especially जो आई थिंक क्लॉप ने बिल्ड किया यार, एक प्रॉपर बिल्ड किया लास्ट 6 years. We don't want to end that in a bad note. So I think that they could have done proper scouting and gone for some players, सस्ते players जाओ यार. I know they may not have upgraded your current 11, but you never know, you might just get, जैसे चेल्सी ने किया, in a few youngsters, you could have also gone for a few youngsters. एक निकल आता, I'm just saying, why not? भाई ये तो बता रही यार क्या हो रहा है यार. नो प्रॉब्लम, लेट्स सी देन व्हाट हैपेंस. लेट्स सी, अभी भी टाइम है. Cancelo defensive work is poor, इसलिए मैं बोल रहा हूँ Bayern, if you're saying it's the best defense in the whole of Europe, I don't agree. I agree that they have the best defensive squad. I agree they have the best options, and that might suit their football in the Bundesliga, that might suit Champions League, yes. But if I have to be putting सब लोग एक ही लेवल पर, मुझे लगता है that Bayern defensively can be beaten. I genuinely believe that. Again, because I watched a lot of Bayern games recently as well, overall, because of the form as well. It's the news coming that Benfica is not agreeing in installments. They want, हाँ ये तो भाई न्यूज हमेशा से थी आरपी, लेकिन न्यूज है कि हमने जो इंस्टॉलमेंट दी है ना, प्रपोजल, that is slightly better than what we had given 72 hours before. That is the difference. So let's see how it is. Or we might just go back on Caicedo. Do let me know that as well. Cancelo is greater than Trent. Both are lesser than RJ. That's facts. Okay. On form, I agree with this. लेकिन fitness RJ का, let's see. Enzo Fernandez putting pressure to Benfica board. Come on Ankit bhai, please हो जाएगा. बिल्कुल. Dance तो बनता है यार, absolutely bro. Why not? Potter should be given at least one complete season to prove himself. अभी तो देना ही है. As much as मैं भी बोल रहा था Youri out, Mikhail was in the chat, big up to Mikhail as well. भाई I would like to say that Potter, now the fact is इतना invest कर दिया even in the January window, doesn't make sense to get rid of another coach just after the window gets over. I agree with this comment. या मैंने देखा, एब्सोल्युटली, मैंने शेयर भी किया. आयुष, बिग अप टू यू, कैसे हो भाई? वुल्व्स उनको चाहिए भी था, रिमेंबर, वुल्व्स से बेसिकली लाइक आई शोड, बेनिफिका प्लेयर इज गॉन बैक, राइट? इफ गैलेगर डजंट एक्सेप्ट हिज मूव, ही शुड बी पनिश्ड. अरे भाई क्यों ये मैं अग्री नहीं करता. प्रीतम, मच लव टू यू, बट दिस आई डोंट अग्री. why would you want to punish your own player? Come on यार, he is wanting to stay. आज के दिन में people are putting transfer request. There's a difference. I know it will help Chelsea to some extent, but
Gallagher is part of the squad. He is a Cobham boy. हमें कोई गारंटी नहीं है कि after Enzo Fernandez comes, we will have a leader on the pitch. Gallagher, yes, he's not a leader, लेकिन वो infectious energy लाता है off the bench whenever he comes. क्वालिटी कम होगी 100%. 45 million मे बी गुड बक्स फॉर हिम, लेकिन इन माय ओपिनियन अगर हम गैलेगर को समर तक भी टाइम देते हैं, प्रूव हिमसेल्फ नहीं करे और समर में भी सेल करे, वी माइट एक्चुअली गेट सच अ डील इन माय पर्सनल ओपिनियन. ऑन दी अदर हैंड मैं चाहता हूँ रूबन लॉफ्टस-चीक शुड गो. हमने कन्विंस करना है यार टू एवर्टन भाई. मैं तो बोलता हूँ सिंपल सी बात है यार, बेनफिका को लो भाई, आप लो यार, आप लो जियेश को लो, एवर्टन को आप लो भाई, आप रूबन लॉफ्टस-चीक को लो. अच्छा, जस्ट गेट एंजो फर्नांडिस, मे बी समर में एक प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो विद पिकफोर्ड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दैट्स द बेस्ट डील, बेस्ट केस सिनेरियो बोल दिया मैं. वेल समर में होगा यार सौमदीप, जो भी होगा जैसे आपने बोला है. द फैक्ट इज अभी भी एज पर रिपोर्ट्स आपको बहुत क्लियर करना है सैलरी वेजेस यार, आपको बहुत क्लियर करना है. तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू एनी जस्टिस राइट नाउ साइनिंग समवन ऑन प्री कॉन्ट्रैक्ट, नॉट गिविंग इनफ सैलरी. हाँ, इसलिए शायद यू गोइंग फॉर डील्स लाइक पवार्ड, वो पॉसिबिलिटी है. बट एट द सेम टाइम आई थिंक यू माइट लूज अ प्लेयर, इन माय पर्सनल ओपिनियन, फरहान टोरेस. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द समर. इमेजिन क्लॉप भी टूकल जैसे सैक्ट होता है, न्यू ओनर ईगो क्लैशेस, देन शुड वी गो फॉर क्लॉप फॉर पॉटर और आल्सो नॉट डूइंग वेल. नहीं, क्लॉप एज मच एज आई वुड लाइक टू गो फॉर हिम, आई लाइक द गाय एब्सोल्युटली टू बिट्स. इवन दो आई एम ऑपोजिशन मैनेजर, जरूर बोलूंगा ही इज नॉट अ ग्रेट लूजर, बट मोर इंपॉर्टेंटली ही लव्स लिवरपूल. यार पुतिन याद रखिए, ही हैज स्पेंट मोर टाइम इन लिवरपूल दैन इवन बोरुसिया डॉर्टमुंड. वो एक रियलिटी चेक है, याद रखिए ये. एंड अभी भी जो इंटरव्यू दिया ना कल, लग नहीं रहा है कि ही वांट्स टू गो. या रूई कॉस्टा तो बहुत गुस्सा होगा चेल्सी के अप्रोच से. देखिए यार, इट्स अबाउट टाइमिंग एज वेल जॉन. आई थिंक द फैक्ट इज इफ वी हैड पुट इन लाइक लास्ट मिनट रिलीज क्लॉज डाल दे कल एट द एंथ आवर, दैट रिलीज क्लॉज हम लोग मीट कर रहे हैं, जस्ट गिव अस एटलीस्ट इज बेटर. हम बात कर रहे हैं यार, आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड से. तो एटलीस्ट अभी भी यार दे हैव 24 आवर्स टू डू समथिंग. वेल बेनफिका भी अभिनव, बेनफिका भी, वी फॉरगेट बेनफिका टॉप द ग्रुप विद पीएसजी बीइंग देयर. और इनफैक्ट पीएसजी एज मच एज कल रात को विराटी गॉट सेंट ऑफ, द फैक्ट इज विद 10 men they almost beat the team. It says a lot for me. Pedro Porro didn't train, yeah, with Sporting today. He only wants to join Tottenham after Sporting changed the conditions of the deal during the night. Again, मैंने already बहुत react कर दिया उस पर. 100% agree. He's not Chelsea level. Gallagher is not a Chelsea starter level, Pritam. I agree. लेकिन he is someone who's in that age bracket जो हो सकता है Chelsea level maybe 12 months down the line. Yes, I know हम cash in करना is not a bad deal. But for me, Gallagher, Mount, Reece James, ये लोग एक कॉबम एलिमेंट लाते हैं which others don't. They really do bring that. Yes, not right now. आप अभी का देख सकते हो, लेकिन आप देखिए whenever Gallagher ने कोई भी इंटरव्यू दिया है, whenever Gallagher ने एकेडमी में खेला, और I would like to say I have seen a lot of academy games with Gallagher being there. Yes, when he was academy player there, उस साल में I was not in the country, मुझे एक्सेस था on Chelsea TV. I should watch literally every academy game. Gallagher is brilliant, bro. I know academy level का बोल रहा हूँ, Callum Hudson-Odoi भी बहुत अच्छा था वहां, तो आप बोलोगे, but in my opinion Gallagher academy player of the year जो होते हैं ना चेल्सी के, you have seen all academy players of the year, 90% of them have gone to great levels. Plus Gallagher zeal लाता है, quality can be improved considering his age, तो keep him in the squad. He is an infectious energy of the bench, इतना ही बोलूंगा, और for cup games. Ivan Fresneda is remaining in Spain. Thanks for sharing that. मैं प्लान ही कर रहा था कवर करने के लिए. आई थिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला है भाई. इवान फ्रेस्नेडा जो डॉर्टमंड से लिंक हुए थे, आर्सेनल से लिंक हुए थे, ही इज गोइंग टू स्टे. रियल वैलेडोलिड, राइट? रियल वैलेडोलिड इज गोइंग टू स्टे एब्सोल्युटली. बट टॉकिंग अबाउट स्पेन, यस, आज उड़ती उड़ती खबर आई थी भाई, अगर चेल्सी साइन नहीं करती जाओ फिलिक्स को समर में, सुनिएगा ये, तो फरहान टोरेस जाएंगे एथलेटिको मैड्रिड और जाओ फेलिक्स आएंगे बार्सिलोना. हाँ, ये तो बहुत ही अजीब सा न्यूज़ था, पता नहीं. Big up to Michael, bro. Michael, what's up? Nice to see you, bro. Always. Michael, do let me know if you're free, bro. Always welcome. I am there for the next few minutes as well. I know I've been streaming literally for 2 hours, 20 minutes because it's some craziness happening. It's almost transfer window deadline day is come one day before. Almost.
So that's happening. But Michael, do message me if you're free. I will send you a link. We can have a quick chat for a few minutes, bro. Big up to you, absolutely, people. Michael Talks Football. Big shout out. You all know that by now, hopefully. Check out of our feature channels, people. You'll see all these channels there. भाई मैं यहाँ पर एक और शेयर कर रहा हूँ. I think आप लोग ने शेयर कर लिया था. ये मैंने just confirm किया है, coming from Fabricio. Absolutely, bro. Let's target the last. चलो भाई, last target अपना 300 like. क्या बोलते हो? But have we crossed 7K? Come on, I want to hear congratulations for 7K tonight. Come on, we can get there. हाँ, ये वाला नजीब आई थिंक थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स है. मुझे लगता है अगर हैवर्ट्स proves himself till the summer that he was not a mistake, then I think Havertz will probably stay and we might, not sign Felix, क्योंकि remember second striker आपके Nkunku भी खेल सकते हैं. तो that is why. और plus Sterling भी, I think as much as he's better off wide, he is an option behind the striker. तो इसलिए शायद Felix मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन I will not be surprised if we sign Felix. Knowing Berlin को. So I am okay either ways, put it that way. Lekin on the condition कि यार we don't sell both Havertz and we do not sign Felix. We need one of them for sure. Preferably both. Okay, भैया fans are because 6 months पहले corner he's back in that. He's back this that great player 6 months जहाँ most of the time favorite. हाँ यार बिल्कुल सागनिक मैं बोल के थक गया. फुटबॉल इतना मतलब हम गजनी बन जाते यार. हम भूल जाते क्या किया कॉनर गैलन ने. भाई लास्ट सीजन मैं यहाँ आर्ग्यू भी नहीं कर रहा. यस आई नो ही इज नॉट क्वालिटी ऑफ चेल्सी लेवल, आई एग्री ऑल दैट भाई, लेकिन we the guys or majority weren't saying that Conor Gallagher is going to be like a new signing for Chelsea. He's one of the most by Crystal Palace player of the year, Chelsea Academy player of the year in the past. The guy was infectiously needed in Chelsea क्योंकि वो चीज एक मिस करते spark in midfield. Problem यहाँ का ही Sagnik has a brilliant point. Tuchel started playing him in number 6. He's not a number 6. He is a number 8. Again, we don't play that role. I understand right now as things stand in 4-2-3-1. But if we do that with a 4-3-3, I think is brilliant. So kahin na kahin, I think Potter fit kar sakte hai unko. I feel that, and plus off the bench, not as a starter. And anyway, he might improve. He's very young still. He's a Cobham boy English. It certainly helps. ये तो ले लिया था मैंने. Okay, let me just see. 1 second. Just give me a second, bro. Okay, चलो Michael is I think free. Let's talk to Michael. तब से मैं अकेले बात कर रहा हूँ भाई. Let's hit that like button again. Let me just send the link to Michael. And again, people, I will be tagging Michael Talks Football. Don't forget to subscribe to my panel as well. But let's see. Let's have Michael and then we'll have more discussions going on. Okay, मैं और भी देख रहा हूँ by the way. Meanwhile, कुछ news आई कि नहीं? Is Pavard going to Man City? No, Pavard is going to Barcelona. I think Pedro Porro City लग रहा है अगर स्पोर्टिंग से नहीं जाता स्पर्स. भाई बहुत लोग देते हैं यार, बहुत लोग देते हैं. मैं सबको सब्सक्राइब हूँ. अगेन आई विल ट्राई एंड ब्रिंग इट आउट. भाई फेब्रिशियो के अलावा ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ब्रिंग्स यू द राइट न्यूज़. आरपी, दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. एनीवे, angered by Chelsea's disrespectful approach to signing Enzo, Benfica said they will not accept installments. भैया डंकन कैसल वापस से चेंज कर रही है, क्या हो गया? बट कोई नहीं. या आई एग्री विद दिस एज वेल. I doubt it यार. I doubt it that both will leave. One will leave समर में, अभी के लिए नहीं. So, दोनों नहीं. Yes, I know Juventus are in the soup, लेकिन इतना easy भी नहीं है ना to get money from clubs when you know that you have to sell. Now can Everton have audacity to make 40 million offer to Gallagher when they reject 60 million? ट्राई किया यार. ट्राई करने में क्या आता है? Audacity तो भाई किया है. So Sean Dyche is a new person at the helm, right? So it does help. पता नहीं. Let me know what do you all think. But okay, we have what else आप लोग भाई. Again, let's get to 300 likes like I said, and we are what, just 30 away from 7k subscribers, people. Hopefully everyone watching the channel has hit that like button. Not just that, but भाई सब लोग सब्सक्राइब कर दिए. Yes, for people watching outside of India, we try and mix Hindi and English so that most of them understand. But it's the language of football. We all know that. वो तो हम लेते ही है. टाइगर बीस्ट क्या बोले आप? हाँ, ये मैं ऑलरेडी ले लिया था टाइगर बीस्ट, इसलिए मैंने लिया. आई थिंक डेरे ने भी सेम चीज किया था. लेट्स सी यार, लेट्स सी.
पता नहीं देखते हैं मतलब अभी भी यार things are changing every minute, so I will not conclude here, but let's have some neutral opinion. Okay, Michael is in the house. Michael, quick cam look, bro. Just for surety. Yeah, perfect. Michael is there. So I'll just add Michael people. Michael, brother, what's up? All good? Okay, Where the heck is it? you're back. Yeah. The mic is Michael, yes. my mic. Can you hear me? Yes. Now it's better. Please tell me what's up. What's happening? What's new? My team is shit still. That's what's happening. even my team is. I'm talking about Milan, and you know what I'm talking about here. Terrible, bro. Terrible. I know, but surprised by Klopp's comment, as in the way he's saying. I know that Klopp is like, no, as in you've done brilliantly. Pep is saying, no, Liverpool are brilliant. But do you think Klopp is like trying to protect himself, or is it's the real truth is like just the owners are not giving money, and that's the reason he has to protect the club? If I could tell you, I would. I honestly don't know what's going on. To me, I think Klopp is losing the plot at the moment. I think he's a man who's distressed. You can tell on the touchline. And what's the point? Like, I think he realizes that these players, they don't have the energy anymore. They don't have the legs. But there's nothing he can do about it because possibly FSG don't have money. But then we signed Gakpo. So if you're Klopp and you're the backroom staff and you're scouting, why don't you go get a midfielder when it's evident, it's been all season evident you need to get a midfielder and have some legs. But no, we go get Gakpo. I feel bad for the guy because he's coming into a terrible situation, but it's just, I told you, Ankit, I want him gone a couple of weeks ago. I'm just getting more frustrated because he's not changing. He keeps going the same way, 4-3-3, trying to play heavy metal football, but these guys cannot do it. So you have to switch it up. I'm seeing Elliott on the left wing, and I'm seeing Gakpo striker. What utter madness is going on? I think he's trying to sabotage this season. Honestly, I think he's just trying not to get European football, which at this point I would take. It's just a matter of will he be there next season? Because right now he is just showing his lack of tactical nuance. He's just trying to do one trick and that's it. But that one trick is just flipping bottles. You got to incorporate the juggling. You got to incorporate the birds involved of the magic trick. But he can't even add that. So it's a dire situation. And we're not going to do any transfers, of course, unless some miracle happens and FSG actually wake up and realize, oh, there's a transfer window. Maybe I should buy some players. I don't see us doing anything. So it's going to be a long season. I feel you, bro. I feel you absolutely. And think about this. At least you guys are waiting for a new owner potential who might change things. AC Milan are already there. But they don't have bloody money. And they don't know anything to do. And by the way, for people who are watching, by the way, over 70 people are watching. I hope everyone has hit that like button. I have just tagged Michael Talks Football in the description, first line also. In case you have not subscribed to this guy, don't miss it out. Yes, he is a Liverpool fan, but just like us, in fact, he covers even more, European football. So people, I would highly recommend Michael Talks Football. Please consider doing that. And I wanted to have Michael on the channel because there's so much going on in transfers, not just Liverpool, but just talking about AC Milan as well, bro. As in, I was seeing a stream last night and I was so off mood that I didn't want to comment, honestly speaking, bro. But what do you think about AC Milan? Like, as in, I know it's very harsh on Pioli, but like, would you blame Maldini and co, or you're like, no, as in the defense is not existing, they need to change the system, they need a new coach because they need to go 3 at the back and go to the proper drawing board, I feel, no? I agree, but how are you going to go 5 in the back with what center backs? That's the thing. No one can. So at least an extra man will probably help is what my logic is. And you just need some kind of... And I think I must say, Tomori, as much as he has the recovery pace, for me, Tomori in a 3 at the back, I really feel him more like a left center back in the 3 backs. I feel that is his long-term good position. I really feel like Rudiger, for instance. Rudiger, for me, was that person you always saw him better in a 3 at the back system. He is that kind of guy. Tomori as well for me. And... again, Calabria, etc. There are no legs, bro. There are no legs. They need more, as in they need an extra man there. Because right now, that midfield, for whatever reason, first of all, Benacer signing his extension, I feel that the timing wasn't right. Sometimes it happens, right, when it's midway through the season. So I think somewhere down the line... He deserved that. He deserved that contract extension, though. Oh, of course, he did. Of course. But what I'm saying is about the timing, right? Because the timing, I feel that it's somehow looking like to me they've taken a foot off the gas. Something is wrong. Like there is something wrong behind the scenes.
It cannot be as bad as how it is. Come on, at home losing 2-5. I know Sassuolo is a brilliant side, by the way. I know previously Ankit, they haven't won a game since October, Sassuolo. So you can say brilliant. They haven't won a game since October. Yeah, as in they can play football is what I meant. They can play football, but they haven't won a game since October. Correct. And then So they it's even dropped worse. 5 at the San Siro. Okay, I think really what the big problem is here is the goalkeeper. Tato Rosano is not a goalkeeper. Why is this guy a professional footballer? He's not even a second choice goalkeeper, bro. That's the worst he's not part. he's not even fourth choice. I mean, even Karius would do a better job than Tato Rosano, and that's saying a lot of things. Yeah. Honestly, I just think that the defense has no confidence in the goalkeeper, so they're playing with no confidence, and that's really hurting the squad because I have no clue when Magnan is coming back. I think he's injured for still 2 more months, if I'm not mistaken, with the calf. So he's going to be out. I think for the Spurs legs, I think he'll be out. that is not good. I mean, just sign some goalkeeper. Might as well just bring in Buffon. He will do better than Tato Rosano. This is ridiculous. Choice. Honestly, like probably 2 goals yesterday, or was it? Yeah, it was yesterday. Were his fault, and it was also against Lazio. It was also against Inter. This guy's terrible. So clearly, the defense has no confidence in him. They're not going to play with confidence, and I think they're overthinking when it comes to defensive setup. And yeah, Pioli, he has to just go to a 4-3-3. He's got to play a third midfielder in that. It cannot be Krunic. I think you just got to play Charles de Ketelaere at right wing. I know he's been a terrible signing, but you cannot have Salamakers out there. What does he provide? Just run around. Yeah, I agree. I agree. It's a tough situation for AC Milan, but a lot of clubs are going through this, Ankit, if you're realizing. A lot of clubs are suffering at the moment. It's a World Cup as well, right? To some extent. Exactly. Yeah. But your view is like interconnecting that, right? So basically, obviously we're talking transfers. So now that obviously the big thing we're going to come to, but Cancelo moving out of City. Now Pedro Porro, I think Tottenham have just done a Tottenham again. Looks like it, as things stand at least. And I don't see a positive end to Pedro Porro's, that kind of objective. Now that might not happen. Maybe, just maybe, people are saying now that Cancelo is not there in City, they might actually, tempt AC Milan for Theo Hernandez, man. As in, there's just a suggestion in the chat. What do you think? As in, do you see any movement happening, or you're seeing City are good for now? Maybe Pedro Porro back to City. What are you seeing? They definitely need a fullback, don't they? They definitely need a fullback, but what can they really do? I mean, they could hijack the Pedro Porro, who was obviously a former City player, but right. I mean, if they go for Theo Hernandez, I mean, I don't like Theo Hernandez. Doesn't seem like a guy who does well in sort of possession style team like Man City. I see him as a very good counter-attacking team, right? Theo Hernandez doesn't scream, although his crossing is insane. But for me, because you want Theo driving into space, kind of like the goal he scored against Atalanta last season, where there was just space and he took it. With Pep, he ain't gonna allow that. Like, let's be honest here. He wants the ball moved quickly, 1-2 touches. Theo Hernandez wants to keep the ball and at least have 10 touches. So, I mean, that could be a possibility. But I think Man City are just gonna wait till the summer, to be honest. I think they're comfortable with Ake, but if he gets injured, then they're screwed. Then they got to play Gomez. We've seen Gomez. See, that's the thing. See, for me, the way I see Theo Hernandez, I hear you about the counter-attacking aspect of it. But if you see last season towards the end, I think Theo Hernandez has built a lot of his game about where he actually comes inward and joins the midfield. Even in the games that you had in Europe, you saw a lot of games that Theo Hernandez did that. And that is why maybe one effect why AC Milan were weak on that side with Rafael Leo, as much as it's going good, great, coming back is not as good, right? As in, that's where I think with City, the way they play, if you see, they play a lot of times 3 at the back recently. So I feel eventually that may be something that Pep is thinking, that now that their main objective is the Champions League, I feel that they might actually go at just strengthening that midfield more and just about supplying Haaland. I don't know, I might be wrong, but let's talk about the main one. I know that you're a huge Enzo Fernandez fan as well, bro. I know that it's crazy that what Chelsea's already been doing. I know a lot of people are questioning, including Klopp, about us. But I still have no opinion. If the rules are what they are, I don't think Chelsea are probably breaking that. And there are enough people in the board to say if there is something wrong, right? But what do you think? As in, why do you think Rui Costa is not, budging there? Or does he have a reason as to why, as in fair reason not to budge as to why Enzo should stay in Benfica? Winning the Champions League than you guys. That's just my opinion. I'm not trying to be hating, Ankit. I'm actually not. Like, Benfica are actually playing very well this season. We saw it in the group stage. Yep. They could honestly make a semi-finals.
Look, Ankit, let's be honest here. The reason why Enzo wants to go to Chelsea is for money. It's not because, like, you guys will be good in a couple seasons. I don't think next season, but let's be honest here, Ankit. Why does Caicedo want to go to Arsenal? Money. Why does Enzo want to go to Chelsea? Money. Of course, you guys are a very big club, of course, and you have an exciting project. But I think Enzo sees the amount of money you guys are going to offer him weekly and be like, how can I turn that down? See, that is where I slightly disagree, bro. Where I hear from where you're coming. What I'm saying here is, if you actually see, again, a guy like Enzo, like what he's like 22, correct? So for someone who's of 22 years of age, how much football he would have seen and probably his family would have seen. I'm guessing, like, obviously Benfica has huge history. They're a huge club in Portugal. He has probably higher chances of winning trophies there, if you're logically speaking. But if he's really ambitious of the level of World Cup winner that he is, I feel that in the last 10, 15, 20, 25 years even, and that's not even debating a fact that Chelsea are always though there or thereabouts. I hardly remember any Champions League where we were not in the knockout stage. And if we were not there, we have won the Europa League. You know what I mean? So basically speaking, in Europe, I think we are still one of those clubs, along with Liverpool, despite not doing well domestically, both the clubs, we have that pull, right? As in, what do you think that part? You have that pull, Ankit. There's no doubt about it. But why does he not wait till the summer then? And wait for the likes of Real Madrid possibly, or Barcelona if they can somehow generate money, or Man City, because they're going to need a midfielder. Okay, but does he start in Real Madrid like today if he goes for you? The guy's a wonderful midfielder. He's wonderful. I think honestly, I love the player. I think he's going to become the best midfielder in the world. Call me crazy. See, that's why Chelsea are going mad. Chelsea are going mad. If I was Chelsea, I would do the exact same thing. I don't blame you guys one bit. You should pay that 120 and get him, because he will be worth a lot more in probably 4 to 5 years. We haven't even seen him in his prime. Honestly, I call him a young Cesc Fabregas. Maybe he doesn't move around the pitch like Cesc, because Cesc actually had legs, but his pass, especially during his Arsenal days, right? He was brilliant. Yeah, especially his Arsenal days. He was basically a box-to-box guy. Enzo will find a pass, and he can find a pass to Mudryk, he can find a pass to Madueke or Sterling or Nkunku. I mean, that is scary. I'm not gonna lie, that is scary. So, look, he might be excited by the project. Fair play to him, but 120 right now it's ludicrous, Ankit. You know that. This is getting stupid, this money now that you guys are throwing around. You see, that's the thing. As in, which is a better deal for you? Caicedo at maybe 75 million or Enzo at 100 million pound, not 120 million pound. And we're talking pounds, I believe, in both, right? So 75 million pounds for Caicedo at this point in time. Or would you say no, get Enzo now, and if you're Chelsea, like get Rice in the summer? Like, I know it's like FIFA stuff almost, but one or the other. I think neither will be not good for Chelsea, of course, but I think one or the other is what we might go for eventually. I have that feeling. I feel like Caicedo is more what you guys need. You guys need more of a box-to-box guy. You really do. Someone who can drive with the ball and get it to your forwards. Right now, you don't have... We need both, Michael. We need both. I know. I know. Trust me, Ankit. I know. I need a lot of things in my club, especially in the midfield. So we're both in the same boat here. I feel like Caicedo would fit more your profile. He's worked with the manager. I mean, like Enzo, he's done fantastic at the World Cup, doing great in the Champions League, but the Premier League pace is a lot different. You don't have a lot of time on the ball, and that's what he gets a lot in the Portuguese league. Time on the ball. The physicality part of it, I think Caicedo hands down, right? And for sure, but he's shown that he can destroy any midfield in the Premier League. He has shown that. Yeah. So if I'm Chelsea, I would actually go for him, to be honest. But I mean, if you can get Enzo, I'll just put a combination here. I've played in different combinations. I've been trying to put different 11s. One combination is, like, again, hypothetically speaking, we get Enzo. And we know that Zakaria is not a starter, but I think the start he's had at Chelsea is not too bad. I think until the summer we have him, use him and Enzo, Zakaria for the physical stuff to kind of cover Enzo, and Enzo for the passes. And then you have Felix, who's actually not bad. Actually, Felix, one thing I would like to say, as much as we kind of, abuse Atletico Madrid and Simeone to do what they did. But for me, Joao Felix has improved his physicality, improved his defensive ability while being there. So I think as a cam, if he's there, he kind of will do more hard work than maybe a Kai Havertz even. I don't know. Where are you on that? I mean, if you can have Felix, Madueke, Mudryk, and Kai Havertz, that's the front line. That's pretty good. You got some pace there. You have players who can dribble. You have everything. You just need to get that consistent goal scorer. Who is it going to be?
I don't know, because Kai Havertz is not screaming consistent goal scorer at the moment. And then if you I can know have that we have to wait next- for the summer. I think Nkunku is only hope, and I know he's also not a striker per se, but he can score goals in multitude of ways. So he's kind of a goal scorer, but he wants to be like a false nine sort of guy. So could that disrupt play? Maybe, but you've tried the out and out striker. It doesn't work for you guys. There's a curse. There's a curse. Lukaku, Shevchenko, Torres, Morata, Falcao. Do I need to keep going on? There's so many. Yeah, So might as well it's just go for crazy. Nkunku and see if it works out. But look, if you're going to get Enzo, I'm going to be pissed off. I'm going to be pissed off. Okay, so here is Benfica squad, right? As in, if you can also help me out, like how can Benfica deal without Enzo? Like Brighton, they have gone on record saying that we can deal without Caicedo, right? But can Benfica deal? Benfica can't. They can't. I mean, Yeah. right now they're playing Florentino, who's a fantastic young CDM. Then they're playing him next to Enzo, and then they play Rafa Silva in the 10 role or Arsnes from Norway in the 10 role or left wing. They're not going to be able to replace him. So the problem is here, if they do sell him now, who the heck are they going to replace him with? They got to be quick and get somebody with some quality. Because, look, I still think they got a great squad, but if they let go of Enzo and don't replace him, I think then it's quarterfinals max in the Champions League. And that will disrupt their Portuguese league titles because they're only 4 points ahead in the league. So I don't think Brighton can say that with confidence, but over time, maybe they'll start to feel the effects of no Caicedo. With Benfica, I think they will feel it right away because the guy is he's a magical midfielder. He really is. Yep. Okay. Question here: will Salah go? Salah, as in the Real Madrid links have kind of stopped right after his extension. Yeah. So, but now there's been a little bit of PSG rumors, but just I don't think that's true, to be honest. Oh man, I don't. But he needs to step up. My God, he has been terrible this season. But see, that's the point. Even in that terrible season, Salah is still one of the main goal scorers, isn't he? Yeah. But he's been terrible. Ankit, his overall game is shockingly bad. He can't even control a ball at the moment. Yeah, look, maybe it's just the effect of the whole team, but once we gave him that contract, $350K a week, he's gone missing badly. So we need him to step up, but I don't think we're going to get it because I just think he's mentally checked out of this season. I think a lot of the players have, like Trent, Van Dijk, Salah. I think they've all checked out. I think they want to go into a fresh start next season and move on. But you got to help us out, bro. We were trying to figure what is it with the FA Cups or other cup competitions and Liverpool and the referees, bro. How did Fabinho didn't get sent off? That guy is terrible. Please just leave Fabinho, man. Imagine situation, Michael. If Fabinho would have got sent off, already a midfield is what it is, and he would have been suspended. I know Bajetic has extended. He can be suspended. He should not be playing for us right now. Wow. He's terrible. Look, Ankit. I don't even know if he starts in the ISL. Oh man, that is like, come on. No, seriously, look at his legs. He has cement in his boots. He cannot move. That 10-minute cameo he made yesterday was one of the worst midfield performances I've ever seen. It was a 0 out of 10, and he played 10 minutes. No, I agree with you. I don't even. I'm overstating. Everyone would remember the Bakayoko cameo that he had against Watford. It was as bad, and I'm not overstating. I genuinely mean it. It was as bad. I'm like, how did this guy stay on the pitch? But anyway, Gaurav... That should have been a red card, by the way. Yeah, it should have been a red card. Yeah. No doubt about it. And I think Michael Leimer is going to Bayern Munich, right? Somewhere. I think that has already been... It's confirmed, yeah. Yeah, it's confirmed. Wirtz is more like Wirtz I would consider more like a number 8, number 10, right? He's not like I'm not seeing... He's kind of like a false... He's a false 9-10 sort of guy. Yeah, he's more like a Felix... kind of, but he's coming off a long-term ACL injury, so I don't think a lot of teams are going to take a risk on him yet. They're going to wait another season to see how he recovers. But maybe that is what, as in maybe clubs like Chelsea, Liverpool should be doing. Like for example, Chiesa was one more name, right? I know it doesn't happen always, but I think it's come off pretty well after that, right? Yeah. I mean, we still got to wait. He hasn't had consistent minutes, and they lost twice to a F1 track. Unbelievable. Oh God! You gotta love Juventus at the moment. But yeah, look, we gotta take time on Chiesa. He's gonna stay Juventus. I don't see him leaving anywhere. At least I thought Napoli will at least drop points against Roma, man. I can't even see them dropping points and Aussie, man, and this guy is going to be like
crazy, man. Quaradon is already there, but this Somebody's update by gonna pay 150 million for Osimhen in the summer. Oh yeah, Napoli don't let the players go easily anyway. That's also one more thing. So Benfica deciding on whether or not to accept Chelsea's offer for Enzo Fernandez after a stronger bid was made. Okay, again, the news is kind of rotating around the same thing, Darren. I'm pretty sure when I go to sleep and it's 4 a.m. in the morning, when I'm finally about to go go to bed, and that's when some breaking news will happen again. And that's what actually happens. I'm like just extending this stream next day. I'm hoping that something other happens. In hope, I know. But what chances are you giving? As in for you, Enzo stays. What's your gut feel at Benfica? That's your gut feel? Really don't know. I think it's 50-50 at this point. It's down to Rui Costa. It's down to the president. How does he want to receive the money? I think he wants it all up front. So that's kind of the issue you guys are facing. That is the issue. In fact, I had suggested tagging Chelsea. The fact is I like a Ziyech, but Ziyech is not your week-in week-out player. I know different players, winger, totally different, but Ziyech is a Champions League as in winner. And thing is, Ankit, they don't need a right winger, Benfica. They need a midfielder. Yeah, I know they do, but you can always tempt them, right? As in, you can always tempt them. And Ziyech is a proven Champions League winner, bro. As in, he is. So, but they need a midfielder. They don't need another. And in fact, even Michael, I don't know whether you will agree with me. For me, Chelsea should be actually tempting clubs for Jorginho. Yes, I know we need the leadership, but Jorginho is at age. People might be very hesitant considering his pace, or lack of pace. But for me, contract this summer. He's out of contract, but that's the thing. Right now, you probably get whatever you can and just let him go if we are getting Enzo. As in basically tempt. What I'm trying to say is tempt Benfica with players who can be assets rather than liabilities. I mean, Ankit, if you guys sell Conor Gallagher for 40 million to Everton, that is one of the most that needs to go to The Hague. That deal. How are you going to get 40 million for that player? I have no clue. I'm sorry, Conor Gallagher. Come on. See, as in, I know the guy has no quality of late. I know that. But he has that thing where he can actually be a very good hardworking midfielder as a squad player, man. As in, I would not like to say that he's not having any qualities. You're sounding like a TalkSport pundit right there, saying hardworking midfielder. Come on, Ankit. Look at you rate Unahi from Morocco? As in, definitely Unahi is absolutely brilliant. You know how much he went for? 10 million. I know. Exactly. So if Conor Gallagher is going for 40 million, he's going for 10 million. I'm sorry, there is English tax and there is some other taxes going on here because. Okay, on the other hand, you know what Everton wanted from us for Gordon in the summer? Which is crazy. I know it's a different player, but see, that's what I'm saying. English tax, Chelsea tax is different, man. It's different. Plus, again, coming to Conor Gallagher, see, I feel that Chelsea haven't even utilized him the way that he should be. I'm not saying he's a starter. I'm saying that in a 4-3-3 system, he can be someone who comes off the bench and is infectious in a 4-3-3 system. I don't think you expect him to score goals, the main creator. He's someone who basically wins balls off. Like, basically speaking, a poor man's Kante. In simply put, right? I don't consider Kante as a very, 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 very poor man's Kante. I'm sorry, Ankit. I don't rate the player whatsoever. I don't care about this hard work. But he has a shot on him. He has the odd goal. That's what I'm trying to say. He has the. So are Everton just going to pay 5 million per goal he scores at Everton? Is this what we're saying? See, I don't mind him going if they give us Pickford in return. That's the deal I'm asking for. You're just turning greedy now, Ankit. This is how it turns. You're turning greedy. Yeah. Okay, but anyway, Anup here, Real Madrid fan in the house. Anup, how are you? Paul Pogba. What's happening to Juventus? Any news? I think they're just sticking around with the players. I don't think they can't do it. They can't do anything. They can't do anything. I mean, they've lost McKennie already. I don't think they can afford to lose any. And pretty sure their aim is what? Just to get into top 6 is what I'm guessing. Top half. They're in 13th place. Yeah, but I think they're good enough in the squad that they can get to top 6, no? Of course they got quality, but they still got Allegri as manager and they lost twice to Monza. So, I mean, Juventus are just an absolute car crash at the moment. They really are. Okay, what is this news? The GK is sharing Liverpool will go one loan centre forward tomorrow in deadline hours, irrespective of what Klopp said. Is there any movement happening for Liverpool? You think no, there is nothing happening. There is nothing happening. You know what I really suggest?
Your good charm is gone. Origi who scored that consolation second goal. He always scores important goals, Ankit. He scored the consolation in a 5-2 loss. Yeah, but see, somewhere down the line, I think that also matters. When you have a team with a winning mentality, that has changed. And for me, as in Liverpool, it's a huge miss. The fact is, Firmino is nowhere near the close of first 11. Plus the fact that Mane is gone, and at the same time, you have Milner. He should be ending less like Aspilicueta. I don't think why he's playing still, to be honest. But still, sometimes you just need something new, something fresh. But at the same time, you need some experience. I think both Liverpool and Chelsea, generally speaking, as much as we are at least signing, which is good and envious from other clubs' point of view, at least Chelsea, are signing youngsters. But at the same time, I just showed the 11 that I did. We hardly have any experienced players, right? So that's why it's a long-term project for you guys. See, as in this is the next year 11 that I just put around, right? So, for example, assuming that Kante comes back fit, our only reason why I put Kante is because we literally don't have anyone experienced in the 11. They just see this. Wait. Where's Reece James? Yeah, again, I just put this when we signed Gusto, so I have to put Reece James there. But let's assume in that particular 11 that I put, Reece James is injured, and then Gusto comes in next summer, right? So just saying. So, but see, for me, even if we replace that midfield, which is somewhere that we have to replace, we don't have much experience, and that's where I think even next season I'm not like fully convinced yet. Although I'm very excited, but Liverpool, as much as you would like to sign new midfielders, you have to get rid of current players who are there for long, like Fabinho, for example. But are there any experienced guys? What about Tielemans? Like, why aren't Liverpool going for Tielemans? No way. That guy's out of breath after 10 minutes. No, not the Liverpool kind of football. And I think Arsenal are going for him as a backup, if not Caicedo. That might be one of the things. But again, let's see, man. A lot of things. I've been talking for 3 hours, kind of tired now. So, I can imagine. I gotta head out crazy. anyways. No, the first hour went by with the excitement of basically the news itself that we saw Pedro Porro being missed by Spurs yet another time. And the first reaction for me when I saw Pedro Porro possibly again, Spurs missing out was this. But I think that's what the excitement came from, and of course, Enzo Fernandez. An evil man, Ankit. You're an evil man. You know what? These moments are something which I live for, man, honestly speaking. But at the same time, that I kind of respect all views. But I have to say, Spurs did hijack Danjuma's deal. So let's see how he does. But a lot. I'm just calling that, you never know. Spurs, if they don't end up with Pedro Porro, I have a feeling Conte will just leave, man, as in the kind of guy he is. But he's already at the end of it anyway, so I think he'll just guarantee leave. Yeah, absolutely. I don't know. Reece James, as midfielder, definitely not. He has played in vegan days though, but he's definitely a right back for me. But again, thanks a lot. By sub log jo bhi hai, everyone, each and everyone, I mean it. Everyone, thanks a lot for joining on. There have been people who have been stayed along for the entire 3 hours. I can see some of them. So that's superb. And everyone watching, I hope everyone has hit that like button. Subscribe to both our channels, but even Michael Talks Football, I have linked in the description below. First line. Michael, final words. Come on. What are you expecting deadline day? Nothing for Liverpool. That's all I got to say. Nothing for us. And I hope Enzo does not go to Chelsea. Okay, but you all know transfer window, so definitely. Oh, snap. This is getting interesting. Okay, so let's be back tomorrow. We'll be talking a lot. Maybe I'll come up with a breaking news video in the morning. Who knows? But watch out for us. Hit that bell notification icon. Hit that like button, and of course, we're always a fan channel for all to see. As much as you see the banter, and big up to Michael for coming on as well, and for everyone here. See you guys. Come on, Chelsea, do something.